Now the film which you saw was a very high adventure. It was climbing Mount Meru, which takes a lot of preparation, lot of training, but it all starts from the small steps. And I think we can definitely aim over the period of time, down the line, 5 years maybe. Rahul sir has a vision that this adventure club, this Nisarga Ved activity will be so popular in MITWPU that we will have MITWPU's Himalayan expeditions, we will have MITWPU's rock climbing course, rock climbing expeditions, we will have a certificate course, a diploma and degree course in adventure sports at MITWPU. So that's the long-standing vision behind this Nisarga Ved activity. And this is glimpses of Dev Tibba Base Camp Trek, which was taken last May, June. So few of us sitting over here have already gone to Himalayas, have already participated in these treks. There are a lot of upcoming activities also, which you can see on the screen. Now let me quickly tell you about the immediate activity which is going to come on to you. And that is the sponsored treks from MITWPU for all first year students. Now, as you can see, it is starting from 3rd of October, and you will receive a formal communication regarding that. That communication will have all do's and don'ts, all the rules and regulations, all the concept notes, vision behind this activity, and how you can participate in this activity. So I just want to ask one question here before I close. Are you all excited for these treks? Are you excited for the treks? Can we have the participation, maximum participation? I am still not able to hear. You can just say your thumb from there. You can show your thumb from the crowd. If you are interested in this trekking activity, thank you so much for your response. And we will definitely get in touch with you for further details. So this activity is for all first year students. So hoping to see you on one of the treks, on one of the trails. And believe me, it is very beautiful in monsoons. So most of you have already visited some waterfalls, some treks. If you have not, this is the time when you can actually start your adventure journey. And we all from Giri Premi Adventure Foundation are really delighted and grateful to entire MITWPU management, Registrar Sir, Dr. Ganesh Pokale Sir, and all other dignitaries, and especially Rahul Sir, for involving us in this activity. And we really look forward for a great support and great journey in this activity. Thank you so much for all the details. We will definitely get in touch with you on person-to-person basis. Thank you so much. Thank you once again. Thank you, students. May I request Harsata to play the video of the trekking again for our students. Good morning, students. Before we start, I hope you all have come to know about the MIT Adventure Club, and I hope you will avail of this golden opportunity to do or enroll yourself for the trekking trips that's being organized by the university. Before we start our next session, can you all sit down and have a look at the video that the trekking people have arranged for you. Students, please settle down as soon as possible. The guests will be here for the session. Volunteers, can you ensure that everyone Students, please occupy your places. Yes, those who are coming to the front, please sit down as soon as possible. Please.
Actually, at the front, everyone should sit down. Volunteers, please see that everyone sits down on the front rows. Please give a big applause to the arriving guests, all of you. A big applause to our guests. May I request all of you to give a big applause to the arriving guests. The ringing of the ceremonial bell. Big applause for the ringing of the ceremonial bell, all of you students. Thank you for ringing the bell. May I welcome all the guests to the dais. Good morning, everyone. Welcome to the third and final day of the Social Leadership Development Program 2023. May I remind you that it may be the final day, but it is nonetheless going to be an action-packed day with speakers from a broad spectrum of our community. We have the first session on social leadership for innovative urban solutions, where we have a panel of acclaimed community leaders, including Ma'am Usha Rajgopalan, Shri Avinash Dhakne IAS Sir, Shri Santosh Tikekar Sir, and the next session will be Awakening of the Phonics with the IPS officer Krishna Prakash, and the last session will be Art of the Possible based on the Prime Minister's call for vocal for local. And of course, you all have been introduced to the Adventure Club of MITWPU, which is going to be Nishargaved. As many of you must... Okay. I welcome everyone, especially the first year students, to orient themselves to the true spirit of MITWPU to work with the community for collective process. May I request Dean Dinesh Sheth sir to introduce the guests. Thank you. Good morning. Social Leadership for Innovative Urban Solutions is an inspiring session focused on harnessing the power of social leadership and innovation to create livable and sustainable cities. This session will revolve around three key themes. First, journey to excellence towards livable cities, where the successful urban solutions will be showcased, highlighting the transformative impact of effective urban planning and development. Second will be Roadmap to Zero Waste, a talk from a foot soldier, which features the real-life stories and experiences of an individual working at grassroots level. And third will be decoding the challenges of waste, perspectives, and the approaches. By encouraging social leaders
to take up the mantle for innovation, promoting effective waste management and collaborating on the sustainable urban planning. And this initiative is to drive the positive change and to contribute to the creation of resilient and inclusive urban environment. We have two very eminent speakers with us to share their experiences and learning. And these speakers have demonstrated that how, as a leader, one can make differences in the areas of innovative urban solutions. First speaker will be Madam Usha Rajgopalan. She is lake activist, more correctly, lake conservationist. She is from Bangalore, and she has done remarkable works, and his works are being copied elsewhere in the India as well as in world. Our second speaker will be Shri Avinash Dhakane, who is currently the Managing Director, MFSCDC. While serving as a Transport Commissioner, he played pivotal role in shaping the transportation policies. With transformative input, and as a District Collector Jalgaon, he received prestigious Beti Bachao, Beti Padhao award. Without any ado, to avoid delays, I invite Ma'am to take up further. Thank you. Thank you, sir. May I now request Rahul, sir, to felicitate our guests. Thank you. Our guest, Ma'am Usha Gopalan. A big hand for Ma'am Usha Gopalan. Thank you, Rahul, sir. A big hand for Ma'am. Next, our guest of honor, Avinash, sir, IAS. Thank you, Rahul, sir. A big hand. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Let's now start the proceedings of the day with Ma'am Usha Gopalan, Ma'am's speech. She is a versatile individual with significant contribution to both literature and conservation. Her literary achievements have earned her numerous awards, including recognitions in the Commonwealth Short Story Competition and the Quest All India Poetry Prize. Beyond her writing endeavors, Usha is a dedicated lake conservationist, playing a pivotal role in the successful campaign to preserve Puttanhalli Lake in her neighborhood. She co-founded the Puttanhalli Neighborhood Lake Improvement Trust, a testament to her commitment to conservation. Currently, she serves as the Homi Bhabha Fellow for the year 2023-25, where she is diligently working on a memoir that documents her experiences as a lake conservationist. Give a big hand to Ma'am Usha Gopalan, and let's listen to her literary and conservation achievements. Good morning, everybody. Good morning. That's it. So, thank you. First of all, I should thank the university for inviting me. It is such a prestige. I am here not just on behalf of myself and my trust and my friends, but also the entire community around my lake, which is called Puttanhalli in South Bangalore, and the entire community of citizen lake conservationists. So the topic is that journey towards excellence, making cities livable
for me, the yardstick for how livable a lake is actually how good is the water body in the lake. Coming to my experience with Puttanali, with lake conservation, I didn't start out by thinking I'm going to get into lake conservation at all. It began because for the first time when I moved to Bangalore in 2006, I was living in a high-rise apartment and my flat happened to overlook a lake from the balcony, which every time I saw it, it looked like more and more garbage was getting dumped into it. The slum was growing bigger, there were piles of trash which was on fire. It was clear that the lake was dying. By then I had actually brought out 2 books, the third was with the publisher, and I wanted to focus my life to my writing. But every time I saw this lake, my conscience pricked, saying if I keep quiet and watch that lake die, then I am also responsible for its demise. So in 2008, I started a campaign called Let Us Save the Lake. I started it in my own apartment complex because I didn't know anybody even in my own complex. I was a newcomer. The response was terrible. People said, why should you bother? We pay taxes. What is the government's responsibility? They are the ones who should do it. There is a political real estate nexus. They will come after you. No government official will listen to you. These were the things that I kept hearing. But by nature, if I take up something, I have to do my very best and see how far I can go in that. If I fail, I'll try a little harder. If I fail again, then I'll say, okay, I am not competent enough to do this. But I had not reached that point with this lake, with Saving the Lake campaign. So I wrote letters. I wrote letters to the officials, to the political leaders in the area. I wrote articles and nothing worked, absolutely nothing worked. One of my neighbors happened to be he happened to be in a position of influence with the government circles. So I told him, say, Ashwin, why don't you help get the municipality? It's called the BBMP. Why don't you get BBMP to save the lake, to take up the lake for rejuvenation? So he said, okay, I'll do that, but you have to promise that you will maintain the lake after that. What does maintaining a lake actually mean? I've only maintained my house all these years. But I thought the bigger challenge is to get BBMP to rejuvenate the lake and baad mein dekha jayega. So that is how it began. And BBMP started reviving the lake. It's a wonderful process actually. JCBs come in, they dig out all the muck from generations of garbage and trash which is accumulated in the lake basin. They raise the revetment, they put inlet pipes. So these things were very, very exciting and it caused lots of rumors to go around. So some people were saying, this must be the bus station, metro station. So in order to set the record straight, in my apartment complex with the association, we organized the first Earth Day celebration in 2010 April, to which we invited people from all around the lake to come. That is when people got to know that actually this is a lake being revived. And in this occasion, also what happened was, I got to meet, you know, in an urban city, you have all these high-rises, people living in their apartments, they look out, they don't know even who the neighbor is. It's the same with me also. I didn't know who was living in all these other places when I didn't know who was living in my own buildings. On this occasion, Earth Day, I got to meet 3 others from an apartment complex across the lake. We decided to form a trust, 3 of us. We decided to form a trust, this was in June 2010, in order to assist BBMP with the maintaining of the lake.
you have to understand that we are not really environmentalists or naturalists. We don't have a background in conservation. We come from different streams. But actually what it takes to achieve something is common sense, perseverance, a really thick skin, and to forge on even though the challenges are many and seemingly impossible to cross. So we decided we will help BBMP maintain the lake, but it very quickly it became obvious that they will not be able to do this. So we started assuming a very active role. In July 2010, we planted we had the first tree plantation drive. We planted some 125 saplings, to which we invited the community and said, hey, you remember, we told you we'll save the lake. Now this is the lake getting saved. And now you come and plant a tree and you make some donation in order for us to maintain the lake. And this created a bit of a stir in the city. This is a completely neighborhood initiative. But we were organizing, tree plantation drive, bird watch, because once the lake started filling, birds started coming. We started conducting nature walks, bird watch, and all those things, which the press took up. Because it was sort of not believable that a community can come together, partner with the government department, and actually create something like this. So this publicity, it was like a stone being dropped in the water and its ripples spreading. So on the one hand, more and more people from our locality got to know about the lake, and people from across the city. So people would call up and say, hey, we have a lake in our locality, how do we do it? What did you do? Whom did you contact? And we used to give them all the contacts. We would tell them what are the challenges we face, and we even gave them a trust deed so that they can, it's easier journey for them. They don't have to reinvent the wheel. So as of now, we have about 35 groups managing or taking care of more than 50 lakes in Bangalore. And this, I would like to think, is a first step towards a citizen-led conservation in the city, because the problem in Bangalore with lakes is not unique to Bangalore. It is the same in every single village, town, metropolis. So that's why I said the yardstick, the index of how livable a city is, you have to look at the water body. That is the basis for the quality of life. So I would like each of you to think, at your age, you can think, okay, I can come to college, I have my mobile phone, I have my circle of friends, I have enough money, pocket money perhaps. But I would like you to think beyond that, because what you see today and what you are today is not going to be the same. I told you it wasn't the same for us. And honestly, we were no different from you. We wanted to be selfish, we wanted to look at our individual interests, but guilt prompted us to do this. And what I would like you to do is to take a conscious decision to do your bit for the community. And as someone coming from the water sector, I would definitely say, take a look at a lake, a pond in your locality, wherever you are. See what you can do about it to protect it, to not just protect the lake from people, but also from sewage coming in. How can you make that particular water body a thriving one, where birds will come, where you will have trees, which is like an oasis in a concrete jungle? Because increasingly our cities are concrete jungles. And in our case, our lake is one of those few oases. It is a green-blue hub with all concrete all around. And this is something, if we can do it, if so many other groups can do it in Bangalore, I don't see why any of you can't do it. You just have to have the passion, you have to have the will, you have to have the
determination to do something. It is very easy to live a life. Like I can actually retire and say, okay, mera kaam ho gaya hai. I've studied, I've got a job, I've got a family, I've brought up my children well, they are independent, now I should retire. No, the biggest, is it well for me to wind up? Okay. So, yes, it is a bell for me to slow down. So I would like to end with actually showing a very short video on our lake for you to see, and if ever any of you are coming to Bangalore, please come and visit the lake and see it for yourself, because seeing is believing. And please remember that you can be the change maker. It is up to you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. A big applause for ma'am. Thank you. Thank you for your passionate story about your journey of conserving water bodies. We are really thankful to you. Now we are going to witness a small video. Dear students, we have very distinguished guests on the dais for this session and coming session also. May I request you to please settle down immediately. Volunteers, there should not be no movements in the pandal. Volunteers, to ensure that there will not be no movements in the pandal, please be disciplined as per the culture of the MITWPU. Thank you. May I request the technical team to play the video of Urban Solutions. Thank you. This session is based on social leadership for innovative urban solutions. Journey to excellence towards livable cities. Here, successful urban solutions will be showcased.
highlighting the transformative impact of effective urban planning and development. Roadmap to Zero Waste, a talk from a foot soldier. This features real-life stories and experiences of individuals working at the grassroots levels to tackle waste management challenges and promote sustainability. Decoding the challenge of waste, perspectives and approaches. It is an exploration of diverse perspectives and approaches to waste management, fostering dialogue and knowledge sharing among stakeholders. In this session, we will talk about the different dimensions of social leadership for innovative urban solutions. Thank you for that. Now students, get ready to listen to one of our eminent community leaders who has shown his credentials in the field of administration as well as community. Please welcome distinguished IAS officer Shri Avinash Dhakne sir. Shri Avinash Dhakne sir is a distinguished IAS officer from the 2010 batch, currently serving as the Managing Director of the Maharashtra Film Stage and Cultural Development Corporation, and has contributed immensely for the growth of the cultural and entertainment industry. He has played pivotal roles as Transport Commissioner and District Collector of Jalgaon, Municipal Commissioner in Solapur, Deputy Chief Executive Officer at the Maharashtra Industrial Development Corporation. As the District Collector, he had received the Beti Bachao, Beti Padhao Award for his exemplary work from Union Minister Smriti Irani. Students, a big hand for IAS Avinash Dhakne. Listen to him and get inspired. He can be your role model. Over to you, sir. Namaskar, Vande Mataram. Distinguished guests on the dais, my dear student friends, this is for the first time I am addressing such a large gathering, particularly of youngsters, and it is my honor and privilege to be with you this morning. We have just seen the AV about urban issues. We all know that the urban areas in our country have been increasing, a lot of population have moved. So since independence, many of the people moved from villages to towns and towns to cities, and it has created a lot of problems also. So we need to understand what are the problems in urban areas and how to tackle those problems with social responsibility, change of social behavior. As I can see from here, what Swami Vivekananda has advocated, take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, and ensure that you pursue that idea. A quote from Vivekananda, please go back. Please go back. Who is a leader? Leader is the one who can understand others better, who knows how to obey the commands. Unless you know how to obey the commands, you won't be able to command others. So, whenever you listen to anyone, you read about anyone, understand how that person has achieved that kind of a success. Next, there could be several kind of leaders. As you can see from here, there are spiritual leaders who guide the society. There are political leaders who give you legislations. Social leaders like Dr.
Rajgopalan, they are kind of leaders of social change. You know many others. You know Dr. Baba Ambedkar, Mahatma Gandhi ji. They were not just political leaders, but they were the social leaders as well. There are industry leaders who change our lives, and there are cultural leaders as well. Say for example, Amitabh Bachchan or Shah Rukh Khan, they are also leaders of their industry. Many people follow them, but not in every aspect of life. People will follow them in kind of brands. People will follow spiritual leaders who are influencers for social behavior. But the main social change is brought to the society by the social and political leaders. Even in administration, we lead our own organizations. We also bring certain change during our tenures. However, the social leaders and political leaders are very important for bringing out change in any of the societies. Today, I am asked to give you little knowledge about developing social leadership in urban solutions. I mean, if I ask you, how many of you think that only garbage is an urban problem? How many? Can you raise your hands? Only garbage, because you have seen only garbage is an urban problem. How many of you think about it? No one? Or you are not listening? अरे कचरा जो है वो सबसे बड़ा सिटी का प्रॉब्लम ऐसे कितने लोगों को लगता है? ओके, ये जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रैफिक है बहुत सारा, पुणे में तो बहुत सारे टू व्हीलर से ट्रांसपोर्ट ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कितने लोगों को लगता है? आधे लोग सोए हुए शायद. ओके, कितने लोगों को लगता है कि पीने का पानी इज बिग प्रॉब्लम? पीने का पानी कम है. ओके, कितने लोगों को ऐसे लगता है कि घर यही प्रॉब्लम है, घर सस्ता नहीं मिलता है, लोगों को झोपड़ी में रहना पड़ता है? कितने लोगों को लगता है? एनीवेज, थैंक यू जिन्होंने हैंड रेज किया और जिन्होंने या तो सुना नहीं या जिनको ऐसे लगता नहीं कि हमने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. दे शुड थिंक ट्वाइस, बिकॉज अनलेस यू अंडरस्टैंड about your surroundings, how you are going to lead the future, आप कैसे आगे काम करोगे? ये घर में बैठ के तो काम नहीं होगा. इंडिया नहीं बदलेगा, पुणे नहीं बदलेगा. तो हमें अगर चेंज लाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स. हमारे यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन हमें ही ढूंढना है. हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन स्विट्जरलैंड में या स्वीडन में या इंग्लैंड में नहीं मिलेगा. Unfortunately, many times we, the planners, also think कि इंग्लैंड में क्या हुआ है, सिंगापुर में क्या हुआ है, वही मॉडल यहाँ पे लेके आओ. नो, बिकॉज आवर प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट, सो आवर रिएक्शन टू द प्रॉब्लम हैज टू बी डिफरेंट. नेक्स्ट प्लीज. ये सब प्रॉब्लम, ये सब पुणे के फोटो है, पीछे ले लो. ये सब मैंने नेट से निकाले हैं और दीज आर ऑल पुणे फोटोज. और ये बहुत सारी जगह पे यू कैन सी ऑल दिस. नेक्स्ट. मैंने 3 ही प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा है, बट नेक्स्ट देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. हेल्थ इश्यूज है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, पोल्यूशन है, और एंडलेस है. प्रॉब्लम्स आर एंडलेस, सो यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस. तो सॉल्यूशंस कैसे ढूंढेंगे? कोई बताएगा कि हाउ सॉल्यूशंस कैसे? न्यूज़पेपर में पढ़ के समझ सकते हैं सॉल्यूशंस? खुद सोसाइटी में जाके समझ सकते हैं? म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में जाके समझ सकते हैं? अपने गली में, अपने मोहल्ले में, वहाँ पे समझ सकते हैं? कहाँ से समझ सकते हैं प्रॉब्लम्स? हर जगह से समझ सकते हैं. इट स्टार्ट विथ योर ओन हाउस. मेरे घर में पानी नहीं आया, मेरे घर में कचरा अलग से नहीं किया, मेरे घर में से जो कचरा लेके गया ढंग से नहीं डाला, मेरे गली में बहुत सारा गंदगी है, पानी खराब आ रहा है, बाजू में हॉस्पिटल नहीं है, लोग रास्ते पे पार्किंग करते हैं, फुटपाथ पे चलने के लिए जगह नहीं है. दिस आर ऑल अर्बन इश्यूज. और हम लोग हर रोज इसको फेस करते हैं. मगर फेस करने में जो लोग समझते हैं प्रॉब्लम को और सोचते हैं कि नहीं
आई विल चेंज दिस वन डे, मुझे एक न एक दिन इसको चेंज करना है। सब लोग नहीं चेंज करते, जितने 5000 बच्चे बैठे हैं 5000 कांट बी लीडर्स। लीडर्स कैन बी दोज ओनली हु हैव फायर इन देयर बेली। जिसके पेट में ऐसे फायर है वही लीडर बन सकता है। जो बिल्कुल खा पी के सुस्त है वो लीडर नहीं बन सकता है कोई भी चीज का। आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई भी लीडर बन सकता है। यू कैन सी द प्रेजेंट डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड एंड वेयर ही रिच्ड। ये तो कोई पीछे से नहीं आया था कोई ढकेलने के लिए, बट इफ यू हैव फायर इन योर बेली तो आप बहुत दूर तक जा सकते हो। यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ टुडेज चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल एकनाथ जी शिंदे, फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड एज अ रिक्शा ड्राइवर and he reached to this stage. Typically working in urban areas, working for the general classes. अभी solution ढूंढने, हाउसिंग का solution, क्या हाउसिंग का solution हो सकता है? How you will tackle problem? आपको पता है हाउसिंग स्लम में लोग रहते, like in city of Mumbai 60% of the population stays in slum. 60%। आप बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हो उसमें 2 या 3 लोग रहते हैं सिर्फ एक फ्लैट में, और झोपड़े में 10 लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन में रहते हैं। और रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, मुंबई में 4.5 लाख रिक्शा वाले हैं और 40,000 टैक्सी वाले हैं। वो वहीं पे सोते हैं रिक्शा या टैक्सी में। आज मैं सुबह 5 बजे मुंबई से निकला, कम से कम 10-15 लोग मुझे रिक्शा में सोते हुए नजर आए। वो बिकॉज प्रॉब्लम इज विद द हाउसिंग। हम लोग गाली देते हैं रिक्शा वाला 2 रुपया ज़्यादा लिया, अभी लेना नहीं चाहिए, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट उनके प्रॉब्लम्स क्या है वो हमने कभी सोचा ही नहीं। बिकॉज ग्रोथ इज देयर बट इट हैज़ टू बी इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा तो सोसाइटी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। सो हाउसिंग का प्रॉब्लम है, कैसे सॉर्ट आउट होगा? हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट गोज हैंड इन हैंड। अगर ये बड़े बड़े 20, 25, 50 माले की बिल्डिंग बन रही है, उससे अच्छा है यहाँ पे रेट ज़्यादा है। 50 किलोमीटर पे, 70 किलोमीटर पे अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट बन जाएंगे और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लाइक आज जो मेट्रो आ रहा है, तो लोग वहाँ पे रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे, गाड़ी से नहीं आएंगे, तो अपने आप ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फॉर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये सोचते हैं कि सिटी में ही रहना चाहिए, कोथरूड में रहना चाहिए या प्रभात रोड पे ही रहना चाहिए, कैंप ही बेटर है। बिकॉज वो स्नॉबिश काइंड ऑफ ये होता है एटीट्यूड कि नहीं, हम कहाँ पे रहते हैं, हम प्रभात रोड पे रहते हैं, बताने के लिए लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स क्या है वो लगे। बट दैट सोसाइटी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज एंड पोल्यूशन। इट्स अ बिग प्रॉब्लम पर्टिकुलरली इन पुणे। दुनिया में कहीं पे भी अगर सिटी के बीचों बीच नदी अगर बहती होती तो वो क्लीनेस्ट रिवर होती, वहाँ पे बोट वगैरह चलती। अपने पुणे में बड़ा मुठा कहाँ पे है ढूंढना पड़ेगा, उसमें तो ज़्यादातर उसमें आपको गटर ही नज़र आएगा क्योंकि एसटीपी नहीं है बाजू में। तो ये हमारा वैभव है, हमारी संस्कृति है। मैडम ने भी जो बताया लेक के बारे में, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लीडरशिप की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, बट आप यंगस्टर्स हो, आप कॉलेज में आए हो, तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ऐसे प्रोजेक्ट ले लो, नॉट दैट ओनली पोल्यूशन, नॉट दैट ओनली इंडस्ट्री, नॉट दैट ओनली एजुकेशन, नॉट ओनली हेल्थ, you take up problem of your choice, work on it, get the, I will request your institute also to give you certain kind of project and handhold उसको बाकी जो गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, एनजीओज है, उनके साथ जुड़ाने में। और आप कोई प्रोजेक्ट करो, अच्छे प्रोजेक्ट करने से इट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और यू विल बी 100% सक्सेसफुल इन योर करियर। तो उस टाइप से आपको सोचने की ज़रूरत है। लीडरशिप के, कैन यू टेक माय नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लीडरशिप यहाँ पे ही जनरेट होगी। अभी कचरा सरकार बोल रही है, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, अभी 1 अक्टूबर को भी 1 दिन पूरा करना है, बट वो मिशन मोड पे होता है। हर रोज अपना खुद के घर से शुरू करना है कि मैं कचरा सेग्रीगेट ही करूँगा, वैसे ही डालूंगा। म्यूनसिपालिटी की जिम्मेदारी अलग से लेके जाएगी, बिकॉज वेस्ट इज नॉट वेस्ट टुडे, वेस्ट
में बहुत सारी वैल्यू है. I will give you example of one city. I just had, mayor and CEO of Osaka city in Japan who visited my office. उन्होंने बताया कि ओसाका city has reduced its garbage by 46%. तो फिर कचरा उठाने के लिए उतना संसाधन कम लगे, तो म्यूनसिपैलिटी कैन स्पेंड मोर ऑन एंटरटेनमेंट, लाइब्रेरीज, गार्डन्स. हम लोग ये करते, हम कचरा करेंगे और बताएंगे म्यूनसिपैलिटी की जिम्मेदारी, हमारी नहीं, हम तो कचरा करेंगे बिकॉज हम डेमोक्रेसी में हमारा अधिकार है. वेरी अनफॉर्चुनेट. अपनी खुद की जो एटीट्यूड है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है. अनलेस वी डू दैट कोई उसमें फ़र्क नहीं होने वाला है सिटी में. छोटा हो गया थोड़ा, मैंने रात को एक्चुअली लेट ऑफिस से आके किया, बट सम ऑफ द, कैन यू जस्ट एक्सपांड दैट? आई मीन लीडर में क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ये हमने थोड़ा सा, मुझे जो समझ में आया कि लीडर क्या कर सकता है. तो कैन इंस्पायर, ही शुड मोटिवेट. आगे ही शुड डिवोशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन. जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है वो कुछ भी काम नहीं कर सकता है, अपने करियर में भी नहीं, लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं. तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है. उसको फॉलो करने आना चाहिए. दूसरों को फॉलो करो. मैं सोचता हूं नहीं मुझे फॉलो करे लोग, नहीं. लीडर कैन बी वन हु नोज हाउ टू फॉलो, वेयर टू फॉलो, whom टू फॉलो. कंपैशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए. सिर्फ सिंपैथी नहीं बोल रहा हूं मैं. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी. आपको बस रास्ते में कोई लग रहा है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उसको जाके देखा, सिंपैथी दिखाया, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए था. एम्पैथी वो होता है कि आप उसको वहाँ से लेके कहीं पे लेके जाओ, उसको थोड़ा सा हेल्प करो. दैट इज काइंड ऑफ एम्पैथी. तो हमारे लीडर में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यू कैन गो थ्रू ऑल काइंड ऑफ लीडरशिप लिटरेचर. देयर इज एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल. आपको जितना भी उसके ऊपर स्टडी करेंगे कम है, बट अनलेस यू नो द प्रॉब्लम यू विल नेवर फाइंड द सोल्यूशन. आपको ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो आपको कुछ ट्रेड्स जो है वो बहुत ज़रूरी है. कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? हाँ, ये तो हमने बातों बातों में बता दिया. हम वेस्ट से लर्न करके इंडिया को नहीं बदल सकते. हमको अपने प्रॉब्लम्स, अपने सोल्यूशन ही ढूंढने हैं. कंसिडरिंग आवर माइंडसेट, अपने लोगों का माइंडसेट चेंज करना है. तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको लोगों का, हमारे लोगों का माइंडसेट चेंज करना है, तो बहुत उसमें काम करने की ज़रूरत है. रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट. आपको उनके साथ काम करना है सिटीज़ को चेंज करने के लिए. और हम लोग जो है रिस्पॉन्सिबली एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. तो हम लोगों के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर चाहिए ताकि हम लोग अपना अच्छा डिलीवरी दे पाए. नेक्स्ट प्लीज. हाँ, पीपल फॉलो द सक्सेस. आप छोटा सा कोई प्रोजेक्ट ले लो, उसमें सक्सेस दिखाओ, पीपल विल फॉलो यू. आप बहुत बड़ा सोचेंगे और आप फेल्योर हो जाएंगे तो फेल्योर इज ऑलवेज कर्स्ड. इसलिए कोई भी काम जो है छोटा सा शुरू करो और टेक इट फर्दर. वो सस्टेनेबल होता है और दूर तक जाता है और आपको लोग फॉलो करेंगे. एक जमाना था कि रूरल एरिया में काम करने वाले लोग लीडर बनते थे कोई भी फील्ड में. आज वो नहीं है, बिकॉज आवर अर्बन पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 60%. इसकी वजह से अर्बन से आज जो लीडरशिप डेवलप होता है, एनी काइंड ऑफ लीडरशिप, नॉट जस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप, डोंट थिंक ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप ओनली. आप इंडस्ट्री लीडर बन सकते हैं, आप एजुकेशन की लीडर बन सकते हो, आप सोशल लीडरशिप बन सकते हैं. आज इतने सारे एनजीओ में बहुत अच्छा काम कर रहे लोग. और फॉर्चुनेटली विद द चेंज ऑफ कंपनी लॉ 2% ऑफ द प्रॉफिट हैज़ टू गो फॉर CSR. तो CSR में से बहुत सारे प्रोजेक्ट आज हो रहे हैं और दैट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. आई मीन सम ऑफ यू हु आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ वर्क, प्लीज़ गो अहेड. आपको करियर भी अच्छा वहाँ पे आप बना सकते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में. ये शायद आपके लिए नया होगा. आई विल रिक्वेस्ट इंस्टीट्यूट कि आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में स्पेसिफिक कुछ एक सेमिनार करे और बताए. नेक्स्ट
सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, हम जो करते हैं उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, बट वो तब आएगा जब पैशन से काम करता है। मैं कोई काम अगर ज़बरदस्ती से करता हूँ तो मुझे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो मैं पैशन से करता हूँ तो मुझे 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो जो भी काम आप ज़िंदगी में करो वो पैशन से करो, अपने दिल से करो, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और फेल्योर आता भी उसकी चिंता मत करो, कोई भी पहले अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं होता है। 1 2 3 4 जो डेडिकेशन होता है, जो डिटर्मिनेशन होता है, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि पहले अटेम्प्ट में सक्सेस मिलना बेकार है, वो आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है उसमें और आगे प्रगति नहीं करता है। इसलिए फेल्योर आने से डरना नहीं, कभी भी फेल्योर आने दो, आगे चलो, आपका सक्सेस जो है वो आपके पास आएगा ही आएगा। मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा समय ले लिया। आई डोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर, फॉर योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. May I request Avinash sir to just hold on for a few seconds for some questions from our students. Thank you for your very insightful PowerPoint presentation. I think it's a lesson for us teachers also to make such PowerPoints where you have only bullet points and explanations. Thank you, sir. Now, for you students, may I invite Sanjam Lagat to ask your question? Sanjam. Sanjam, are you there? Yes. Good morning, ma'am. I'm Sayan Lagad, first year student in MBA Finance. I have a question. If urban slums are most affected due to environmental pollution, how can we create a safer environment for the residents? Okay, his question is for the urban slums and a safer place for residents. I will tell you example. I worked in Mumbai as a controller of encroachments from 2011 to 2014. I had been to almost all the slums in western suburb. I mean, अगर आपको वहाँ फ्री में भी घर मिलेगा तो आप नहीं जाके रहोगे. There was one discussion in मंत्रालय sometime that time कि इनको फुकट में घर मिलता है रीडेवलपमेंट में, ये नहीं मिलना चाहिए. Then I told in that meeting कि आपको मिल जाएगा, आप 8 दिन वहाँ पे जाके रहो. बिल्कुल मिला. ये लोग 20-20 साल रहते हैं. सो अनहाइजेनिक, क्योंकि स्लम का डेफिनेशन ऐसा है कि जहाँ पे सनलाइट नहीं आता हो, जहाँ पे विंड नहीं जाता हो, जहाँ पे अंधेरा है, गलियाँ छोटी है और गंदगी है, उसको स्लम कहा जाता है. स्लम का डेफिनेशन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट 1971 का एक एक्ट है, स्लम एक्ट, उसमें डेफिनेशन दिया हुआ है. अगर किसी को सच में जाके देखना है, वो स्लम डॉग मिलीनियर करके एक मूवी भी आया था, आपने किसी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लो, धारावी का उसमें है. अनफॉर्चुनेटली उनका वहाँ पे रहने से लॉट ऑफ डिसीजेस आते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत आते हैं, और पानी का प्रॉब्लम, टॉयलेट्स का प्रॉब्लम सभी वहीं पे डाल देते, और दे स्पेंड मोर ऑन हेल्थ दैन व्हाट वी स्पेंड. खाने पीने का तो छोड़ो ही. अभी ऐसे है कि सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करता है रीडेवलपमेंट करने का, मगर उसको बहुत समय लगता है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ सम पीपल. इसके लिए नहीं होता है, बट दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज़. और उनके ऊपर अभी सब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उनको रिहेबिलिट करना नई बिल्डिंग में. शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि वहाँ पे स्लम इम्प्रूवमेंट करना, उनको जो फैसिलिटीज़, टॉयलेट्स, बाथरूम्स और रहने की, अच्छा पीने का पानी देना. और शॉर्ट टर्म है कि उनके हेल्थ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, वहाँ पे हेल्थ क्लिनिक्स वगैरह बढ़ाना. दीज आर द ओनली इश्यूज विच वी कैन टैकल इन दैट मैनर. थैंक यू. Thank you, sir, for your definition of urban slums. Now, may I request, we are actually overstepping the time, may I request all the guests to come ahead for a group photo? Thank you. We can take one more question? Okay. May I ask Kritika Tiwari? Kritika, are you here? Kritika, can you have your question ready? Kritika?
are you there? Your question, please. Go ahead. Yeah, so my question is for Santosh Tikekar, sir. So I would like to know that is it possible to implement... Sorry, Kritika. I think your question, the Sarpanch has not been able to join us. So may we have your question for another occasion. May I request all the guests to have a group picture, please? Thank you. Thank you everyone for spending your valuable time with us. May all of you be seated for our exciting next session with IPS on the uniform, IPS Krishna Prakash. Thank you. A very good morning to one and all present here. We have IPS Krishna Prakash, KP sir, for this next session. It's indeed honor to hear KP sir. We are going to start next session soon. Yeah. Yes, as per MITWPU tradition, may I now request all the dignitaries of session 7A for the ringing of bell to join their hands together to ring the bell of social leadership on this auspicious occasion. Let the sound be loud and clear. This very ringing of bell, my dear friends, symbolically reaffirms our faith and continuance and strengthening of democracy. We are witnessing, experiencing a historical moment, my dear friends. Let us have a huge round of applause, my dear friends. May I request all the dignitaries come on the stage and occupy their designated positions. We are indeed honor to welcome IPS Krishna Prakash sir, Chief Maharashtra Police Force 1, Dr. Ganesh Kakhandikar sir, Associate Dean FOET, Dr. Prasad Kulkarni, Dr. Rohini Kale, Dr. Gautam Bapat, Dr. Ashwin Kuchekar, Dr. Ramchandra Manatkar, Gopal Vamne sir, Co-Convener Sldp, Dr. T.J. Vidyasagar, Dr. Shruti Nigutkar, Dr. Sushil Kumar Gupta, and all academics, senior academic leadership. Yes, 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 yes. A very good morning to one and all present here. I, Professor Arun Mai, extend a very warm welcome to all of you in this session. The theme of this session is Social Leadership, Awakening the Phoenix Within. It encompasses the core themes Yuva Shakti, Renew, Review, and Transform. Life at crossroad, do's and don'ts of distraction,
Dare to Dream, Journey of Transformation. I remember the poem, Marathi poem by Sandeep Khare, Japat Kinara Sheed Sodane Na Manzoor. Japat Kinara Sheed Sodane Na Manzoor, Anwaryachi Wat Pahane Na Manzoor. मी ठरवावी दिशा वाहत्या पाण्याची, मी ठरवावी दिशा वाहत्या पाण्याची, येईल त्या लाटेवर डुलणे नामंजूर, जपत किनारा शीड सोडणे नामंजूर. This is the attitude of today's youth, and MITWPU has taken various initiatives for the enrichment and development of our students, which will help in nation building. Franklin Roosevelt said that we cannot always build the future of our youth, but we can build our youth for the future. So we have this today's session for the youth and their enrichment. May I now request Dr. Kakhandikar sir, Dean FOET and convener of Sldp, to welcome the guest and brief the session. Over to Kakhandikar sir. Hello. Good morning, dear friends. Today we are privileged to have with a distinguished guest on the dais, Mr. Krishna Prakash, an exemplary Indian Police Service officer from Maharashtra. His presence here is not just an occasion, but a profound opportunity for all of us to be inspired, to dream big, and to realize that the path to success is paved with dedication, hard work, and commitment. Mr. Krishna Prakash's journey from a regular student to a beacon of law enforcement is a testament of the power of perseverance. He faced numerous challenges, but he overcame them with resilience. Remember, obstacles are not roadblocks, they are stepping stones on the path of your goals. In his service as an IPS officer, he embodies the qualities of leadership, integrity, and courage. These qualities should serve as guiding lights as you navigate through your academic journey also. Leaders in you own right, stand for what is right, and have the courage to face adversity on it. Each one of you has unique talent and potentials, and Krishna Prakash sir's story reminds us that excellence is not reserved for a selected few, but can be achieved by those who believes in themselves, in their abilities. Seize every opportunity, challenge your limits, and believe that you are capable of doing great things. As undergraduate students, you are at a crucial journey in your lives. Embrace your education, for its key that unlocks most of the doors of your future success. Stay focused on your goals, work tirelessly, and never lose the sight of your dreams. We are privileged to have a dynamic leader with us. So I welcome you, sir, on the campus of Dr. Vishwanath Karad, MIT World Peace University. Thank you very much. Thank you, Kakhandikar sir. Indian culture has various traditions. We call Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava. The fourth tradition of Indian culture is Atithi Devo Bhava. Now it's time to felicitate our guest. So I request Honorable Rahul sir to felicitate today's guest, IPS Krishna Prakash sir. It's indeed honor, sir. You have graced this occasion and you are going to guide our students. They are eager to listen to you, sir. Now, I would like to take an opportunity to introduce Krishna Prakash sir. He is Special IG, Maharashtra Police Force 1. He is an IPS officer of Maharashtra cadre and he has joined in 1998. He has served, he has first posting in Gadchiroli district. He has served various posts with Maharashtra Police. His remarkable accomplishments have also eased his name into the World Book of Records. He is recognized as the first Indian government servant, civil servant, uniformed service officer, including armed forces, paramilitary forces, to attain the prestigious Iron Man title. Apart from his career in civil services, he is famous for his achievements
of the twin gold feathers in his cap that are marked the victory in the two internationally recognized triathlon titles. One is Ironman title in 2017 and second being Ultraman in 2018. He also stands as a motivational speaker, making him so popular among students' fraternity. You must not be knowing that KP sir is a journalist, enthusiast, poet, publisher, and a scholar of religious studies. He has also been honored with a Shiv Chhatrapati Sahasik Award for this year, 2022 and 23 of Maharashtra State Government. May I now request Honorable IPS Krishna Prakash sir to guide our students and enlighten them. IPS Krishna Prakash sir. Let us welcome with a huge round of applause, my dear friends. Indeed, it will be a great honor to listen to him. Honorable Dr. Karad, dignitaries on the days, dignitaries of the days, all the students, my brothers and sisters who are going to shape this country, to lead the world. My dear friends, today's topic is social leadership, awakening the phoenix within. I must say to you all that once Swami Vivekananda has said so, that our countrymen should have the nerves of steel, the muscles of iron, and the minds of thunderbolt. If we wish to create inspirational history, we need to have an iron will. And after experiencing so much ups and downs, after going through many years of service, 25 years of service, in the field of policing, after completing so many endurance goals, I have also realized that we have strong nerves, stronger muscles, but the strongest mind. And the strongest mind can only be discovered and detected when you have a passionate, brave heart for something. If you have a passionate, brave heart, ticking inside your chest, then only you can achieve anything and everything under the sun. Then only we can lead the world.
Let me first realize you that what is India? भारत क्या है? हिंदुस्तान क्या है? भारत क्या है? In discovery of India, Pandit Jawaharlal Nehru very beautifully described it. बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की है उन्होंने इसकी कि वो जहां भी जाते थे, wherever he used to go, during the freedom struggle, people used to raise the slogans, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत अमर रहे. आप लोग भी नारे लगाइए, मैं नारा लगवाता हूं, लेकिन उसके बाद एक प्रश्न पूछने वाला हूं. आई एम गोइंग टू क्वेश्चन यू. भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के. My dear friends, when same sort of slogans were going on before independence, Pandit Jawaharlal Nehru questioned the crowd, what is Bharat Mata? Whose victory you want? Whose long life you want? Jai means victory. Amar Rahe means long life. Whose victory you want? किसकी अमरता चाहते हो? किसकी जय जयकार कर रहे हो? किसके विजय की आशा करते हो? तुम अपेक्षा करते हो? उन्होंने ये प्रश्न पूछा और इस प्रश्न का उत्तर भीड़ में किसी के पास नहीं था. एक युवा खड़ा हुआ and he replied, Bharat Mata is the patch of land where I till my earth, grow my crops, harvest them and make my livelihood. भारत माता वो जमीन का टुकड़ा है जहां हम अपनी फसलें उगाते हैं, हल जोतते हैं, फसलें उगाते हैं और उसके उन फसलों के बल पर अपनी जीविका चलाते हैं. उन्होंने कहा, नो, यू हैव नॉट डिस्कवर्ड भारत माता. तब दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा, भारत माता केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं, यहां के पठार, पहाड़, समंदर, नदियां, विस्तृत मैदान, सब है भारत माता. पंडित जवाहरलाल नेहरू मुस्कुराए, बोले, ये भारत माता, ये पठार, पहाड़, समंदर, नदियां, विस्तृत मैदान नहीं है, तो फिर भारत माता है क्या? Who is भारत माता then? हिंदुस्तान है क्या? भारत है क्या? तब भीड़ से किसी ने प्रश्न किया, तब आप ही बताओ, भारत माता है क्या? किसकी जय जयकार हम कर रहे हैं? किसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? किसकी अमरता के नारे लगा रहे हैं? Who is this भारत माता? Pandit Jawaharlal Nehru replied it very intelligently and very passionately that Bharat Mata is not a patch of land. It is neither a patch of land nor the ocean, plateaus, mountains, broad fields. It is not that. Bharat Mata cannot be a geographical expression. कोई भी देश उसकी ज्योग्राफी के कारण देश नहीं बनता है, उसके भौगोलिक स्थिति के कारण देश नहीं बनता है. भारत माता वहां रहने वाले करोड़ों करोड़ लोगों से बनता है जो सदियों से वहां रहते आए हैं. उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, उनके जीवंत तत्व, उनकी कंटिन्यूटी, उनकी सर्वाइवल और उनकी खूबियों और खामियों से देश बनता है. भारत माता is the millions of people who lives in this country through centuries and who is living in this country right now.
And therefore we should take a pledge that we should respect the citizens of this country, law of this country. We should take a pledge to serve the people of this country. Serving this nation does not mean serving the broad fields, rivers and mountains only, but serving the people, respecting the people. If you are respecting the people, if you are serving the people, if you are empowering them, if you are strengthening them, if you are making them better, healthier, fitter, knowledgeable, then only Bharat Mata is becoming enlightened, strengthened, empowered. If you are leaving some community behind, if you are leaving some gender behind, then Bharat Mata is also to that extent will be behind. वो भी पीछे रह जाएंगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी. अगर हम ये सोचते हैं कि स्त्रियों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो इसका अर्थ है हमारे देश की आधी जनसंख्या की ताकत कम हो गई, उसका विकास कम हो गया. अगर हम ये सोचते हैं कि किसी खास वर्ग या समाज का विकास नहीं होना चाहिए, तो उस खास वर्ग और समाज का जितना विकास नहीं होता है, उतना इस देश का विकास रुक जाता है, इस राष्ट्र का विकास रुक जाता है. अगर हम सोचते हैं कि थर्ड जेंडर का काम है सड़क पर भीख मांगना, तो उस थर्ड जेंडर को आगे बढ़ने से रोककर इस भारत माता को आगे बढ़ने से रोकते हैं. हर एक शख्स, हर एक व्यक्ति है भारत माता, और इसे रियलाइज करना बहुत जरूरी है. मैं डॉक्टर कराड से आज से नहीं, आज से लगभग 24 साल पहले से बहुत प्रभावित हूं. आई एम सो मच इम्प्रेस्ड. आई वॉज यंग ASP 24 years back. In 1999, 2000, I was called for a function over there in Latur, in a medical college. And there I have heard him. I was mesmerized. I was mesmerized. A person who is having so much clear vision that what our country's strength is, what our nation's strength is. किसी देश की ताकत को अगर जानना है, तो उस देश के अतीत को, उसकी संस्कृति को जानना होगा, उसके वर्तमान को जानना होगा. अगर दुनिया के लोग ये पूछते हैं कि भारत में क्या अच्छा है, भारत में क्या बड़ा है, तो हम उन क्षेत्रों में उनसे मुकाबला कर सकते हैं जो क्षेत्र, जो एरियाज हमने अतीत से संस्कार के रूप में पाया है. विल ड्यूरा का कथन है कि इतिहास के वो जीवंत तत्व ही संस्कृति हैं, जो सातत्य और उत्तरजीविता के साथ हमारे जीवन में समोए रहते हैं, हमारे जीवन में समाहित होते हैं. और भारत की सबसे बड़ी ताकत इसका अध्यात्म है. भारत की सबसे बड़ी शक्ति सर्वसमावेशिता है, सबको साथ लेकर चलने की परंपरा है. भारत की सबसे बड़ी ताकत कोई कहीं से आता हो, उसे भारत माता में समा लेने की क्षमता से है. आपने जाधव राणा के दरबार की कथा सुनी होगी कि जाधव राणा कच्छ का एक राजा हुआ करता था, और वहां पारसी लोग 7 समंदर पार करके, मतलब समंदर पार करके आए भागकर,
और वहीं तट पे रहने लगे। जादव राणा ने उनको अपने दरबार में बुलाया। उनका बूढ़ा सरदार कांपता हुआ आया, मशाल उसके हाथ में थी। जादव राणा ने उसे कहा, आप यहां रहने आए हो, आपको क्या चाहिए ये बताओ। उन्होंने कहा, हमें कुछ जमीनें चाहिए जिससे कि हम किसी पे बोझ ना बने। उन्होंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो पहले से ही भरा हुआ देश है, इसमें बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारी परंपराएं पहले से है, आप बाहर से आए हो, आकर क्या चाहते हो। बोला, हमें हमारी परंपराएं और संस्कृति मानने की छूट चाहिए, क्योंकि हम जहां थे वहां आक्रमण होने के कारण हम यहां आए हैं, हम अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं। जादव राणा ने कहा कि बिल्कुल आपको रखेंगे, लेकिन आप बताइए आप क्या योगदान देंगे। उन्होंने कहा, जादव राणा के दरबार में जो पारसी सरदार आया था उसने कहा, एक कटोरा दूध ले आइए, एक वाटी दूध आना, आणि त्यामध्ये साखर, त्यामध्ये गुड़ टाका। दूध पहले से फुल था दूध, लेकिन उसमें साखर डालने के बाद वो बाहर नहीं छलका, बल्कि वो मीठा बन गया। हम इसी तरह से हिंदुस्तान में मिठास बनकर रहना चाहते हैं। और उन्होंने वचन दिया कि वो यहां आकर किसी प्रकार का एक भी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, और इसीलिए उनकी संख्या लगातार घट रही है, जबकि वो सबसे समृद्ध समाज है, पारसी समाज। तो हिंदुस्तान की यह ताकत है कि हिंदुस्तान सबको अपने में समा लेता है, जोड़ लेता है। अब मैं इस मुद्दे पर आता हूं कि अपने अंदर के फिनिक्स को पहचानना है। राख से आपको बाहर निकलकर अपना साम्राज्य स्थापित करना है। साम्राज्य का मतलब यह नहीं होता कि राजपाट स्थापित करना है। साम्राज्य का मतलब यह होता है कि ऑड्स में, डिफिकल्ट सिचुएशन में आपने हार नहीं मानना है। निराश होकर ड्रग, दारू, जिसको आप लोग किक समझते हो, उस पे नहीं पड़ जाना। खासकर उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, उन युवाओं को बताना चाहता हूं जो अभी बाहर से आए और अब तक अपने घरों में कैद थे। घर से मां बाप का रोज रिपोर्टिंग होता था, समय पर वापस आना पड़ता था। ये जो परिसर है, ये स्मोक फ्री जोन है। ये अपने आप में अध्यात्म को लेकर चलता है। अपने देश में कमजोर युवाओं की कड़ी को, फली को वो देखना नहीं चाहता है। तो ये जो किक, आप निराशा की हालत में जाकर कि अब क्या करना है, मैं बोर हो रहा हूं, ये किक जो आपको गलत चीजों में मिलता है, ये निर्माण में मिलना चाहिए। Glory does not lie in never falling but rising every time we fall. महानता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम एक बार भी ना गिरे, बल्कि हर बार गिरने पर उठने का प्रयत्न करें। हमारी संस्कृति गवाह है। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया यादवों पर, मथुरा पर। 17 बार। और आखिर में कृष्ण, जिन्हें संपूर्ण अवतार माना जाता है, वो उन्होंने रण छोड़ दिया और इसीलिए उनका नाम रणछोड़ जी कहलाता है। लेकिन उन्होंने इस क्रॉस्ड अर्थ पॉलिसी जो रूस ने बाद में अपनाई हिटलर के खिलाफ, पूरा शहर ही खाली कर दिया था और पूरा शहर दूसरी जगह बसा दिया था, द्वारिका में। वहां कुछ भी नहीं मिला जरासंध को। उस जीत का जरासंध को कोई फायदा नहीं हुआ। और अंततोगत्वा जरासंध, जिसने तमाम संधियां भारत अर्थात कृष्ण के खिलाफ की थी, यादवों के खिलाफ की थी, वो परास्त हुआ। शक्तिशाली होकर भी परास्त हो सकता है, रणनीति सही होनी चाहिए। ब्रिटिश हुकूमत शक्तिशाली थी, बहुत शक्तिशाली। छोटी सी व्यापारिक सेना लेकर आने वाला ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश पर 200 सालों तक राज करता रहा। लेकिन महात्मा गांधी को आप जितना जानते हो,
उतना ही नहीं है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक पॉलिसी अप्लाई की थी, स्ट्रगल ट्रूथ एंड स्ट्रगल, संघर्ष समझौता और संघर्ष। ग्रामसी का प्रिंसिपल है कि लगातार संघर्ष करोगे तो बर्नआउट सिंड्रोम होगा। मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल है, लगातार संघर्ष नहीं किया जाता है। संघर्ष के बाद जब आपको लगता है कि संघर्ष को कुचल दिया जाएगा या इस संघर्ष से हम बर्न आउट हो जाएंगे, तो आपने थोड़ा अपने आप को शांत रहकर यह सोचना चाहिए कि अगली योजना क्या है। चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने संघर्ष रोक दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद उन्होंने मूवमेंट को आगे रोका, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। एक स्टेप में सब कुछ नहीं मिलता। अगर रातों रात कामयाब होने का सपना देखोगे तो देयर इज नो शॉर्टकट। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। यह एक यात्रा है, एक प्रवास आहे। आणि त्यामुळे हा प्रवास असल्यामुळे तुम्हाला हा प्रवास आहे हे आवर्जून समजून घ्यायला पाहिजे। तुम्ही इथपर्यंत पोहोचला, तुम्ही MIT मध्ये पोहोचला, तुम्ही खूप खुश व्हाल की मी MIT मध्ये आलो, आता खूप छान इन्स्टिट्यूट मध्ये आलो, अत्यंत उत्तम इन्स्टिट्यूट मध्ये संस्थांमध्ये आलो, आता आम्हाला काही करायचं नाही। इथेच संपला तुमचा प्रवास। This journey will have a screeching halt here. If you resort to drugs, if you resort to parties, if you resort to night outs, you will have a screeching halt here only. यही सब समाप्त हो जाएगा। आगे का प्रवास अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी कुछ परिंदों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है तुमने मुट्ठी भर जमीन, अभी कई आसमान बाकी है। केवल ख्वाहिश रखने से, केवल योजना बनाने से नहीं होगा। मैंने बताया रणछोड़दास, भगवान श्री कृष्ण रणछोड़दास के नाम से जाने जाते हैं। उनके अनेक नामों में ये नाम भी मशहूर है। जरासंध के डर से भागे थे, लेकिन वो डर नहीं था, वो तैयारी थी नए शहर की स्थापना की और पुराने को ध्वंस करने की, जहां जरासंध का अंत होना था। अंग्रेज रूपी जरासंध का अंत करने के लिए, ब्रितानी हुकूमत का अंत करने के लिए महात्मा गांधी बैक स्टेप लेते थे, उनसे कंप्रोमाइजेस करते थे और उसके बाद वो फिर से उससे संघर्ष करते थे। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहे छत्रपती शिवाजी महाराज। अल्बर्ट टायबर्न ने सांगितले होते की जर आमच्या देशाला छत्रपती शिवाजी महाराज आले असते तर आम्ही त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचले असतो। मी तरी सांगेन, छत्रपती शिवाजी महाराज डोक्यावर घेऊन नाचण्याची गोष्ट नाही, डोक्यात घेण्याची गोष्ट आहे, डोक्यात घेण्याची गोष्ट आहे। डोक्यावर नाचले तर काय फायदा, जर त्यांचे सिद्धांत, त्यांचे विचार, त्यांची समरनीती, त्यांची कूटनीती तुम्हाला समजली नाही, ते जानता राजा होते ते तुम्हाला समजले नाही, ते सर्वांना घेऊन चालत होते ते तुम्हाला समजले नाही, ते सर्वांना सम्मान करत होते, त्यांना सम्मान देत होते हे तुम्हाला समजले नाही, ते जनतेसाठी सुशासन, स्वराज्याची स्थापना करत होते, सुराज्याची स्थापना करत होते, हे जोपर्यंत तुम्हाला समजले नाही तोपर्यंत तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजला समजलंच नाही, कळलंच नाही तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराज। छत्रपती शिवाजी महाराज कडे काय होते, एक संस्कार आणि वीर आई होती आणि ते स्वतः होते। इथे जे ज्या पुण्यामध्ये तुम्ही आता शिकत आहात ते अभिषिक्त प्लेस म्हणून म्हणले जात होते। इथे त्याने नांगर चालवून त्याने सुरुवात केली, शेतीच्या इथले मावळांना, पंचक्रोशीतील लोकांना
गोळा केले आणि त्यांना योद्धा बनवले. आणि त्या मावळांना घेऊन किल्लेवर किल्ले जिंकत गेले. काही नव्हता त्यांच्याकडे, काही नव्हता त्यांच्याकडे, किल्लेवर किल्ले जिंकत गेले. आणि मिर्झा राजा जयसिंगने जेव्हा मोठी सेना घेऊन इथे आले तेव्हा त्यांनी त्यांच्याशी कॉम्प्रोमाइज केले, नाही केले असं नाही आहे. जेव्हा त्यांना 2000 मनसबदारीचे लोकांमध्ये त्यांना उभे केले तेव्हा ते रागवले. त्यांचा स्वाभिमान होता, जागा होता, रागवले. त्यांना कैद करण्यात आला, पण तिथे हार नाही मानले. एक फ्रॉम झिरो टू हिरो, फ्रॉम स्क्रॅच टू रिचेस राजा बनले. नंतर त्याने कॉम्प्रोमाइज केले. कॉम्प्रोमाइज केल्यानंतर जेव्हा परिस्थिती आली विरोध केल्यानंतर बंदी बनले. बंदी बनल्यानंतर निराश नाही झाले, हताश नाही झाले. He was never disappointed. You all know कि उन्होंने बीमारी का बहाना किया, बीमारी में लोग आते गए, लोग आकर के वहां पर उनका मनोरंजन करते रहे और इसी दरमियान मिठाई जब बांटने लगे कि वो ठीक हो रहे हैं और उसी मिठाई के मदारी मेहतर के मिठाई के टोकरे में वो बाहर निकल गए. हार मानेंगे तो आप हार जाएंगे. No one can make you feel inferior without your consent. आपकी सहमति के सिवाय कोई भी आपको कमजोर नहीं समझ सकता. आपसे गलती होगी ऐसा नहीं है. मैन इज बंडल ऑफ कंट्राडिक्शन. गलतियां होंगी, मुझसे भी होती है गलतियां. हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं, हम संपूर्ण नहीं है, हम मुकम्मल नहीं है. We are not absolute like God. We are human being. God is within us. We try to go in the path of completeness, but we never achieve that. मैं हमेशा कहता हूं इसीलिए कि भाई अच्छा बनूं ना बनूं, सच्चा बनो. कोशिश करो कि सच्चा बने, जितना हो सके उतना ही सच्चा बनो. क्योंकि सच्चा इज एब्सोल्यूट टर्म और अच्छा इज अ रिलेटिव टर्म. अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा. एक के लिए अच्छा तो दूसरे के लिए बुरा भी. लेकिन एक के लिए सच्चा दूसरे के लिए झूठा नहीं हो सकता, दूसरे के लिए बुरा हो सकता है. मैं पुलिस ऑफिसर के रूप में किसी पर कार्रवाई करता हूं. मेरे आपके पिताजी, योर फादर, योर तुमचे वडील तुम्हाला तुमच्यावर रागवतात किंवा तुमची आई तुमच्यावर रागवते, याचा अर्थ हा नाही की ते चुकीचे सांगते आहे, ते खरं सांगत असावेत. हा तुम्हाला पण माहीत आहे. पण तुमचा यंग रक्त लहू आहे तुमचा, आणि त्यामुळे तुमच्यामध्ये विरोध तळफळत असतो. आणि त्यामुळे तुम्ही त्यांचा विरोध करतात की आम्ही आजचे लोग आहोत, ते तर मागचे लोग आहेत. कौन कौन मिलेनियम के बाद क्या, क्या के बाद क्या, आप लोग क्या क्या नए नए टर्मिनोलॉजी देते हो. पर सच सच है, सच को बदला नहीं जा सकता. सूरज अगर पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, किसी भी भाषा में कह लो, बच्चे से पूछो या बड़े से पूछो, सूरज पूरब में उगेगा, पश्चिम में डूबेगा. गुलाब के फूल खूबसूरत होते हैं, सभी बोलेंगे. उसमें कांटे होते हैं, सभी बोलेंगे. जो जो होता है वो होता है. सच सच है, सच बदलता नहीं, सच रिलेटिव नहीं है. इसलिए मैं कभी अच्छा नहीं होना चाहता किसी के लिए. मैं सच्चा होना चाहता हूं, मुकम्मल होना चाहता हूं. जो कंप्लीट है, जो पूरी तरह से, उसकी कोशिश करो. और ये जर्नी कभी खत्म नहीं होगी, ये प्रवास कभी खत्म नहीं होगा. तो छत्रपती शिवाजी महाराज तिथून निघाले आणि 6 महिन्यात सर्व किल्ले, एवढी मोठी सेना होती औरंगजेबची, मिर्झा राजा जयसिंगची, सर्व किल्ले परत घेतले आणि काही आणखीन किल्ले जिंकून घेतले. बरोबर आहे ना. आणि त्यामुळे जेव्हा मला छत्रपती शिवाजी महाराजचं साहसिक क्रीडा पुरस्कार मिळाला, मी खूप आनंदी झालो. कारण ते माझे आराध्य दैवत होते. समरनीतीचे ते माझे समरनीती, कूटनीती, शासननीती, सुशासन याचे, आणि आम्ही प्रशासनामध्ये आहोत. त्यामुळे
त्यांच्यापेक्षा मोठा कोण असू शकतात आणि त्यांच्या विरुद्ध ते पण साहसिक क्रीडा प्रकारमध्ये. मी प्रथमच IPS IAS दर्जाचे अधिकारी आहे ज्यांना क्रीडामध्ये आणि क्रीडा खेळण्यासाठी आणि साहसिक क्रीडा प्रकारमध्ये शिव छत्रपती साहसिक क्रीडा पुरस्कार मिळाला. And there is no end of this journey. Boss and bosses, all the. मैं आपको बताता हूं ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती. आप लोगों ने मैनेजमेंट अभी पढ़ा नहीं होगा, कुछ लोग मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे तो आपको पता होगा. जौहरीज विंडो मालूम है क्या आप लोगों को? जो और हैरी नाम के दो लोगों ने मिलकर एक जौहरीज विंडो तैयार किया जिसमें पर्सनालिटी के दो भाग होते हैं. प्रत्येक व्यक्तित्व के, प्रत्येक शख्सियत के दो भाग होते हैं. एक तरफ होता है जिसे आप जानते हो, नोन टू यू. दूसरी तरफ वो होता है नोन टू अदर्स. नोन टू यू एंड नोन टू अदर्स में एक भाग ऐसा होता है जो आप भी जानते हो, दूसरे भी जानते हैं. ये सबके बीच आप लोकप्रिय रहते हो इसी कारण से, क्योंकि आपको भी अपनी ताकत मालूम है और दूसरों को भी आपकी ताकत मालूम है. या आपको भी अपनी वीकनेस मालूम है, दूसरों को भी अपने वीकनेस मालूम है, इसलिए आप सुधारते रहते हो, दूसरे आपकी सहायता करते रहते हो उसमें. दूसरा ये वो होता है जो आपको मालूम है लेकिन दूसरे को मालूम नहीं, ये आपका स्ट्रेंथ है. तीसरा वो हिस्सा होता है जो आपको नहीं मालूम है, दूसरों को मालूम है, ये आपकी वीकनेस है. और चौथा वो हिस्सा होता है जो ना आपको मालूम है ना दूसरों को मालूम है. व्यक्तित्व का ये हिस्सा ढूंढने का प्रयत्न करो, ये हिस्सा बहुत स्ट्रांग होता है. I discovered it very late that I have this much physical and mental strength. And you will surprise to know that at the age of 46, I started doing endurance sports. Ironman, Ultraman, race across West America. I'm first Indian to finish race across West America. That is 1500 kilometer cycling race, which starts from Oceanside, California. You have to climb up to glass elevator hills, drop down to Sonora and Mojave deserts of Arizona and Utah province. 900 kilometers you have to cycle in desert area where there is no foliage, no plantation, no greenery. Only rocks are there that your eyes gets blinded. You quickly dehydrate, and after that you have to go down the salt and sea region, which is 175 feet below the sea, and then you have to climb up the Rocky Mountains. The gradual ascent, the gradual elevation is double than Everest. 60,000 feet, gradual, not steepest, gradual up and down. 300 kilometers you have to cycle there. Here the temperature is 47 to 52 degrees centigrade. 900 kilometers you have to cycle in that temperature, and 300 kilometers you have to cycle from 14 to -2 degrees centigrade. And at this age, at 49, I could do the race across West America, finish, and stood 4th in the world. You will. So there is never ending process. Success is not a destination. मैंने पहले ही कहा आपको. मैंने अभी लॉ किया है, अभी 71% मार्क्स से मुंबई यूनिवर्सिटी से अभी मैंने लॉ किया है. And I think in 3-year degree course I am the topper over there. क्योंकि मैंने जो मार्क्स देखा उसमें मेरे मार्क्स लास्ट ईयर के हाईएस्ट हैं. मैंने यूपीएससी करने के बाद मैं आईपीएस बन गया. मैं आराम से बैठ सकता था. आईपीएस, आई एम गेटिंग ऑल द नेम, फेम, ऑल द ऑथोरिटी, ऑल द पावर. बट स्टिल आई परस्यूड एमबीए. I did MBA. I did
MA in Hindi because I have interest in literature. I did MPhil in Hindi and presently I am pursuing PhD in Hindi literature. So there is no ending of success. एक खत्म हो गया तो आप निश्चिंत होकर मत बैठ जाओ, हाथ पर हाथ धरकर मत बैठ जाओ। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में। वक्त की साख को हिलाना होगा, अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, और केवल अपने हिस्से का दिया नहीं जलाना होगा, दूसरों के लिए भी दिया जलाना होगा। एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि जो नियॉन लाइट विद्युत बल्ब हैं, वो यहां दीप प्रज्वलन अभी अभी हुआ है, उस दिए की तरफ देखकर मुस्कुराए, हंसने लगे। दिया ने पूछ लिया, भाई तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों हंस रहे हो? देखो हमारे में कितना विद्युत है, कितना प्रकाश है, हम चारों तरफ रोशन रोशन कर रहे हैं, और तुम जब तक तेल थी, जब तक बाती था, जब तक लोगों ने आपको जलाया, आप जले और बुझ गए। दिया उदास नहीं हुआ, फिनिक्स उदास नहीं हुआ, वो मुस्कुराया। उसको मुस्कुराते देखकर, अरे तुच्छ दिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अभी भी मुस्कुरा रहे हो, अपनी हीनता पे मुस्कुरा रहे हो। उसने कहा, नहीं, तुमचे न्यूनगंडवर तुम्ही असा हसत आहात। त्याने सांगितलं, नाही, आम्ही जे करू शकतो तुम्ही करू शकत नाही, मैं जो कर सकता हूं वो तुम नहीं कर सकते। व्हाट आई कैन डू यू कांट डू। फिर उसने बोला, इन दिस डेज ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर यू सेइंग? ये क्या कह रहे हो इस विकास के काल में, इस विज्ञान के काल में? दिए ने कहा, मैं एक दिए से दूसरा दिया जला सकता हूं, तुम एक नियॉन लाइट से दूसरा नियॉन लाइट नहीं जला सकते। तो एक दिए से दूसरा दिया जलाना है, और इस पूरे देश को, पूरे समाज को जगाना है, और आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। आप में, सब में ये शक्ति है, आपके अंदर सब में वो फिनिक्स मौजूद है जो छत्रपति शिवाजी महाराज में था, जो महात्मा गांधी में था। नई सोच नई, विचार नए, आचार और व्यवहार वहीं से लाने होंगे, संस्कार वहीं से लाने होंगे। भारत 21वीं सदी में नहीं जीता है, भारत 21 सदियों और उसके पहले की सदियों में भी जीता है। यही भारत की ताकत है, यही भारत का स्ट्रेंथ है, यही भारत की का पार है। मैं फिर से, जिस तरह से MIT कार्य कर रहा है, जिस तरह से डॉक्टर प्रोफेसर कराड जिस तरह के कार्य कर रहे हैं, मैं भले ही इस संस्थान में नहीं पढ़ पाया हूं, पर मैं इसका ऋणी हूं कि हमारे देश को जो वो संस्कार दे रहे हैं, देश के युवाओं को जो संस्कार दे रहे हैं, देश की भावी पीढ़ी को, भवितव्य को, मुस्तकबिल को जो वो संस्कार दे रहे हैं, वो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसी को देश की जरूरत है। देश को पब्स की, देश को पान टपरी की जरूरत नहीं है, पान टपरी में बिकने वाले ड्रग्स की जरूरत नहीं है, पब्स में टेबल खरीदने की जरूरत नहीं है देश को। वहां आपका समय जाया होता है। काश जो लोग वहां जाते हैं, मतलब फ्राइडे सैटरडे नाइट्स की जगह अगर आप संडे सैटरडे मॉर्निंग का किक एंजॉय करें, दौड़ने का, साइकिलिंग करने का, स्विमिंग करने का, एक्सरसाइज करने का अगर किक एंजॉय करें, काश आप वो करें, तो ये देश सबसे सुदृढ़ देश बनने में कोई कमी इसमें नहीं रहेगी। आपको मालूम है, भारत 1,47 करोड़ लोगों का देश है,
और हम एशिया कप में चौथे या 5वें स्थान पर हैं, अभी चल रहे हैं। ओलंपिक्स में हम और भी बहुत पीछे रहते हैं। हम कुछ मेडल्स जीत कर आते हैं और हम अपना गर्व से सीना फुलाते हैं। यह काफी नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या अगर सिरमौर नहीं बन पाती, अगर इतनी बड़ी युवा शक्ति, आज हम चीन से भी युवा शक्ति के मामले में आगे हैं, इसका अर्थ सबसे अधिक युवा ऊर्जा हमारे पास है। यूथ एनर्जी इज विथ अस। Once Swami Vivekananda said, give me 100 dedicated youths, I will change the whole scenario of the world. We have so many youths, so much of energy. But whether it is rightly directed, क्या ये सही दिशा में जा रहा है? The same energy, वही ऊर्जा अगर सही दिशा में जाता है तो वो निर्माण कर सकता है। साने गुरुजी ने कहा था, हाथ लगे निर्माण में, नहीं मारने नहीं काटने। निर्माण के कार्य में हम अगर अपना योगदान देते हैं, कैसे देंगे? अगर हम सही सीखेंगे। चीन ने एक जमाने में ओलंपिक्स में भाग लेना बंद कर दिया था, तब उन्होंने ओलंपिक स्कूल बनाए 2000 से अधिक, ओपन जिम्स बनाए हजारों, और जब कुछ दशकों के बाद आए तो सीधे ओलंपिक चैंपियन बन गए। एक जमाने में वहां अफीम की लत लगी होती थी, उन्होंने नारा दिया, बिल्ड योर बॉडी एंड सेव योर कंट्री। हमारे यहां यह लत अभी लगाई जा रही है। वो तुम्हें कमजोर बनाएगी, मजबूत नहीं। वो तुम्हें डिपेंडेंट बनाएगी, स्वावलंबी नहीं, स्वनिर्भर नहीं, आत्मनिर्भर नहीं, जिस भारत की आप संकल्पना करते हो। न एक्सेसिव बोजिंग, न पीयर प्रेशर में ड्रग लेना, न निराशा में ड्रग लेना और दारू पीना। ये आपको कभी भी स्ट्रांग नहीं बनाएगी, ये आपको वीक और वीक ही बनाएगी। आपको लगता है कि थोड़ी देर के लिए, अरे तुम उसको प्यार करते हो, उसको कुछ बोल नहीं पाते, उसके सामने हकलाते हो, दारू पी के जाओ, बोल दोगे, वो भी समझेगी तुमने दारू पी के पिया है, माफ कर देगी अगर वो तुम्हें नहीं चाहती होगी तो। ये गलत है। जो कहना है सीधे कहो। दारू पी के कहा तो इसका अर्थ तुम अपने होशो हवास में नहीं कहा। मैं उस गजल से मुनासिब नहीं हूं, उस गजल के बारे में मैं सहमत नहीं हूं कि शराब पी के सच बोलता है आदमी शुभ शाम। मुझे वो गजल मंजूर नहीं है। शराब पी के आप गलत करते हो, सुबह शाम सच नहीं बोलते हो, कमजोर होते हो, वीक होते हो। वैसे मैं टीटॉटलर हूं, मैं कुछ नहीं पीता, पर मैं ऐसा भी नहीं कहता कि आप सोशलाइजेशन मत करो, लेकिन पीयर प्रेशर में एक्सेसिव कुछ भी मत करो। जो करते हो और जो नहीं करते हो वो मत करो। बहुत बार तुम्हारे बोलेंगे मुझे, मैं आर्मी ऑफिसर्स मेरे फ्रेंड हैं, नेवी ऑफिसर्स मेरे फ्रेंड हैं, एयरफोर्स के ऑफिसर फ्रेंड हैं, पुलिस ऑफिसर्स फ्रेंड हैं, सीनियर IAS हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरे फ्रेंड हैं। और जब मैं उनकी पार्टियों में जाता हूँ वो बोलते हैं, आप सचमुच नहीं पीते? आपने छोड़ दिया, आप क्यों नहीं पीते हैं? मैडम के डर से नहीं पीते हैं। किसके डर से नहीं पीते हैं? अब मैडम तो नहीं है। मैं उनको बोलता हूँ, भाई मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, मैं जो काम करता हूँ वो मेरा अच्छा गुण है, और आप जो काम करते हो वो आपका बुरा गुण है। आपको लगता होगा कि वो अच्छा है, आप मेरे अच्छे गुण के कारण अपना बुरा गुण छोड़ नहीं सकते, तो मैं आपके बुरे गुण के लिए मैं अपना अच्छा गुण क्यों छोड़ दूं? Why I should? तो आपको अपनी बात प्रेशर में सकम ना करके प्रेशर से निकल कर कहने की ताकत होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुम्हारी आंखों के अश्क हमारी आंखों से निकल सकते थे।
तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह है, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। किसी चीज से चिपको मत, किसी चीज को छोड़ो मत। जो अच्छा है उसे लेकर चलो, जो अच्छा नहीं है उसे छोड़ दो। आगे बढ़ते रहो। मैं, चूंकि समय हो चुका है और मैं कराड साहब के बारे में कुछ कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, तो अगर आज्ञा हो तो मैं अपनी बात कह दूं। तो कराड साहब के व्यक्तित्व से, शख्सियत से मैं इतना प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि अगर इसी तरह संस्कृति को पूरे विश्व में बढ़ावा दिया जाए, अपने अपने देश की सच्ची संस्कृति को, अच्छी संस्कृति को अगर बढ़ावा दिया जाए, तो यह विश्व कितना मनोहर हो जाएगा, कितना सुंदर, कितना शांतिमय, कितना फ्लरिशिंग, कितना विकसित करने वाला हो जाएगा। आज जो टकराहटे हैं, आज जो विध्वंस है, वो रुक जाएगा। एक व्यक्ति कितना कुछ बदल सकता है। असाध्य वीणा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन ने लिखा है। मैं कविता के माध्यम में आपको नहीं बता रहा हूं, मैं वक्तव्य में बता रहा हूं कि हिमालय की तराई पर एक किरीट का वृक्ष था, सूख गया था। बहुत खूबसूरत देवदार का किरीट का वृक्ष था, पेड़ था, झाड़ था, ट्री। वहां का राजा बहुत बड़ा वीणा वादक था। उसने उस किरीट के वृक्ष को देखा और उसने उसे कटवाया। लकड़हारे ने काटा, सुतार अर्थात बढ़ई अर्थात कारपेंटर ने उसे वीणा बनाई। लुहार और धातुकारों ने उस पर तार चढ़ाए। स्वर्णकार ने उसमें सुंदर कशीदाकारी की, उसमें सुंदर डिजाइन्स बनाए। दर्जी ने उसका एक मखमली कवर बनाया और उस कवर को लोगों ने घोषणा करने के बाद कोई भी बजा नहीं पाया। असाध्य वीणा थी, असाध्य वीणा थी। बड़े बड़े गवैये, बजवैये, कलावंत, हुनरमंद आए, कोई भी उस वीणा को नहीं बजा पाया। असाध्य वीणा थी। राजा भी नहीं बजा पाया। राजा के बड़े बड़े कलाकार, वाद्य वृंद वादक नहीं बजा पाए। और तब एक अजित केश कम्मलिन जो गुफाओं में रहता था, जिसने संसार के लिए विचार कर रहा था, वो आया। वहां लोग हंस पड़े, सभा हंस पड़ी। राजा विनम्र था। राजा ने कहा, हे संत, आप आए हो, बड़े बड़े कवैये बजवैये यहां नहीं बजा पाए हैं, आप बजा पाओगे? उन्होंने कहा कि मैं तो अकिंचन हूं, देखता हूं। उन्होंने वीणा को खोला। उन्होंने वीणा बजानी शुरू नहीं की। उन्होंने पहले उस मिट्टी को प्रणाम किया जिसमें उस किरीट के देवदार के पेड़ की जड़ें फैली थी, जहां से उसने पोषण लिया था। उसने बारिश की उन बूंदों को प्रणाम किया जिससे वो सींचा गया था। उसने प्रणाम किया उन हवाओं को जिसमें उस पेड़ ने सांसें ली थी, उसके पानों ने, उसके पत्तों ने। उसने प्रणाम किया, उसका अभिवादन किया उन दिशाओं को जिसमें उसकी शाखाएं फैली थी, उस आसमान को जिस ओर वो वृक्ष बढ़ा था। उसने प्रणाम किया उस लकड़हारे को जिसने उसे काटा था, उस कारपेंटर को जिसने उससे वीणा बनाई थी। उसने प्रणाम किया धातुकार को, स्वर्णकार को। उसने प्रणाम किया ईश्वर को, गुरु को, सामने के जो समस्त लोग सुन रहे थे उनको प्रणाम किया। अंत में वीणा को प्रणाम किया। उसने कहा, हे तू तो सब कुछ की तत्ता है। उसने वीणा को पर हाथ लगाई। वो हाथ लगाने से पहले ध्यान मग्न हो गया, उस पर पड़ गया। लोग बोले वो हार के चुका है। लेकिन जब उसने वीणा के तार छुए तो एक अनिंदा प्रतिम संगीत, एक सम्मोहक संगीत, एक जादुई संगीत पूरे वातावरण में गूंज उठा। ऐसा कि सारा वातावरण चित्रखचित रह गया। They were all taken by surprise. They were numb. They were just listening, mesmerized.
और जब वो जादुई संगीत, वो स्वर्गिक संगीत समाप्त हुआ, राजा अपने सिंहासन से उठा, बोला उसने कि हे राजन, आधा राजपाट आपका हुआ, हे संत आपका आधा राजपाट आधा हुआ। बोला क्यों? बोले वीणा, आपने संगीत बहुत खूबसूरत, बहुत स्वर्गिक सुनाया। उन्होंने कहा संगीत आपने जो सुना वो मेरा नहीं था। बोला यस यस अजित केश कमलिन, ये आपका नहीं था, आपने बजाया वीणा का था, लेकिन संगीत तो बजाया आपने। बोला मैंने कहां बजाया? ये संगीत आपने जो सुना न मेरा था न इस वीणा का था, बल्कि ये सब कुछ की तत्ता थी, सबसे मिलकर बना था। तो संगीत अगर बजाना है तो सबको लेकर चलना होगा, और यही काम डॉक्टर कराड़ ने किया। अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने विचारों को, अपनी शक्ति को, अपने विज्ञान को वो आगे लेकर चले। मैं कहीं भी गया, मैंने अपनी आध्यात्मिक ताकत के बल पर, मुझे कहीं भी खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल्स हो, जिनको बड़े लोगों का संरक्षण मिला हुआ हो, तब भी मैंने हार नहीं माना। मैंने वही निर्णय लिया जो सही है। आप अहमदनगर में, बुल्ढाना में, अमरावती में, सांगली में पूछ सकते हैं, जहां भी मैंने काम किया है, पिंपरी चिंचवड़ में जहां भी मैंने काम किया है, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। जिसने गलत किया है वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। लोकतंत्र में कानून ही सबसे बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, कोई राजा नहीं हो सकता, सब बराबर हैं। डाइसिस प्रिंसिपल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और यही इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है, लोकतांत्रिक देश बनाता है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि लोकशाही में राजनीति क्यों? लोग बोलते राजकारणात सर्व काही चालते हो, राजकारणात हे सर्व चालतात, भ्रष्टाचार चालतात, मारामारी चालतात, किडनॅपिंग चालतात, हे चालतात, ते चालतात, मर्डर चालतात, कोणावर दबाव चालतात। का चालतात बाबा? लोकशाही आहे, राजशाही नाही आहे, राजनीती चालणार नाही, लोकनीती चालणार। हे का नाही विचारत तुम्ही लोग कि लोकनीति चलेगी, राजनीति नहीं चलेगी? लब्बो लुबाब मुक्तसर मैं यही कहना चाहूंगा कि आस्ते भगाशिनश्योर्ध तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चरातु चरतो भगो कलिशानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठ त्रेता भवति संपदति वैचरण अस्तु चरय वैति चरय वैति। जब तक आप सोए हुए हो, आपका भाग्य भी सोया हुआ है। जब आप जाग जाते हो, आपका भाग्य भी जाग जाता है। जब आप खड़े हो जाते हो, आपका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, कार्य तत्पर हो जाता है, सन्निधान योग में जाता है। और जब आप चलने लगते हो तो आपका भाग्य भी चलने लगता है। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग ये होंगे हमारी संस्कृति में, पर हमने देखा नहीं है। लेकिन यहां कहा जाता है कि कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग सब यही हैं। अगर आप जाग जाते हो, अगर आप सोए रहते हो, तो यही युग कलयुग है, यही स्थान कलयुग है। आप जाग जाते हो, आपके विचार जाग जाते हैं, तो यही स्थान, सत विचार जाग जाते हो, तो यही स्थान आपके लिए द्वापर युग है। आप खड़े होकर तैयार हो जाते हो, अपने सच्चे संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हो, तो यही स्थान त्रेता युग है। और जब आप चलने लगते हो, झटाझट पाऊल टाकायला लागतात, तर हाच स्थळ आणि हाच युग तुमच्यासाठी स्वर्णयुग आणि सतयुग आहे। अस्तु चरैवैति चरैवैति, चलते रहो चलते रहो। भारत माता की, भारत माता की। Thank you very much. Let us give a standing ovation, my dear friends. Thank you, Krishna Prakash sir. You have explained the roles and responsibilities to our citizens, to student friends. श्री कृष्ण ने खूब कहा है कि बस कर्म ही तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। Thank you guiding and enlightening our students, sir. Please do not whistle. Students are requested not to whistle. Yes, we have another guest today in the session, Mr. Santosh Tikekar.
who hails from Tikekarwadi village in Junnar Taluka, Pune district. May I now request Honorable Rahul Karad sir to felicitate Sri Santosh Tikekar. His other Sarpanch from Tikekarwadi, Junnar Taluka. I'd like to take an opportunity to introduce him. As a Sarpanch, he has set a RO water treatment plan, a step towards a healthy life, establishing Tantamukh village. He has solved load shedding problem with a mini windmill that has generated 1 kilowatt of electricity. He has set biogas electricity generation plant in the village and holds also a generator to produce 20 kilowatt electricity. May I now request Sri Santosh Tikekar to guide our students in the session. Sri Santosh Tikekar. Let us welcome Founder President Dr. Vishwanath Karad sir. He has joined the session. Mr. Santosh Tikekar. Other Sarpanch from Tikekarwadi village, Taluka, Junnar, district Pune. Hi friends. मेरे आपसे एक मेरा मनोगत व्यक्त करने से पहले एक आपको सूचना है। जब आप मेरे वक्तव्य से बोर हो जाओ तब तालियां बजानो, तो मुझे पता चलेगा अभी रुकना है। मैं उस राज्य का वासी हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थल तहसील जुन्नर शिवनेरी टिकेकरवाड़ी गांव का मैं सरपंच संतोष टिकेकर MIT कॉलेज के माध्यम से आपसे आज कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। पहले तो मैंने अपने गांव में जो किया है वो उपलब्धियां यहाँ आपके सामने गिनवाता हूँ। टिकेकरवाड़ी एक बहुत ही छोटा विलेज है। गांव का पॉपुलेशन अभी 1119 है और भौगोलिक क्षेत्र 600 एकड़ में गांव खत्म हो जाता है। गांव पिछले 70 साल से इरिगेटेड है, फिर भी लैंड होल्डिंग बहुत ही कम है। जैसे हमने पानी आड़वा पानी जिरवा यह अभियान देखा है, वैसे ही जो गांव इरिगेटेड है उनके भी बहुत सारी समस्या है। वही सारी समस्याओं को मुझे मेरे गांव में फेस करना पड़ा। ये देश का पहला गांव है जिसने 2010-11 में RO प्लांट बिठाया था और RO प्लांट के माध्यम से गांव का हर आदमी को 20 लीटर शुद्ध पानी 5 रुपए में उपलब्ध किया जाता है। ये बिठाने के पीछे भी एक स्टोरी है कि जब मेरे गांव में हर महीने का श्रमदान होता है, उस समय मेरी माता बहनें सभी गांव में 1 महीने में 1 तारीख को आती है और उसमें श्रमदान करती है। लेकिन एक दिन संडे था और उसी दिन मेरा श्रमदान आया और गांव की एक भी महिला माता मेरे ग्राम सभा और श्रमदान के लिए उपस्थित नहीं थी। मैंने जो बुजुर्ग महिला है उनसे पूछा कि क्या है, आप क्यों नहीं आए आज? तो उन्होंने बोला हमें बैक पेन है, बोन पेन है, पेट की बीमारियां हैं। तो हम बाजू वाले गांव में एक धर्मगुरु आते हैं और उनके पास जाते हैं, इसलिए संडे हम नहीं आ सकते। मैंने बहुत बारीकी से सोचा और बाद में मैंने मेरे जो डॉक्टर मित्र है उनके पास जाके मैंने पूछा कि इसका रीज़न क्या है। उन्होंने बोला आपका पानी चेक कर रही। पानी चेक करने के बाद जो नतीजे सामने आए उसमें फ्लोराइड था, नाइट्रेट था, क्लोराइड था। और उससे क्या पता चल, उससे क्या होता है, ये मैंने जब डॉक्टरों को पूछा तो उन्होंने मुझे जो सच्चाई बताई उससे मेरा दिमाग पूरा हिल गया। और वही टाइम सोचा कि गांव, देश का पहला गांव मेरा बनना चाहिए कि जिसमें मैंने शुद्ध पानी दे सकूं।
अभी मेरे गांव में हर घर का साल का 50,000 से 1 लाख रुपए का आय सेविंग हो रहा है, जो डॉक्टर के ऊपर खर्चा होता था। जिन डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी वो डॉक्टर बोलते कि तुम्हारी वजह से मेरा धंधा बंद हो गया। ये करते समय मेरे गांव हमने सबने सोचा है, महात्मा गांधी जी ने बोला था खेड़ंकड़े चला, गांव के तरफ चलो। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला था कि गांव को ऐसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि जो शहर भी जैसे सुविधा उधर मिलनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गांव के विकास के लिए, पूरा योजना के लिए दी। फिर भी आज तक 75 साल में हमें कोई बोलने वाला नहीं मिला कि गांव कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और गांव कैसे स्वयंपूर्ण बन सकते हैं। गांव में उतनी क्षमता है कि गांव आगे चल के अपने पैर पे आत्मनिर्भर हो सकता है। इसी का प्रयास टिकीकरवाड़ी ग्राम पंचायत ने 2010 से शुरू किया। 15 अगस्त 2000 के ग्राम सभा में मैंने बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि 1200 रुपए को सिलेंडर लेना पड़ेगा। आज आप सोचते होंगे 2014 में वो रिजोल्यूशन पास हुआ था, लेकिन इलेक्शन के वजह से वो रिजोल्यूशन कैंसिल हुआ। अपने देश के पास जो भी सुविधा है, जो भी हम नेचुरल रिसोर्सेस है, पेट्रोल है, गैस है, ऑयल है, बिजली बनाने के लिए कोल होगा, यूरेनियम होगा, ये सब फर्टिलाइजर होगा, ये सब हम हमारे देश बाहर देश से आयात कर रहे हैं। यहाँ जब सब विद्यार्थी बैठे इनसे मेरा यही के अनुरोध है कि हम 100 रुपया कमाएंगे, उसमें से 80 रुपया जब हम बाहर देशों को देंगे तो हम हमारा घर चला पाएंगे? इस देश को मोदी का ब्रह्मदेव भी आया तो भी बचाने वाला कोई नहीं। मेरे पहले जिन्होंने आपसे अनुरोध किया, कृष्ण प्रकाश सर जी, वो भी जो उनके काम करने के तरीके में जो फेस करते सर आतंकवाद, उसकी मूल जड़ यही है कि हमारा जो पैसा बाहर के देश के लिए जाता है और वही पैसा हमारे देश को बर्बाद करने के लिए वापस आता है। तो ये सोच हमने 2010 से रखी कि हम हमारा पैसा हमारे गांव में रखेंगे। इसके तहत 2010 में हमने बायोगैस का प्लांट बिठाने की शुरुआत तैयारी की। सर, जितनी बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत होती है। 2010 में काम शुरू किया था, 2017 में मैं काम कंप्लीट कर पाया। ये हमारे देश की एक अलग सी बात होगी कि जिसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। हम बचपन से पढ़ते आए, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज आप जो युवा है उनको ये कविता सुनाई नहीं देती, लेकिन हमारे बचपन में हमने सुनी है। फिर भी हम बोलते हैं कि अंग्रेजों ने हमारा देश को 150 साल में लूटा, और भी आक्रांता थे, उन्होंने लूटा। लेकिन आज सभी बैठे हुए बच्चों से मुझे पूछना है कि क्या दुनिया में कौन सा देश ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश है? कौन सा देश है? कौन सा? भारत। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा हवा बहती है? आवाज नहीं आ रहा, मुझे लगता है आप बोर हो गए। कौन सा देश? भारत। दुनिया में सबसे ज्यादा शुद्ध पानी के जो भी रिसोर्सेस है कौन से देश के पास है? दुनिया में सबसे ज्यादा नदियां कहां बहती है? भारत। फिर भी हम बोल रहे हैं कि हमारा देश इन सारे आक्रांतों ने लूट के लिया। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि हम पंच महाभूतों का उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन सुखकर हो जाएगा। हवा, सूर्य प्रकाश, जिससे हम सोलर बिजली बना सकते हैं। हवा से भी हम विंड मिल से बिजली बना सकते हैं। बायो एनर्जी के माध्यम से हम बायोगैस बना सकते हैं, और नदियों के ऊपर हम हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा के भी बिजली बना सकते हैं। 75 साल पहले हमें बोला गया रोटी, कपड़ा और मकान, यही हमारी जरूरत है। लेकिन आज सभी बैठे हुए बच्चों से मुझे पूछना है कि ये जरूरत है अभी देश की? नहीं है, क्योंकि मजदूरी से भी आदमी काम करने को जाए। MRGS महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, उसके तहत 272 रुपया आदमी को रोज मिलता है।
तो 272 में गांव में आराम से आदमी अपनी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन हमें गांव स्वयंपूर्ण बनाने के लिए आप सभी जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं इनकी जरूरत है। कल मैं राहुल जी से माफी मांगना चाहता हूं, मैं आज इस प्रोग्राम में आने वाला नहीं था। रात को मुझे 101 टेम्परेचर का बुखार था, लेकिन आज सुबह भी 2 गोलियां खा के आपके सामने प्रस्तुत हूं, क्योंकि जो दिक्कतें मुझे काम करने में आई वो दिक्कत दूसरे सरपंच को और दूसरे गांव को नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि मुझे 7 साल लग गए बायोगैस प्लांट बिठाने के लिए। हम बायोगैस के माध्यम से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, 35 घरों को गैस दे रहे हैं। और राहुल सर जी, हम हमारे किसानों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, लिक्विड और प्रॉम, सॉलिड में प्रॉम, फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, जो डीएपी और एमएसपी को कंटेन करता है। मतलब डीएपी और एमएसपी की जरूरत मैंने हमारे गांव में खत्म की है। और जो लिक्विड बायोस्लरी है उसके माध्यम से 30% कॉस्ट ऑफ सेविंग और 50% प्रोडक्शन बढ़ गया है। ये करते समय हम हमारे किसानों को ओनली 500 रुपए में, मैं मुफ्त में देने वाला सरपंच नहीं हूं। मैं मेरे गांव की जो भी फैसिलिटी देता हूं मैं मुफ्त में नहीं देता हूं। साल के 500 रुपए गांव के हर किसान ने फीस भरने की, जो 1 रुपया कीमत रहती है उसकी, और साल में जितना चाहिए उतना फर्टिलाइजर लेके जाने का। ये देश की पहली ग्राम पंचायत है जो जिसने किसानों के लिए काम किया है। सर, गवर्नमेंट ने हमें कंप्यूटर दिए, हमें बोले आप डिजिटल बन जाओ, लेकिन बिजली नहीं थी, रात को काम करना पड़ता था। इसके लिए हमने देश की पहली ग्राम पंचायत जिन्होंने 2011 में विंड और सोलर हाइब्रिड सिस्टम यूनिट बिठा के ग्राम पंचायत चला के दिखाई, रात को स्ट्रीट लाइट चलाए, मंदिर चलाए, स्कूल चलाए। अब मेरे गांव में स्कूल, मंदिर, आरओ प्लांट, बायोगैस प्लांट, ग्राम पंचायत ऑफिस, सभी जो कम्युनिटी बेस्ड एम्यूनिटीज है उसके लिए मुझे बिजली की जरूरत नहीं। मेरा गांव खुद बिजली बनाता है और खुद खर्च करता है। जब मैं सरपंच बना तब मेरे गांव की आय थी 1 लाख रुपया, आज मेरे गांव की आय है 4.5 लाख रुपया। जब हम निर्मल ग्राम करने के लिए हमने सोचा, मेरे पहले के जो सरपंच थे, 2 मिनट मिलूंगा, पहले के जो सरपंच थे उन्होंने निर्मल ग्राम करने का सोचा और मुझे बोले कि निर्मल ग्राम करना है। पैसा नहीं था। हमने बचत गट, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको बुलाया और राहुल सर जी जो ग्राम पंचायत बचत गट के तरफ से 35,000 रुपये कर्जा लिया था, आज उसी गांव के सरपंच को आपने यहाँ बुलाया है। स्टार्ट हमारी 35,000 रुपये कर्जे पे लिए थी। ये देश की पहली ग्राम पंचायत होगी जिसने महिला बचत गटों के तरफ से निर्मल ग्राम करने के लिए 35,000 रुपये कर्जा लिया, और आज उसी ग्राम पंचायत को 4.25 करोड़ रुपए के अवार्ड विनिंग ग्राम पंचायत है। मैं यहां बोलने के लिए खड़ा हूं, वो मेरे माता बहनों की मेहनत का फल है कि आपसे मैं अनुवाद कर रहा हूं। मैंने अभी भी बोला कि मैं आज इधर आया इसलिए हूं कि आप में से 5,000 विद्यार्थियों में से 100 भी मुझे ऐसे विद्यार्थी मिल जाए और तैयार हो जाए जिन्होंने अपने जॉब करने के लिए गांव को चुने। गांव में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। देश में 6 लाख गांव है, महाराष्ट्र में 28,000 ग्राम पंचायत है और पुणे डिस्ट्रिक्ट में 14,029 ग्राम पंचायत है। आप बिजनेस के लिए गांव को चुनिए, आपके प्रोफेशन के लिए गांव को चुनिए। गांव को जरूरत है। देश आत्मनिर्भर बनने के लिए पहले गांव आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तभी जाके आगे चल के देश आत्मनिर्भर बनेगा। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Shri Santosh Tikekar ji. Yes. May I now request all the dignitaries on the dais to join us to have a group photo and allow us to capture a historical moment. May I request all the dignitaries to hold the SLDP brochure in. Just for a minute. Yes, sir. 1 मिनट। सरपंच साहब आप आइए इधर। इन्होंने जो भी बात यहाँ पे बोली, all the students, I want to just communicate to all of you that you are going to go through this rural immersion program in next
I think, 6 months or a year's time, you all will be going to respective villages in the state of Maharashtra, not just in the vicinity of Pune, but across the Maharashtra. We have developed some design where 2 students, we expect them to stay at one farmer's house. And almost last 6 years, we have been successfully conducting this very important program for rural immersion program. और जो भी सरपंच साहब ने अभी उनकी भावना यहाँ पे व्यक्त की, तो yesterday also I said in my little speech that how and what way your degree program can really help to improve the livelihood of the society. That is the mission of MITWPU University. So you may be an engineering or a law or an architect, and all the faculty students are sitting here, around 8,500 students this year they have enrolled in this particular campus, and they all are going to go through this very exercise of rural immersion program. So when we invite such eminent people who have dedicated their life for our rural India, so you all have to really understand, my dear friends. I made a mention about the movie called Swades yesterday, that the Shah Rukh Khan comes from United States and go to that particular village and, you know, try to do something for the transformation of the life of those people. So likewise, it is expected. Our beloved founder is very much sitting here. He also comes from a rural place called Latur. Near Latur, there is a small village by the name of Rameshwar. And of course, he is going to express after some time in front of all of you about his life mission and the World Peace University life mission, this very motto and overall objective. So please do understand the very essence of social leadership development program. Why we have conducted this very program for all of you. You are all of us so lucky, I feel, that through this forum, you know, and this very interdisciplinary culture, what is really building up through this exercise of social leadership development program, it can be the true problem solving platform for the days to come. So thank you so much, Sarpanch Sahab, for coming, and in the days to come, the rural immersion program, our students will also come to your village. Please give a big round of applause to Sarpanch Sahab. Thank you so much. Thank you. Thank you, Rahul sir and Santosh Tikekar sir. I request all dignitaries, let us have a group photo, a unique historical moment. My dear friends, we are witnessing a unique moment which will be with us forever. Thank you. Thank you all. Thank you all the dignitaries. Now I will hand over the session to next anchor, Dr. Meghana Gote, session number 8. Thank you. A very good morning to all of you. I, Dr. Meghana Gote, on behalf of honorable dignitaries to ring the bell of social leadership that symbolizes our faith in the continuance and strengthening of our democracy. Please give a huge round of applause
Yeah. Let the sound be loud and clear. And let us appreciate this historical moment. I welcome all the esteemed dignitaries and request them to come on stage and please be seated. Let us welcome with a resounding round of applause Honorable Architect Professor Neelam Manjunath, Managing Trustee, Center for Green Building Materials and Technology, Bangalore. Honorable Dr. Jagat Shah, Founder, Global Network Institute, Ahmedabad. Honorable Dr. Manjari Prabhu, Anchor, TV producer and filmmaker. Yeah, thank you. I welcome Honorable Shri Rahul V. Karat, Sir, Executive President, MIT World Peace University. I welcome Honorable Revered Professor Dr. Vishwanath Karat, Sir, Founder, President, and Chief Patron, Myers MIT Pune, and President, MIT World Peace University, and Creator World Peace Dome. I welcome Professor Dr. Santosh Kumar, Dean, School of Liberal Arts, MIT World Peace University, all senior faculty members, Dr. Anuradha Ghaisas, Professor Sridhar Pabishetty, Dr. Milind Patre, Dr. Preeti Joshi, Dr. Bhagwat Viradi. I welcome each one of you. The Social Leadership Development Program, SLDP, is a visionary initiative led by Honorable Shri Rahul Karat, Sir, Executive President, MIT World Peace University. This program serves as an innovative platform designed to nurture the values of social leadership and cultivate essential skills such as active listening, empathy, and a deep understanding of community needs and aspirations. Okay. Before that, I will introduce. I request the technical team to relay the curtain raiser film on the theme of the session. Art for the possible. This session is based on art of the possible, vocal for local. This session resonates profoundly within the dynamic socio-economic landscape, particularly championing the cause to boost entrepreneurship. India's burgeoning young population, equipped with technological prowess and innovative thinking, is at the forefront of this movement. India's young entrepreneurs are catalyzing for social transformation, embodying the spirit of vocal for local, demonstrating the art of entrepreneurship, and creating the way for a more inclusive and prosperous society. In this session, we will talk about the movement of vocal for local and its different dimensions. I now request Professor Santosh Kumar, Dean Liberal Arts, to please come and welcome our distinguished guests and also highlight the essence of the session. Thank you. Reverend Professor Dr. Vishwanath Karat, sir, from whom we derive our energy for the entire existence here, our very dynamic Executive President, sir, Rahul Ji Karat, sir, the guests of the day, all the guests on the dais and off the dais, my dear students, it's my privilege and delight to welcome everybody on this particular moment when we are going to be talking about art of possible, vocal for local. This is indeed the last session, but actually to see this is the beginning of the entire journey. The session Art of Possible, Vocal for Local resonates
profoundly within the dynamic socio-economic landscape, particularly championing the cause to boost entrepreneurship. In a diverse country like India, the vocal for local movement, and many of these voices will be resonating through the speeches to be delivered by the three honorable guests that we are having today. It stands as a testament to the power of local entrepreneurship and community-driven initiatives, elevating the significance of the indigenous products and services. India's young entrepreneurs are not just economic actors, they are also catalysts for social transformation, embodying the spirit of vocal for local by demonstrating how the art of entrepreneurship can pave the way for more inclusive and prosperous society. With these words, I extend my heartiest welcome to all the guests again for this particular session, and over to you for the remaining part. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I now request Reverend Professor Dr. Vishwanath Karat, sir, and other dignitaries on the dais to felicitate our eminent panel members, architect Professor Neelam Manjunath. Please give a huge round of applause and welcome our esteemed guest for today's session. Please let the clapping continue. Audience, students, please give a huge round of applause to our esteemed guest, architect Professor Neelam Manjunath. I request the dignitaries to felicitate Dr. Jagat Shah, founder, Global Network Institute, Ahmedabad. A huge round of applause. Let the clapping continue. Thank you all the dignitaries for doing the honor. It is with great pleasure that I introduce the distinguished Honorable Professor Architect Neelam Manjunath. She graduated from the Government College of Architecture, Lucknow, and continued her academic journey at the renowned Cambridge Judge Business School. Professor Manjunath is a multifaceted professional, serving as a planner, activist, and theoretician. Commencing her career in New Delhi, she later relocated to Bangalore, and she has collaborated with globally acclaimed architects. Her architectural creations have earned acclaim for their elegant solutions to challenges related to functionality, economics, aesthetics, and environmental conditions. Her designs demonstrate a deep respect for their immediate surroundings, integrating climate responsiveness, architectural expression, and the use of local and sustainable materials. Please welcome architect Neelam Manjunath with a huge round of applause. Hello. It's a great honor, privilege, and pleasure to be here. One is Dr. Karan, the kind of university that he has built, the kind of program that is being done, and this huge youth, the power, the young power of India. It's a privilege to be here standing, and I hope I will be able to do justice to the invitation that has been, extended to me. I would start with a small video, I think that I have sent. I would request it to be played for your reference. And that is for a project that we did in the small village of Madhya Pradesh called Maihar. Can we have the video, please?
The architecture shapes our behavior. The nature brings that softness, and with nature comes the people who live as close to nature as possible. बांस के बहुत काम आता है यह बांस कई साल जाए यह बांस ही तो रहा है बांस के और मिट्टी की कला मोर बहुत पसंद I think bamboo needs a little bit of respect as a building material, along with even respecting the artisans who work with bamboo. The village people somehow get more enamored with concrete and cement because that represents wealth. It's important that they realize that it's a very good material to stay with. Neelam is a bamboo expert, and I felt that if she can come and teach them, and if she can bring in that the seriousness of using bamboo as a building material, it would be very beneficial to the people around. Bamboo as a building material बहुत important हो चुका है. ये green product है. ये metal and plastic दोनों को replace कर सकता है. The engineering quality of bamboo in this case is completely stretched to its limits because people don't do shells with bamboo. And mud, which is again a material which is used by villagers, it's stretched to another limit. So this aspiration of Ambika to have something very artistic, and aspiration of me to have something cutting edge in bamboo engineering, the aspirations of the people who have been working with bamboo, but they have not really benefited. Financial inclusion, जब raw material हमारा farmer grow करेगा, value addition हमारे रूरल आर्टिसंस इसको डेवलप करेंगे, कंजम्पशन हमारा मिडिल एंड हायर फैमिली करेगी, मनी विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर. यदि हम उन सीमेंट ब्रिक्स को इस रॉ मटेरियल से रिप्लेस करते हैं तो पूरी तरह इकोनॉमी रिवर्स हो जाती है. इस पे तो हमको थोड़ा ज़्यादा कमाई लग रही है, मतलब पैसा ज़्यादा मिल सकता है इस पर. इसको सीखेंगे तो और थोड़ा दूर जाएंगे. लेबर का भी काम किया, सीखने को भी मिला, दोनों. कहाँ से कितना बम्बू फाड़ना है, बनाना है कमटी, उसका फिनिशिंग करना है, ये सब मालूम हो गया. हमको बहुत लाभ मिला ना. हमारे पास जितना भी जानकारी है उनको पूरा देने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ के लोग अपने हिसाब से वो काम को आगे बढ़ाते रहे. बम्बू को हम जिस हिसाब से देख रहे हैं ये लोग धीरे धीरे टेक्निक पकड़ रहा है. ये लोग भी अच्छा से सीख रहा है, कोशिश भी कर रहा है. सामने कोई ऐसा चीज़ बनेगा तो अपने से थोड़ा बहुत तो बना भी सकता है. ये लोग कलाकार ही हैं. Though it is an engineering material, but it is also very artistic. And I thought I will have something which is between art and architecture. ये जो काम है पहले गांव में गौण चित्र है, भित्ति चित्र त्योहारों में, शादी विवाह में, अपने घरों को सजाने के लिए या दीवारों पे चित्र बनाना ये करते थे. मेरे को ये बहुत खुशी है कि लोग देख रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं. यहाँ जो अभी जो लोकल हैं, जो बांस जो काम करते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम सीखेंगे यार, हमको भी सिखाइए. तो मैं कहूँ सीखोगे तो कम से कम और आगे बढ़ेगा. हम लोग कहीं भी जाके किए हैं ना काम, तो हर जगह का अलग अलग ढंग से, अलग अलग डिजाइन से, अलग अलग तरीका से बनाए हैं. Art is a common thread which is connecting people from various strata of society. These artisans already have the traditional skills of working with bamboo, so it's a very equal sharing of knowledge and skills. बहुत खुशी ये काम और बहुत सुख से भाई, बहुत ये संस्था में पड़ गए हैं तो हमारा मतलब गरीबी घुस गया. I can see the faces change from doubt to listening to us, having confidence in us, and then now a look of hope on their face. Hello. So, ये मध्य प्रदेश का हमारा एक हमने 45 डेज़ का वर्कशॉप किया था, और जिसमें आपने जो देखा, जो क्यूरेटर है वो शी इज़ अ आर्ट क्यूरेटर फ्रॉम कलकत्ता, और वो मैहर में वो एक आर्ट इचोल करके एक संस्था चलाती हैं. और उस गांव में बहुत सारे बैम्बू आर्टिज़न हैं. मध्य प्रदेश में काफ़ी आर्टिज़न्स हैं, और ये लोगों का भ्रम है कि बैम्बू एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में मिलता है ज़्यादा. हमारे देश का मैक्सिमम बैम्बू मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है 27%, और वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनको उसका लाभ नहीं मिलता. वो आप छोड़ दीजिए, उनका सोसाइटी में इंक्लूजन तक नहीं है. सो मैंने जो
हमें बैंगलोर से बुलाया गया था और हमने कहा कि चलो ये एक वेरी आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर मुझे एक बनाना है। सो मैंने जो एक ग्रास रूट जो एक टोकरी बनाते हैं लोग, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, जो लोग बनाते हैं और बेचते हैं, उसको मुश्किल से उनको 100 रुपया 150 रुपया जो भी मिलता है। और मैं आर्किटेक्ट हूँ और कुछ चीज़ें हैं जैसे गोंड आर्ट है मध्य प्रदेश का, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा कहीं नहीं मिला है। इन सब को मिला के टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, जो भी हमारा लोकल रूरल और ये जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, इसको ये जो हमारे ट्राइबल एरिया के लोग हैं, जो फॉरेस्ट के ड्वेलिंग करे लोग हैं, दे हैव बीन प्रिजर्विंग एंड कंजर्विंग देम फॉर जनरेशंस। और जब हम आप जैसे और हम भी कॉलेजेस में पढ़ने आते हैं और हम 2-4 साल पढ़ लेते हैं, एक पीएचडी कर लेते हैं और हमें एक पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। लेकिन ये लोग जो जनरेशन से 10 साल 20 साल 50 साल काम करते हैं, इनको कौन डिग्री देता है? और इसका जो है हमारे चूँकि हमारे एकेडमिक करिकुलम में इंक्लूज़न नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी जो हमारा जो अपना निजी जो हमारा एक्सपर्टीज़ है इंडिया का, वो हम आगे नहीं ले पा रहे हैं। इनके गांव में जब मैं गई थी तो इनको गांव से बाहर ये पूरा गांव है और उसके बाद से करीब 200-300 मीटर दूर इन 2-4 घर होते हैं या 5 घर होते हैं और वो बांस वालों के घर होते हैं। बांस वाले के जो जाति के लोग होते हैं, बैम्बू कम्युनिटी जिनको हमको बोलते हैं, वो उनका घर होता है। दे आर नॉट इवन इंक्लूडेड। एंड आई वॉज टोल्ड, जब मैंने ट्रेनिंग कर रहे थे तो कुछ लोग दूसरों के साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे, ये कह के कि वो तो बांस वाले कम्युनिटी के लोग हैं। अभी इन COP27 लास्ट ईयर, बैम्बू हैज़ बीन हेल्ड एज वन ऑफ द टॉप 5 सॉल्यूशंस फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन, बोथ एज प्लांटेशन एंड ऑल्सो फॉर इंक्लूजन इन द बिल्डिंग सेक्टर। क्योंकि बिल्डिंग सेक्टर हमारा सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है और उसको हम जब उसको बैम्बू को इंक्लूड करना है तो यू कैन रिलेट। ये जो आपने अभी देखा, ये आर्टिजन्स जो इनको कितना कम पैसा मिलता है, जो सोसाइटी से आउटकास्ट माने जाते हैं, इन्होंने जिस चीज़ को प्रिजर्व किया, आज यूनाइटेड नेशंस के COP27 में उसी चीज़ को, उसी मटेरियल को is being told as one of the top 5 solutions in the world by the American Express. I mean, these are all people who, it was discussed, there were several sessions on bamboo to be utilized in different kind of ways. And this is where I come from. Last 25 years, I've been working with bamboo, but not for these Bali style, very, buildings, which is for 0.01% of the world. जो कि बहुत महंगे होते हैं, बहुत थोड़े लोग के लिए होते हैं। इनके साथ काम करने और इनके लिए अगर बैम्बू बिल्डिंग बनाएंगे, then we are not using bamboo to save the world as what we are calling. So लोग TED talks करते हैं, सब करते हैं, वो उसके बाद वो बाली का एग्जाम्पल देते हैं, but they have made bamboo unsustainable. Bamboo will remain sustainable when it remains local. And here, for the vocal, for the local, as you saw what here, we have been taking this. हमारे जो आपने 2 लोग देखे, गोपाल आनंदी लाल, वो मेरे साथ फ्रांस गए, उन्होंने वहाँ 32 स्टूडेंट्स को जो 10 देशों से आए थे, from 10 countries, they taught them the Indian way of using bamboo for artifacts, for different kinds of things. So taking the local person to the global level is what I am working at. And हमारे इंडिया का जो जुगाड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको इंग्लिश में इनोवेशन बोलते हैं। इनोवेशन का आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा। हम ये जो छोटे लोग हैं, जिसको छोटे लोग कहा जाता है, इनका जो आर्ट है, इनका जो ये है मतलब स्किल है, वी कॉल इट रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। मैं इसकी भी कोशिश कर रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं इनको सर्टिफिकेट दिया जाए। देयर शुड बी अ रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग लाइक अ PhD और समथिंग लाइक दैट। और ये कॉलेजेस में आके, स्कूल में आके, और या आप उनके पास जा करके सीखें और उनके साथ काम करके आगे बढ़ाएं। और आपने जिसमें देखा, इसमें हमारे
अलग अलग लोग जैसे थे, वो हमारे CCF, हमारे बैम्बू मिशन के डायरेक्टर, एक आर्किटेक्चर कॉलेज के डायरेक्टर, there is a art curator, there are different kind of people, there is a mason, there is engineering student, और ये जो interdisciplinary work to come together to make this work, which what I was trying to do, is something what needs to be done in today's world. और उसके लिए हमको आपके जैसे यूथ की, India is now the most populous country in the world officially, and it's a young country. The young population बहुत है हमारे यहाँ. So we really need, I have been doing and I have been going around the world for last 25 years, और लोगों को मैं ये बात समझाने की कोशिश करती रही हूँ और इसका बहुत इफेक्ट भी हुआ है. और इसलिए यहाँ पे आज खड़े होकर मैं ये कहती हूँ कि ये तुम्हें बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही है हमारी, बहुत ही डिफ़िकल्ट. जब हम बैम्बू की बिल्डिंग की बातें करते हैं तो हमें 10 लाख का प्रोजेक्ट दिया जाता है एज एन आर्किटेक्ट, और एक कोई जूनियर आर्किटेक्ट होता है वो बगल में, उसको 10 करोड़ 15 करोड़, क्योंकि वो तो सीमेंट कंक्रीट की बिल्डिंग बनाता है, आप तो केवल बैम्बू से काम करती हैं. तो ये जो बैम्बू आर्किटेक्ट मेरा बनना, एक तरफ से इट वाज वेरी फुलफिलिंग, ऑन द अदर हैंड इट कम्प्लीटली पुश्ड मी आउट ऑफ माई प्रैक्टिस. हमारी जो आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस थी जिसमें कि मैं लाखों स्क्वायर फीट में काम किया करती थी, सडनली केम डाउन टू फ्यू थाउजेंड स्क्वायर फीट की, जहाँ भैया आप एक कैफेटेरिया बना दीजिए, आप एक परगोला बना दीजिए और आप एक छोटा सा ये हॉल बना दीजिए. बट पूरी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कोई नहीं कहता. पूरा हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने को, पूरा एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स करने को कोई नहीं बोलता है नहीं रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तो हाई एंड लोगों को जाएगा, आप एक अच्छा सा कैफेटेरिया बना के दीजिए या फिर आप एक क्लब हाउस बना के दीजिए. वाई नॉट बैम्बू इन द मेन स्ट्रीम ऑफ कंस्ट्रक्शन, at least between 30%, 40% as any other material for that matter. दो इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, अब ये प्रूव हो चुका है, हमारे कोड हैं, सब हैं आप लोग को हेल्प करने के लिए, जो कि आपको इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है. और ये जो आर्टिजन्स हैं इनकी स्किलिंग होनी है, आपकी स्किलिंग इनके द्वारा होनी है. और इन सब के लिए हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी, मैं 2004 से चला रही हूँ, जिसके अंदर मैं बहुत सारे कोर्सेज चलाती हूँ. PG सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, हमारे मॉड्यूलर कोर्सेज हैं, उदयालबाग यूनिवर्सिटी आगरा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, डिस्टेंस मोड में भी चलाते हैं, और बहुत सारे शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हम लोग करते हैं. और उसके हमारे अलुमनाई पूरी दुनिया में हैं, एंड दे आर रियली टेकिंग दिस बैम्बू, आई वुड से इनोवेशन और द बैम्बू सेक्टर फॉरवर्ड. और अब जो हमारा एक रीसेंट प्रोजेक्ट जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, मैं एक वर्ल्ड बैम्बू एम्बेसडर भी हूँ. बहुत ऊपर वाले की बहुत दया रही है कि मुझे अब ऐसे प्लेटफॉर्म मिले हैं जहाँ से मैं अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा सकती हूँ. एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 48 गवर्नमेंट के साथ काम करता है, इन बार इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर बैम्बू एंड रटन, वहाँ भी मैं एक्सपर्ट मेंबर हूँ. नीति आयोग में मुझे पॉलिसी मेकिंग फॉर बैम्बू, इसका भी मुझे मौका दिया गया है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ. और जो बहुत रीसेंट है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो कि पूरा नेशनल बिल्डिंग कोड बनाता है, उसमें भी मुझे इंक्लूड किया गया है. वो पहले भी इंक्लूजन था, अभी फिर से इंक्लूड किया गया है, जहाँ पे कि मैं ये जो हमारे आर्टिजन्स हैं, हमारे ये हैं, जितने भी इनके स्किल्स हैं, इसके थ्रू मैं अपने जो है उसको बैम्बू को मेन स्ट्रीम सेक्टर में लाने की कोशिश कर रही हूँ. और ये केवल बिल्डिंग के लिए नहीं. और एक लास्ट में 1 मिनट और चाहूँगी, इन सब को मिला के मैंने एक नया प्रोजेक्ट जो C40 एक प्रोग्राम है, सिटी 40s, जिसमें कि 40 मेयर लोगों ने साथ में मिल करके इंटरनेशनल प्रोग्राम है, अर्बन एरियाज़ को कैसे कार्बन न्यूट्रल बनाया जाए बाय 2030 बाय 2050, इसके लिए बनाया. उसमें मैं एक कोहोर्ट हूँ वुमेन फॉर क्लाइमेट प्रोग्राम के अंदर. उसके अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी किया है, द बैम्बू सिटी. बैम्बू जो सिटी में इस्तेमाल होना चाहिए, वो बैम्बू प्लांटेशन भी सिटी में होना चाहिए, डिग्रेडेड लैंड्स में, हमारे फाइटो रिमेडिएशन के लिए, लेक रिजुविनेशंस के लिए, और जितने भी हमारे बैम्बू के आर्टिजन्स हैं उनको और प्रॉपरली उनको ऑर्गेनाइज करके और कुछ इंडस्ट्रीज लगा करके, और वो हमारे स्केड्यूल ऑफ रेट्स और हमारे
BIS कोड्स और जितने भी हमारे प्रोडक्ट के हैं, बैम्बू के प्रोडक्ट बनाने वाले जो लोग हैं, इसका भी सर्टिफिकेशन के लिए ये सारा नेटवर्क एक बना करके बैम्बू सिटी इज़ एक्चुअली अ climate action plan, and we are doing it for Bangalore, which also has the first airport with 10 lakh square feet of bamboo construction in it, and I was part of the vetting team for that as a material expert for that, and I'm very proud that I was able to contribute to my country and also to my city for taking bamboo to such a big level. Jo chote artisans ka, so it's like you are speaking about a material which is from a very local material, और वो जो है आप ले जाकर के उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रखते हो, connecting the rural artisans to the world class designers. That's what, and आप ये सब कर सकते हैं. जैसे हमारे इसके पहले वाले स्पीकर ने बोला, मुझे भी आप 100 लोग दे दीजिए. I will see that this whole thing जो बैम्बू का हमारा जो कार्बन न्यूट्रल करने का है 2030 तक, मैं कम से कम तो 10 सिटीज़ को कार्बन न्यूट्रल कर सकती हूँ by 2030. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much for your words of wisdom, and indeed your work is truly inspiring for all of us. I now request Honorable Rahul sir to I now request the dignitaries to felicitate Dr. Manjari Prabhu. I request the audience to give a huge round of applause. Let us welcome Dr. Manjari Prabhu. Author, TV producer. Thank you for doing the honor. Our next guest speaker is Honorable Dr. Jagat Shah ji. I would take this opportunity to introduce him to the gathering. Dr. Jagat Shah is a diamond technologist and is recognized as a cluster development specialist, having received certification from the United Nations Industrial Development Organization. He is a certified management consultant accredited by ICMCI in the United States. Dr. Shah earned his PhD in international business and served as the Trade and Investment Commissioner for the Government of Manitoba in Canada for a period of 9 years. He has extensive experience working on economic development projects related to trade and investment with various governments, including those of the United States, Brunei, Senegal, Oman, the European Union, and India. Through his company Global Network, Dr. Shah provides advisory services to overseas governments and businesses focused on areas such as trade, technology transfer, joint ventures, and investments. In addition, he operates Vibrant Markets, a global market research firm that conducts market research for both global and Indian markets. Dr. Shah's contribution to academia are notable, with over 300 of his academic articles published in renowned global publications. Through all his pursuits, he adheres to the guiding philosophy of action at speed of thought. It is a proud moment for us to have Dr. Jagat Shah as our panel member. I request him to address the gathering. Please welcome Dr. Shah. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. गुड. अभी मैं स्टेज पे जब बैठा था तो मैं देख रहा था कि राहुल जी कॉन्स्टेंटली डॉक्टर विश्वनाथ जी के साथ डिस्कशंस कर रहे थे प्रेजेंटेशंस पे. उससे मुझे एक छोटी सी कविता मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ. मैं एक पोइट्री लिखता हूँ हर रोज़ सुबह, छोटी छोटी लाइनों की. वो है कि नौजवान दौड़ तो सकते हैं, नौजवान दौड़ तो सकते हैं, लेकिन दिशा दिखाने के लिए एक बुजुर्ग ही चाहिए. तो बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी कि आपने, राहुल जी ही नहीं, सब नौजवान को दिशा दिखा रहे हैं.
आप में से कितने लोग गांव से आते हैं? अभी भी जिनके गांव में फैमिलीज है, हाथ उठाइए। कितने लोग गांव से आते हैं? ओके। आप में से कितने लोग बिजनेस फैमिली से आते हैं? बिजनेस फैमिली, ओके, बहुत हैं। और कितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं? ओके। और कितने लोग सर्विस सेक्टर से आते हैं? ठीक है। तो मुझे ये पूछने का ये मतलब था, मैं एक्चुअली एक प्रेजेंटेशन लेके आया था, लेकिन अपना समय कम है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा राहुल जी, सब लोगों को ईमेल से भेज दीजिएगा प्रेजेंटेशन। मैं थोड़ी सी आप लोगों को शेयर करता हूँ मेरे अनुभव। एक समय था, आज आईपीएस ऑफिसर साहब ने भी और सरपंच जी ने भी बात की, जब इंडिया सोने की चिड़िया कहलाती थी। जब इंडिया सोने की चिड़िया कहलाती थी तब हम 25% पूरे वर्ल्ड का जीडीपी इंडिया का, भारत का हुआ करता था, 25%। आज क्या परिस्थिति है? 112 ट्रिलियन डॉलर की वर्ल्ड की इकोनॉमी है, 112 ट्रिलियन। उसमें से 27 ट्रिलियन अमेरिकन इकोनॉमी है, 25% अमेरिका का शेयर है। 19 ट्रिलियन चाइना की इकोनॉमी है और 3.5 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी है। हमारा 2%, 3% शेयर है। तो कैसे बदल गया? वो है, हम जब सोने की चिड़िया थे तो अब हम जो करते थे वो था वोकल फॉर लोकल। आज का जो सब्जेक्ट है, हम क्या बनाते थे? हम ये कपड़ा बनाते थे और अंगूठी में से कपड़ा निकलता था और हम एक्सपोर्ट करते थे। कोई दुनिया की कोई कंट्री नहीं बना पाती थी। हम हमारे मसाले एक्सपोर्ट करते थे। तब हमारे शिप वगैरह जाते थे जिसमें इंजन नहीं होता था, हाँ, सेल बोट होती थी, जहाँ हवा जाती थी वहाँ बोट जाती थी और हमारे व्यापारी लोग जाके बिजनेस करते थे। उस तरह से 25% शेयर था हमारा। आज वापस वो टाइम आ रहा है। हम लोगों को जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको फिर से स्ट्रेंथन करना है। आज आपको बड़ा आश्चर्य होगा शायद जान के, अच्छा, आप में से कितने लोगों का खुद का, आपका खुद का वेबसाइट है? कितने लोगों का वेबसाइट है खुद का? ओके, कोई नहीं दिख रहा। कितने लोग लिंक्डइन पे है? कितने लोग लिंक्डइन में हैं? ओके, बहुत सारे हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, 1981 के अंदर चाइना की इकोनॉमी वॉज इक्वल टू इंडियन इकोनॉमी। दोनों की इकोनॉमी सेम थी। आज वो 19 ट्रिलियन हो गई और हमारी 3.5 ट्रिलियन। एक ही डिफरेंस है, वो है एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल बिजनेस। उस तरह से चाइना इज़ ए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, इंडिया इज़ ए कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी। वहाँ का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो ठीक नहीं है, वो हमको नहीं चाहिए। हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम है, इट इज़ द बेस्ट। एंड हमको जो आज़ादी है, लेकिन कुछ इकोनॉमिक लेसन्स हमको उस कंट्री से सीखने पड़ेंगे। क्या लेसन है? वहाँ पे फर्स्ट ईयर कॉलेज में आते ही हर बच्चे को कंपलसरी वेबसाइट बनानी पड़ती है, खुद की कंपलसरी वेबसाइट। और उस वेबसाइट में उसको लिखना पड़ता है कि फर्स्ट ईयर कॉलेज में उसने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए, क्या क्या एक्टिविटीज़ की, को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या की, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। और जब वो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो उनकी खुद की वेबसाइट ही बायोडेटा है, वो ही बायोडेटा बन जाता है। आपको शायद आश्चर्य होगा कि क्लास 5 से चाइना के अंदर इनोवेशन का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। देयर इज अ सब्जेक्ट ऑन इनोवेशन। अभी मैडम जुगाड़ की बात कर रही थी, तो हमारे तो सालों से जुगाड़ है, सालों से हमारे यहाँ वो कल्चर है। हमको अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत अर्ली एज में उस चीज़ को लानी पड़ेगी। अभी देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ लोकल फॉर वोकल का, कि वोकल फॉर लोकल की आपको एक कंपनी है राजकोट में जो बकरी की लिंडी एक्सपोर्ट करती है, बकरी की लिंडी। और अमेरिका में वॉलमार्ट, इतना बड़ा चेन स्टोर है, वो खरीदते हैं और उसको $3 पर बॉक्स में बेचते हैं। और उसने इतना बढ़िया डिज़ाइनर बॉक्स बनाया हुआ है, उसने सब वेजिटेबल डाई से कलर किया हुआ है, उसको एक एक लाइन में लगाते हैं और डिज़ाइनर रिबन है उसमें, और $3 में एक बॉक्स बिकता है। और लोग घर में ले जाके उसको एज ए मैन्योर यूज़ करते हैं, एज ए मैन्योर फॉर द रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट को पानी थ्रू आउट द डे चाहिए। गोट डंग पानी सोख लेता है और दिन भर थोड़ा थोड़ा छोड़ता है।
मैं जब इसको पूछता हूँ कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बिजनेस का, तो बोलता है मुझे सप्लाई नहीं मिलती। 8.5-9 करोड़ का एक्सपोर्ट का काम है, गांव में है, वो विलेज से काम करते हैं। आज सरपंच जी बता रहे थे विलेज की इकोनॉमी के बारे में। दूसरी एक कंपनी है, वो अभी जब पेंडेमिक चालू हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ है, मिडिल ईस्ट 60 साल पहले बहुत गरीब था, उसके पास कोई पैसे नहीं थे, फिर तेल आया, दे गॉट ऑयल, दे बिकेम रिच। तो वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता, डेजर्ट है। पेंडेमिक में उनको बड़ा डर लगा कि भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, जहाँ से फ्रूट वेजिटेबल और फूड ग्रेन आता है मिडिल ईस्ट में, वो आना बंद हो गया तो हम खाएंगे क्या। तो उन्होंने अमेरिका की केलॉग्स को एक काम दिया, जो लेवल 5 फूड लैब है, कि भाई आप तुरंत हमको ये बताओ कि यहाँ एग्रीकल्चर जल्दी से डेजर्ट में कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किया और रिकमेंडेशंस दिए। उसमें से एक रिकमेंडेशन दिया कि भारत के 5 राज्य है जिसका उन्होंने रिसर्च किया है गाय के गोबर का, और बोले वो गाय का गोबर एज ए मैन्योर यूज़ करेंगे तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा। जयपुर की एक कंपनी है, आप लोग गूगल करके देखना, सनराइज लैंडमार्क करके, उसने वो अभी 900 टन पर मंथ गाय का गोबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट को। ये दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि आपको ग्लोबलाइजेशन करने के लिए कोई बड़ा प्रोडक्ट या बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गाँव में जो चीज़ हो रही है उसमें से भी बिजनेस किया जा सकता है। और एक बात आपको ये समझना है ये भी कि आप में से, अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लोगों को ग्रेजुएशन करने के बाद सर्विस करनी है? कितने लोगों को जॉब करनी है? हाथ उठाइए। बहुत कम है, बहुत अच्छा है। और कितने लोगों को बिजनेस करना है? वेरी गुड, वेरी एनकरेजिंग। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। पिछले साल भारत में 1.6 करोड़ फ्रेश ग्रेजुएट होके निकले। जितने भी सरकारों के आंकड़े हैं उसमें मैक्सिमम 65 लाख लोगों को नौकरी मिली। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं और बाकी करेंगे क्या हर साल? सबसे बढ़िया एम्प्लॉयमेंट का तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ द बेस्ट एम्प्लॉयमेंट। और भारत सरकार ने आज इतना बढ़िया मैकेनिज़्म बनाया है। मैं आपको कुछ उदाहरण गांव के देता हूँ, क्योंकि आज गांव की काफ़ी बात हो रही थी। एक हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं जो वर्ल्ड बैंक फंडेड है, उसका नाम है स्मार्ट विलेज। हम लोग गांव को 1000 दिन में स्मार्ट विलेज बनाते हैं। अभी 174 विलेज में 19 राज्यों में काम चल रहा है। महाराष्ट्र में भी एक गांव है। उसके अंदर क्या किया हमने देखा जो फार्मर है, जो खेती करते हैं, खेती करने वाले हमेशा गरीबी में रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं, उसमें आपको बहुत कुछ पैसा कमाना नहीं मिलने वाला। और मंडी है, मंडी में तो ट्रेडर लोग प्राइस तय करते हैं, फार्मर को कम मिलता है। जो लोग मूंगफली उगाते थे वहाँ हमने उनको पीनट बटर बनाना चालू करवाया कि पीनट बटर बनाओ। और पीनट बटर का मार्केट 28,000 करोड़ का है अमेरिका में। जब उन्होंने पीनट बटर अच्छा अमेरिकन US FDA स्टैंडर्ड से बनाया तो उसका हमने वहाँ पे अरेंजमेंट किया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और आज यंगस्टर्स जो गांव छोड़ के चले गए शहर में नौकरियाँ करने, वो वापस आके गांव में पीनट बटर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्लैमरस बिजनेस है। इसी तरह जो टमाटर उगाते थे उनको केचप बनाना चालू किया। तो ऐसे 150 प्रोजेक्ट सिडबी ने अप्रूव किए हैं, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी वो लोग लोन देते हैं। मेरा कहने का इन सब बातों से क्या मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में लाना है वो यंग पीपल लाएंगे। आज भारत की 50% आबादी 70 करोड़ लोग 25 साल के नीचे के हैं, और वो लिटरली सभी डिजिटली लिटरेट है। सब डिजिटली लिटरेट है, सबके पास स्मार्टफोन है। यहाँ जितने बैठे सबके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में व्हाट्सएप में समय ना आप गुजारें, स्मार्टफोन में आप रिसर्च कीजिए कि ग्लोबली क्या बिजनेस कर सकते हैं आपके गांव से, और कॉलेज में रहते रहते बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन होने के बाद ही करें। और जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो इस तरह से आ सकता है, क्योंकि एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लोजिंग में, जब तक इकोनॉमिकली हम प्रॉस्परस नहीं होंगे तब तक हमेशा दबाए जाएंगे। और आज चाइना को देखिए, उसकी भले गवर्नेंस सिस्टम अलग है लेकिन कोई उसको दबा नहीं सकता है। तो हम लोगों को इकोनॉमिकली अगर प्रॉस्परस होना है
तो जो यंगस्टर्स हैं हमारे, ये ही इसका बदलाव ला सकते हैं और उसका मॉडल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसको अभी से कॉलेज में रहते रहते सोचिए कि हम क्या नया बिजनेस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। Thank you, sir. Thank you so much for enlightening our audience. Our next esteemed guest is Dr. Manjari Prabhu. It gives me immense pleasure to introduce her to the audience. Dr. Manjari Prabhu is an Indian author, TV producer, and filmmaker. She has completed her postgraduate diploma in social communication media from Sapphire College, Mumbai, and PhD in communication science from Pune University. Dr. Manjari has written more than 15 books. Among them was The Astral Alibi, mystery detective fiction, which was honored as notable fiction in Kiriyama Prize in 2007. Her other romantic suspense thriller, The Kevin Site Conspiracy, was awarded with Best Mystery Award by BTB Awards in 2012. For the notable work in mystery thriller novels, the media calls her the Indian Agatha Christie and the first lady mystery writer in India. I request ma'am to address the gathering. Please give a huge round of applause. Thank you so much. Such a pleasure being here. Well, all the respected dignitaries on the stage and dais, Dr. Vishwanath Ji Karad, Rahul Karadji, all the students out there, lovely to meet you all. Let me begin by saying I'm a writer, but I want to know how many of you actually read books. Please raise your hands. Read books meaning read novels, okay? I don't mean your textbooks. Novels? How many of you read novels? Okay, good. How many of you like mystery novels? Okay, that's great. Lovely. So I'm really glad to meet such a diverse audience here. I believe that many of you are coming from different parts of India, some from abroad also, many from villages. For me, all of you together here are like a mini India right now. I don't need to emphasize how India is enriched by its diversity and still held together by its cultural unity. And before I share my journey as a writer, because today I want to talk about two things. काफ़ी सारी चीज़ें की है ज़िंदगी में, but दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी as a writer, as a festival director, and specifically a book that I've written called The Dog Train of Peace. How many of you like dogs? You like dogs? That's it? I hope the next time I meet you, a lot of people will be raising your hands. Anyway, so when any country is represented on an international platform, it is usually referred to by its capital city. So we hear phrases like, Washington said this, Beijing is upset, and something is happening in Delhi. So we all know that Delhi is our political capital. We have Mumbai as our financial capital. We have Pune, which could be called our education and cultural capital. But what I want to say is that a nation is not just big cities and power centers. It's also every other city, small town, village. So it's all together is India. And for me, everything that I've done is with the idea that India begins where I live, which is Pune city. You know, there's a dialogue from the film Kalia. Have you seen the film Kalia? Amitabh Bachchan, Kalia? Anybody seen the film? He says, मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ, line वहीं से शुरू हो जाती है. So for us also, no matter where you stand, India begins from there. So as a writer, you know, I started very young. I used to read really avidly. I was a very avid reader, and since I was a kid, I wanted to be a writer. But you do know that there are many, many writers in the world. You know that, right? Almost everybody is a writer nowadays. Please say yes or no so that I know that you know what I'm talking about. Do you feel that there's a writer in everyone? Yes, loudly? Okay, right, yeah. But it's not easy to be a writer, to get published, and to get read. So it's actually a very courageous thing to do, because you're actually bringing your imagination out there in front of the world, and you expect people to actually like your book, so which is a pretty courageous thing. But I did it
Because I grew up reading a lot of Enid Blyton books. I don't know if you're aware of that writer, but I grew up reading British characters and English characters. And when I realized that I wanted to be a writer, I realized that I needed to change my perception of writing. So I needed to write about Indian characters woven into the fabric of our culture. I had to create my old worlds of fiction that Indian readers would resonate with. So in a fierce, competitive world, I knew that I had to make a mark for myself, but keeping Pune and India as my base. I had to be original. So in a lot of my books, I have Maharashtrian characters. I talk about Maharashtrian culture, about vada pav, I talk about, pitla bhakari. All this was actually written about when I wrote 2 books for the US market. So in that sense, what I'm trying to say is, each one of us is born with a certain personality and in a certain milieu. And you have to choose to be that personality and not be a personality someone else wants you to be. So whether it's our academic and professional life, each one of us should find our own uniqueness, whether it's skills, hobbies, sport, whatever it is, and be very creative and intelligent in our use of our local and unique backgrounds. So in other words, don't borrow from the West, try to create your own world from where you are. Because if we bring something of our own local, personal, and traditional in our profession, we can create a niche place in whatever field we choose to take up. As a result, no matter where you stand, India stands within you and with you. So हम जहाँ पे खड़ी रहती है, India वहीं से शुरू हो जाती है. So in this whole journey of writing, I have taken pride in 3 things: resolve, resilience, and relevance. You have to resolve to do something. You have to have the resilience to be flexible, to try new things, experiment and evolve. And finally, relevance, no matter what you do, it is very, very crucial to remain relevant to your objective. So, and I have to add here that in pursuing my goals, I never actually left Pune. Instead, I took Pune, its culture, to the rest of the world. And especially, I do something called the Pune International Literary Festival. Has any one of you heard of it? Have you heard of the Pune International Literary Festival? Yes, no? Say no if you haven't, it's all right. Okay, it's a lit fest, by the way. So with PILF, I gave voice to the local, and my books brought the world to Pune. So that for me is the art of possibilities. So I want to talk about 2 books specifically. I wrote 2 books where the detective, Sonia Samarth, solves cases with the help of Indian Vedic astrology. Do you believe in astrology? Yes, no? I can't hear you. Yes and no, okay. But you do read your horoscopes in newspapers, I'm sure. Anyway, so I created a character called Sonia Samarth, who solves cases with the help of Indian Vedic astrology. I thought it was a very unique concept. So I sent it to all the Indian publishers. Unfortunately, none of them wanted it. And I realized that at that time, this was in 2002, Indian mainstream fiction in English hadn't really taken off. We were still publishing literary fiction. So I decided that's all right. I got myself an American agent, and luckily I got a 2-book deal with Random House USA, which is like a publishing giant. As a result, what happened was that on the basis of the books, I introduced to the US Indian Vedic astrology and a unique technique of solving mystery and crime cases with the help of the Indian Vedic astrology. This was in 2004. Today, I'm proud to say that forensic astrology is being propagated in the West in a big way, that solving crime with the help of astrology, but the roots to this very idea came from Pune with my books way back in 2004. So you see, you can give a lot from where you are to the rest of the world. So believe in yourself, and more importantly, always believe that there's a possibility that you could be an inspiration to others. Okay? So I think I have 2 minutes. So I want to talk about my book called The Doctrine of Peace. I worked on this book. So I had a dog called Sheena when I was in college.
Till then, for me, all dogs were like four-legged creatures, okay? And lovable creatures. The moment Sheena came into my life changed. I began to look at dogs and everybody else around me with compassion and love, so much so that everything became life before Sheena and life after Sheena. And if any one of you have dogs, you'll know that that love is so strong that it will change your life. Has it ever happened to anyone? Has a dog changed your life? Has a dog changed anybody's life? Okay, no. Anyway, through the book, The Doctrine of Peace, I have 1 minute left. What I'm trying to do is provide an alternate philosophy which tells you that if a dog comes into your life, it will change your life, it will help you in your academic careers, it will help you in your creative fields, and this is proven. This is not something that I'm saying. Science says that if you have a dog in your life will progress with leaps and bounds. I think that's, of course, science. But as a human being, I think it's most important to be kind to people because you don't have an alternate solution to be a good human being, and it will definitely help you in your life. Good luck to all of you, and I hope in the short time I've managed to convey something. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Manjari Prabhu ma'am. Thank you so much. Now we are coming to a very important part of this session. We are very fortunate today to have revered Professor Dr. Vishwanath D. Karad sir amongst us. He is founder and chief patron of MITWPU Pune and president MIT World Peace University, and he is the creative brain behind and the creator and the architect behind the largest dome in the world, the peace dome in the world called as World Peace Dome. He is coming from a very small village, Rui Rameshwar in Latur district, and now he is chancellor of 5 universities spread across length and breadth of India. He is a staunch Warkari, he is a visionary educationist, he is a true champion for the cause of world peace. And we are very fortunate here to have him with us today. Just 2 days back, Sir received an international award called as the Jewel of Bharat in a glittering ceremony at Mount Abu, and I wish that all of us should give a thunderous round of applause for Sir for receiving this very prestigious international award, Jewel of Bharat. So let us watch a small film on the life journey of revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir before we invite him here. A film, please. ये एक सोच है, सोच शांति की, सोच समर्पण की, सोच नई दिशा की, सोच मन के दर्पण की। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये कहानी है एक सोच की। ये कहानी है एक छोटे से बीज की, एक बीज जो आगे चल के महावृक्ष बना। ये कहानी है एक विशाल स्वप्न की, वो स्वप्न जो आंखों ने नहीं, दृष्टि की नजरों ने देखा। इस कहानी की शुरुआत हुई एक छोटे से गांव में 80 साल पहले। रामेश्वर रुई की पावन भूमि में, विठोबा रघुमाई की अनुपम साय में, वारकरी पंथ के मूल्य संस्कार में एक ज्ञान ज्योति का जन्म हुआ। संस्कारों का बीज था बचपन, संस्कारों का बीज था बचपन, सुविचारों का मानो दर्पण।
ज्ञान धर्म की धाराओं का उभर रहा था अपूर्व मंथन। कर्म ही धर्म है और धर्म ही जीवन, बस यही प्रेरणा मिली विरासत में। नियति ने मातृशोक दिया तो बहन माता बनी। तुकोबा राय की बोली और ज्ञानेश्वर माउली की अमृतवाणी जिंदगी का रास्ता बनी। सद्भावों की सीख बड़ी थी, सद्भावों की सीख बड़ी थी, हर पल छिन से जुड़ी थी। मिली जो थी ये अहम विरासत, दुनिया को देने की घड़ी थी। जो बीज था बोया खिलने लगा, जो बीज सा बोया खिलने लगा, विद्यादान में घुलने लगा। जितनी शाखाएं बढ़ने लगी, सपनों को किनारा मिलने लगा। ज्ञान से विज्ञान तक, विज्ञान से अध्यात्म तक और अध्यात्म से शांति तक। कारवां चलने लगा, रास्ता खुलने लगा। कारवां चलने लगा, रास्ता खुलने लगा। मंजिल तो बहुत दूर थी, पर मकाम मिलने लगा। तंत्र के मंत्र ने कुतूहल जगाया, एक नई आशा का दीप जलाया। देखते देखते जोत बढ़ती गई, देखते देखते जोत बढ़ती गई। MIT नाम से नींव चढ़ती गई। माइर्स की किरणों से आया MIT का अद्भुत सूर्य नया। माइर्स की किरणों से आया MIT का अद्भुत सूर्य नया। हर मन में जागी आस नई, हर दिल में उजला एक दिया। फिर से बोया बीज कोई, दिल में लेकर आस वही। फिर से बोया बीज कोई, दिल में लेकर आस वही। न दिन देखा न देखी रात, बस नई उड़ान और दिशा नई। ज्ञान विज्ञान का संगम जहां था, ज्ञान विज्ञान का संगम जहां था, अध्यात्म शांति का जागर जहां था। विश्व में ऐसा सपना न देखा किसी ने, दिन रात एक होकर जो पूरा हुआ था।
कई नई पड़ाव आए, कई पुराने मकाम मिले। इंद्रायणी की धारा से लेकर रुई रामेश्वर तक जिनकी बात चले, भारत की अस्मिता जगाई, भारत की अस्मिता जगाई, तत्व ज्ञान की सोच दिलाई। कदम कदम बढ़े चले, विशाल वृक्ष से मिले, कदम कदम बढ़े चले, विशाल वृक्ष से मिले। हुंकार विश्व शांति का देह प्राण में घुले। गरुड़ ध्वज बना कहीं और शांति का प्रतीक भी, कहीं मुड़ा भविष्य तो कहीं जुड़ा अतीत भी। राम रहीम को एक मिलाया, शांति घुमट का निर्माण कराया, सप्त स्वर्ग को आकार दिया, हर छात्र में राष्ट्रवाद पिरोया। धर्म देश का अभिमान जगाया, यूनेस्को के मंच पे देश का नाम रोशन करवाया। Please put on your hand together. A big round of applause for this life vision. I think there cannot be any example bigger than SLDP, Social Leadership Development, than Dr. Karad sir. Just when you go back, please take a look at the sentence written there in the back of Swami Vivekananda, that take up one idea and then let your whole life be surrendered for that idea. So that's what Dr. Karad sir has done. And taking the same clue ahead, friends, I just want to tell you that remember the day 11 September 1893, wherein Swami Vivekananda, the noble son of India, delivered the speech in the first Parliament of World Religions at Chicago. In the same line, the 9th Parliament of World Religions happened in 2015 at Salt Lake City, United States of America. And revered Karad sir was keynote speaker there. Again, after 125 years after the first speech of Swami Vivekananda, again the same words of sisters and brothers of America and 2 minutes of standing ovation. And it was a pin drop silence for the next 10 minutes to the delegates of 10,000 plus from across the world. Friends, I would like all of you to take your time out. All your senses should be stopped. Listen carefully those 10 minutes of the essence of his life philosophy, and in those 10 minutes probably he will reveal to us everything that he believes in and everything that made his journey possible here. So I would like all of you to be very quiet, very calm, and listen to this short film on his address, keynote speech at the 9th Parliament of World Religions at Salt Lake City. स्वामी विवेकानंद, भारताचे थोर सुपुत्र स्वामी विवेकानंद एक केवळ नाव नाही तर हजारो वर्षांपूर्वीच्या भारतीय संस्कृती, सहिष्णुता आणि सभ्यतेचं दर्शन आहे. स्वामी विवेकानंद म्हणाले होते, ईच सोल पोटेन्शियली डिव्हाइन, म्हणजे जगातील प्रत्येक आत्म्यामध्ये दिव्यता असते. आज संपूर्ण जगामध्ये युद्ध, हिंसा, दहशतवाद आणि अशांतीचं वातावरण आहे. आत्मकेंद्रित मानवी प्रवृत्ती धर्माच्या नावाखाली समाज आणि जगाला विनाशाकडे घेऊन चाललेली आहे. जगातली हिंसा, अशांती यावर मात करून जगात शांतता कशी नांदेल याच्या मंथनासाठी अमेरिकेतील सॉल्ट लेक सिटी इथं 9व्या जागतिक धर्म परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. अशा ऐतिहासिक स्वरूपाच्या जागतिक धर्म परिषदेमध्ये माईर्स MIT शिक्षण संस्था पुणे भारतचे संस्थापक, कार्याध्यक्ष, प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड,
यांना प्लेनरी अशा महत्त्वपूर्ण सत्रामध्ये विज्ञान आणि अध्यात्माच्या समन्वयातून जगात शांतता कशी नांदेल या विषयावर बीजभाषण देण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं. ही अतिशय गौरवाची बाब आहे. डॉक्टर विश्वनाथ कराड हे स्वामी विवेकानंदांचे निष्ठावंत पाईक. त्यांनी स्वामी विवेकानंद, तत्वज्ञ संत शिरोमणी ज्ञानेश्वर माऊली आणि जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराजांच्या आदर्शांवर आपल्या जीवनाची वाटचाल केलेली आहे. स्वधर्म विसरलेल्या, स्वत्व गमावलेल्या आणि नकळतपणे स्वाभिमानही गळून पडलेल्या समाजामध्ये भारतीय अस्मिता जागवण्याचा प्रयत्न डॉक्टर विश्वनाथ कराड निरंतर करत आहे. 1996 साली डॉक्टर कराड यांनी विश्व शांती केंद्राची स्थापना करून विश्व शांती केंद्र आळंदी आणि माईर्स MITच्या माध्यमातून गेली 30 वर्ष शैक्षणिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, हिंदू मुस्लिम ऐक्य, बंधुभाव आणि विश्वशांतीसाठी प्रशंसनीय कार्य केलं आहे. उद्देश आहे वसुधैव कुटुंबकम ही संकल्पना. या जागतिक धर्म परिषदेमध्ये या धर्म परिषदेच्या उद्घाटनापूर्वी जेव्हा बोलायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांनी उच्चारलेले पहिले शब्द होते असा उच्चार करताच शिकागो येथील सभागृहामध्ये विविध देशातील, विविध धर्मातील 5000 लोकांनी 2 ते 3 मिनिटं उभं राहून टाळ्यांचा कडकडाट केलेला होता. Next we have Dr. Vishwanath Karad. He is an eminent public intellectual, devoted teacher, and dedicated social worker. He is the founder, president, and director general of the Maharashtra Institute of Technology in Pune, India, in addition to being the founder and president of its World Peace Center of the Maharashtra Academy of Engineering and Educational Research. He is also the UNESCO Chair for Human Rights, Democracy, and Peace. Dr. Karad. 1893 नंतर पुन्हा एकदा घुमले तेच शब्द बंधूंनो आणि भगिनींनो. My dear brothers and sisters, the great scholars, thinkers, philosophers, and scientists gathered for this unique Parliament of World's Religions, which is a reminder to all of us of the very first Parliament, which was held on 11 September 1893. And particularly myself, it reminds me of the words of wisdom spoken by the great noble son of India, Swami Vivekananda, who had said that time, and when he said, union of science and religion, oblique spirituality alone will help to bring harmony and peace to mankind. And he had given the very definition that religion is nothing but to perform one's duty. Duty towards the mother, the father, the family, the society, the nation, and the entire world. World as one family. Before I make some comments on the very subject which has been given to me, that whether the value-based universal education system can help to minimize the hate speech, the violence, the chaos, and the confusion prevailing in this world, in spite of the most mind-boggling developments in the field of science and technology, getting all the facilities and the luxurious things for enjoyment and possibly the pleasures of life. But friends, I sincerely feel that we have another component. It's not the human body alone, but there is a mind and the heart which needs to be really understood properly. The mind, matter, spirit, and consciousness
are the 4 important words which we have to address ourselves when we have been trying to think about development of a human life. And when we say the development of a holistic society as a whole, we have to have a very important and a very prestigious component of life, that is education. I can only tell you, friends, that in the name of the same noble son again, that he has said that the education is nothing but a perfection already in a person, in a man. So many definitions have been given, but finally I feel on the present situation when we see all around that everything is available. Outer space, IT, computer, particle physics developments, but on the other side we have not been having a full satisfaction, and possibly there's a chaos, confusion, confrontations, the massacre, the bloodshed, and horrifying violence too. The issue is mainly in front of me, and the discussion which went on, what is the solution for this? I, for one, friends, I feel sincerely that there is a need to have a value-based universal education system. The moment I say universal, somebody may call that how can you dare to say universal? The basis is that every nation has a geography, its history, its culture, its traditions, but the time-tested values are common. The human values are common. And naturally, we have got to know exactly what way we have to proceed. And from that point of view, there is an urgent need that we must have a component of appropriate component of science and appropriate component of spirituality too. Not to misunderstand about the spiritual component, because that ultimately helps to develop the positive mindset. The issue is not to have a destructive mind or a negative mind, but how to develop the positive mindset, and possibly the best solution would be that you should have a certain component of meditation and your own faith, whatever belief you have. But remember, friends, that at least we must have to have a complete component of at least some component of spirituality and some component of science part of it, engineering part of it, or IT computer part of it. And we will have to design a new system of education. Our World Peace Center, MITWPU, Pune, India, who is a firm believer of the great philosopher saint of India, Sant Jnaneshwar, at the age of 16, he said, this spiritual component of the religious component is nothing but to understand the ultimate reality, the ultimate truth. You may call Ram or Rahim or Jesus or Buddha, whatever name you give. My name is Vishwanath. The question is, this name is given by my parents. The issue is, what is that invisible force or the energy which needs to be appropriately understood and included in the education system itself. That is my personal feeling, friends, and I sincerely feel that world over we have to think again and finally settle a new education system, which I call it as a value-based universal education system, which may be some solution to minimize the chaos, confusion, bloodshed, massacre, terrorism, and violence. That time has come, and we have to think and revive ourselves in an appropriate manner. I don't say everything is wrong. I personally, I'm a professor of engineering. I do understand it. And finally, I would say and conclude with a few words. This is the Atharva Veda quotation, not with a pride, because I'm an Indian. But let me tell you, friends, there is a confusion again that all the religious scriptures are life-guiding scriptures. They are not only meant for either the Islam, the Quran, the Bible, the Gita, the Guru Granth Sahib, whatever names you take up the different books. You will find that they are nothing but the life-guiding scriptures. How to live and how let others live. How to help and how to help the other people. That has been the solution. Finally, I would like to tell you, friends, and give a small quotation and conclude my speech. This quotation is from an Atharva Veda. There are two components. One is the ritualistic component and one is the scientific component. It says, we are the birds of the same nest. We may wear different skins. We may speak different tongues. We may believe in different religions. We may belong to different cultures. Yet we share the same home, the Mother Earth, born on the same planet, covered by the same skies, gazing at the same stars, breathing the same air. We must learn to progress together or miserably perish together.
For a person can live individually, but can only survive collectively is the final destiny for the whole of human race. It doesn't speak of any particular religion or any particular caste. Friends, I would like to once again earnestly appeal to you that there is a need to have some modification, and without misunderstanding, without calculating anything else, we need to have a scientific component, appropriate component of science, an appropriate component of spirituality or the religion, which is the need of the hour, and possibly that system of education may help to a certain extent to minimize the chaos, confusion, bloodshed and violence in the world. That's my personal feeling. Thank you so much, friends. Thank you. Thank you so much. And let us put together our hands together and let us welcome with standing ovation revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir for his blessings and guidance. Please give a standing ovation and a huge round of applause for revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir. Please sit down, please sit down. Please take your place and please be quiet. Friends, it truly fills my heart with a sense of pride and pleasure when I stand before you, all the young students of MIT World Peace University, the mostly revered and respected guests of today, the honorable speakers, to whom you have heard just now, and you have heard in different subjects their words of wisdom. Friends, I think a person standing before you, you have just heard his vision or views. I had the fortune of speaking to the Parliament of World Religions in Salt Lake City. It was the 9th Parliament that time. And possibly that was the first time the world could understand the very message of great noble son of India, Swami Vivekananda, which has been my lifetime ideal. And the very words which you have just heard, that message which he gave on 11 September 1893 in the first World Parliament, there were 3 sentences which have moved the world that time. The first sentence was, he said, remember friends, union of science and religion / spirituality alone will help to bring harmony and peace to mankind. That time, friends, our India, Mother India or Bharat, British लोगों के कब्जे में था. We were under the clutches of the British. So Swami Vivekananda used one more sentence. And he said, friends, give me a few men with the muscles of iron and nerves of steel, and I'll change the face of Mother India. And there was the third sentence which he uttered, which became my life mission again. He said, remember friends, it is much, much better to run after football on the ground than to only read Gita or a Bible or a Quran or Guru Granth Sahib in the temple or a mosque. यही वो शब्द है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत छोटे से देहात से आया हूँ, आपने देखा थोड़ा सा. Basically, I would like to tell you that I never wanted to be an engineer. मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता था. और तो फिर कैसे हुआ भाई ये? मुझे कोई कलेक्टर बनने की चाहत थी, इंजीनियर बनना नहीं है. वो आदमी इंजीनियर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है,
MIT खोलता है और बातें करता है विश्व शांति की। संदेशा देखो आपके जीवन में। मुझे मालूम है कि आपने जो भी अमीर हो या गरीब हो, कोई फार्मर का बेटा हो, किसी बिजनेसमैन का हो, बड़ी आस लेके बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी कैसी बने, मेरी बेटी ऐसी बने कि हमारे कुल, हमारी परंपरा, माँ बाप की नाम को रोशन करे दुनिया में। ये बाकी बातों को तो आपने सुना, आप जानकार है, बुद्धिमान है। बहुत दिनों से most of you must be waiting to get an entry into this World Peace University or some good institution somewhere. बट ध्यान में रखो भाई, ये सारा आप पे निर्भर है। मन की बात नहीं, दिल की बात बोल रहा हूं। मन थोड़ा चंचल होता है, आत्मा शांत होती है। Body and the brain is one aspect of the system. You are all engineering students. A mechanism है भाई। देह और बुद्धि, उसका स्टडी होता है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में। बट आत्मा और मन किधर है? मन थोड़ा चंचल होता है और आत्मा स्थिर होती है। क्या स्वरूप क्या है इसका? What is the nature of this mechanism? Is for what we have been together. मैं ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अच्छा लगा, मैं धन्यवाद देता हूँ राहुल और उसकी टीम को, हमारे सारे वाइस चांसलर रवि चिटनीस हो, मिलिंद पांडे हो, कोकड़े हो, सारे लोग। और आपको धन्यवाद देता हूँ कि ज़रा समझने की कोशिश करो भाई। आपने माता पिताओं ने बहुत बड़ा पैसा खर्चा किया है, लेकिन आपकी जीवन की दिशा क्या हो सकती है? अमेरिका, इंग्लैंड देख रही है भारत की तरफ। आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट आफ्टर हैविंग अ नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वर्ल्ड ओवर, फ्रॉम जापान टू अमेरिका टू रशिया। One thing I will tell you, friends, you know, we had undergone that horrifying situation of coronavirus, the COVID-19. कहाँ थे भाई दुनिया? The presidents, the prime ministers, the scientists, and the persons like me, even myself, we were all hiding behind the doors. किसका डर था भाई? क्या कारण क्या है? American president, British, Germans, everybody, Security Council members of the whole world community of United Nations, they are all hiding behind. That time, possibly the world has realized, and they have been looking to India, because this has a unique philosophy which has been giving you the real revelation. I'm saying the word revelation of what the scientist stands for, what the men of spirituality stands for, संत क्या है, शास्त्रज्ञ क्या है, तत्वज्ञ कौन है, ये सारी बातों का जिक्र इस देश में हुआ। And now let me tell you, friends, that today the scientists like Schrodinger, Penrose, Einstein, who gave an equation like E equal to mc squared, but the new equation has come. Om tending to E equal to mc square. I am not speaking, it is not mine. But the world over, the greatest scientists of the whole world are telling you that you must realize that Jagat Guru Sant Tukaram Maharaj spoke 400 years back. 400 साल के पहले की बात है, पढ़े लिखे नहीं थे. But they have used the word Anurenu Thopana Tuka Akasha Yoda. I am the smallest of the smallest of the small particle of the universe. But what type of particle? I can encompass the entire universe. ब्रह्मांड की बात है. सोचो तो सही, इंजीनियर के नाते. And they have given us the advice for people like us,
sitting on the stage, all the vice chancellors, the professors, teachers, engineers, that you should start the schools of consciousness and reality. क्या है भाई consciousness? What is reality? What is the ultimate reality? The ultimate truth क्या है? And for your information, friends, MIT has been on the forefront with all the great people sitting on the stage. We have already started MIT School of Consciousness and Reality, the first university in the whole world taking a lead in making the world of science, Google हो, Facebook हो, IT हो, computer हो, you take any names, ऐसी दुनिया को दिशा दिखाने का दायित्व इस विद्यापीठ का है। मैं धन्यवाद देता हूँ सबको और आपको भी शुभकामनाएं। Thank you, friends. Thank you so much. Thank you so much, revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir. A huge round of applause for Karad sir. Thank you so much. Thank you so much. Let us please welcome Dr. Joske Banders. I request the dignitaries to felicitate her. Dr. Joske Banders has a PhD from University of Amsterdam, and she will be addressing the audience and highlighting the essence of co-creation activity that is to be taken up by first-year undergraduate students. Give a huge round of applause. She has implemented the co-creation activity in MITWPU. I request Dr. Joske Banders to please come here and address the gathering. Yeah, please welcome Dr. Banders. Students, please be seated. Students at the back. Namaskar. Good afternoon for everybody. What is it wonderful to be here with you. But you, the students, you are the first year students. You just started with your study. But I think already now you realize that you have been enrolled on a very, very special university. I don't know of any university in the world which starts with 3 days of having here the most interesting social leaders of India. Why do you think that this is planned? To give a role model, a glimpse of your future? Perhaps. But also because this is the proper start of a completely new and fascinating and unique curriculum which has been designed for you. And I would like to speak about one small course which is called co-creation, which you will all follow in the second semester. But before that, I'd like to speak about why it is important that your curriculum has been changed. And your curriculum has been changed in a very unique way. So let me speak about 3 reasons why this was a needed thing, but why we started also with this special 3 days. The first thing is that traditionally, universities in Bharat, the teacher was the leader of your learning process. The teacher was giving the theories.
the concepts, the methodologies, the examples, the applications. And it was the task of the students to listen carefully, to understand, and to memorize, and to do exams. And this was an idea because after graduation, it was long time the case that the theories taught for you 3 years before were still relevant, still important. But now, you know, we live in a completely different world. We live in a highly dynamic world. Businesses can be destroyed overnight. New businesses can emerge. We have problems, so many problems, given a lot of dynamic, like climate change, technological developments, financial international crises, pandemics. All these factors influence the day-to-day life in our organizations. So how can we come then, what do we need to teach? If what we teach today is maybe next year, maybe not any for use. The idea is that what we need to teach you, or what you need to teach yourself, is to learn to understand this complexity, the complexity that all these factors influence and how they influence your future field of where you will be, whether it's in business, is it in NGOs, anywhere. So to understand the complexity. The second reason is why we needed a complete new curriculum is because we know that we have artificial intelligence. And you can find and do your exams and assignments with the help of the computer and the internet and come up with beautiful answers. So what does that mean for the university? Does the university need to follow that one and train you better in how to use the internet and deep learning methods? No. The idea of these universities is that there is something else than artificial intelligence, and that is called human intelligence. And human intelligence, that is what we need to teach you. What you need to teach yourself again. Working in groups, sharing your experiences. Your experiences are unique. They cannot be found at the internet and used for artificial intelligence. Your experience and the sharing of your experience, they can be creating new types of knowledge, new type of ideas, new type of solutions, which we need to, that creativity, that is what you need to learn. And it's not only experiences, it's also emotions. You know that we see students going to the field and feel empathy with the villagers. And this empathy is a big drive, as we have heard from the social leaders. So this is also what we need to have included. So then we need to be a focus in your solution, in your curriculum on this enhancing together in groups of students of this human intelligence. And lastly, there is now a distinction between two types of universities. One university is more teaching-oriented, and the other top universities are more research-oriented. So next to understanding and in your own field the complexities which are at stake, and also to develop your human experience, your human intelligence, what is also needed is to work and become a good scientist, to work on the research. What we need to do is to integrate the research together with all the other two elements. So these are the three pillars of your future here at the university. And now I will apply it to the next sheet. Can I see? So let me briefly explain what you will do in this co-creation. It is 6 days.
5 days, and you will be in a group of 15 students only, mentored by a teacher, facilitated. And in that group, and that's very, very special, that never happened in other universities, you are all coming from different schools. So in one group you have people from design, from engineering, from sustainability, for all those from different schools are in one group. And then you develop together, you think about what sort of drive, what sort of problem you like to address together in this course. And then the first day of the course, you choose the problem, you find out what are the causes of the problem, the complex problem in society, you choose. And then you find out the consequences. And you develop also the project goals and aims. But the most important thing of the first day is that you realize that for every problem, there are different ways of looking at it, different perspectives. You will know that if you look at your own situation in your family. If there is a problem, the family members will have different experiences. And if you don't understand them, you cannot find solutions. This is also what's happening in your group. So you need to bring in all your different experiences from the different fields and look also, and then look at what this means for the solutions of the problem. So in the second day, we have a day, and that is fully based on research. How you do this project, research-based. So when we compare the disciplinary research methodology and the methodology designed for dealing with complexity and finding solutions which can transform the society. That is day 3. 2. Day 3, you go out into the field. You have planned your interviews, and you go to meet people from NGOs, from businesses, from the village, from those you feel have important knowledge for the dealing with the problem. And you look at tensions and try to understand why are these groups hating each other, and you try to understand and try to find solutions so that people can work together, and solutions are typically made to be feasible and acceptable for everybody and have high impact. And at the end of the day, the 6 weeks, or after the interviews, you learn all sorts of technologies, research technologies, to analyze your results, because you have so much results from so many people from outside the university also. So how to analyze them and make them and come up with a nice description of the problem analysis, but also a solution which is smart, which is feasible, which is very precise and has a very high impact on society. So this is the program, and I know that you will, well, I will now like to ask one student of last year, Mr. Aman, who had been one of the students, because previous year we had a tryout, and he will now speak his experience about this. Thank you very much. Bye. Thank you. So my name is Aman Ninawe, and I have been a part of co-creation from last year. So at my time, there was a 5 days of co-creation course. On the first day, me and my group members were very confused about what this co-creation course was. Then our mentor, who is from School of Mechanical Engineering, when she told us and taught us about what co-creation actually was, we came to know we were becoming a part of something really big. On the first day, we chose problems. We actually brainstormed what problems we should take. Like I suggested we should do something for poverty. One of my group members said we should do something related to rural women of India. One of my group members said we should do something related to traffic. But after having a healthy conversation and so much of brainstorming, we came to the conclusion of selecting a topic of mental health issues. On the second day, our mentor taught us some research tools which were essential for our
for elaborating our problem statements. Some research tools included causal tree analysis, actors map, multiple perspectives on societal problems, sustainability, and so much more. On third day and fourth day, all we did was talking with stakeholders, interviewing them, screening them, and asking them various questions to understand what their perspective will be and what their reaction would be for our proposed solution. And on fourth day, we analyzed and interpreted the solution. On fifth day, what we did was presented our... So on the last day, we presented our research work to our mentor and to our judges also. So this was my experience. And after going through all the 5 days, me and my team members knew that we have learned something very essential, which will help us not only in our day-to-day life, but also in our assignments too. My suggestions to all of you would be, don't see co-creation course as a course. See it as an opportunity to do something real good for the society. See this as an opportunity to connect with different people, and see it as an opportunity to do something better for the nation. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. We are coming towards the end of this session, and for the concluding remarks, may I request Honorable Vice Chancellor Dr. R.M. Chitnis sir to give the concluding remarks. Dear students, I request pin drop silence for next 5 minutes. It's a feedback coming from this side about your behavior in this particular hall, which is created with a very, very pious kind of objective to make change in your life, not in our life. Kind of indiscipline which we see for last 2 years has not happened in the entire history of 35 years, 40 years of MIT. You know we are going to take very strict actions, and 10% of you, those who are indisciplined, will be given a goodbye chit by end of this particular semester, and those who are not attending, we will not be continuing with them. Try to understand, you come from a very, very dignified family with good sanskar. You come from a family who has sacrificed their life for your education. You come from a family where you have some aspirations from your father and mother. Just remember your mother in whose womb you were for 9 long months, and she took critical care of you. At least give back to her. What are her aspirations about you? What are your father's aspirations for you, though, who is financing you, giving time for you? I understand you are very intelligent. We appreciate that. We also understand, in addition to intelligent, you are very sharp focus for your career. We appreciate that. We also understand, in addition to being sharp focus and intelligent, you are well informed, you are well cultured. How many of students out of 140 crore people in this country are like you? Few. We know, we appreciate that you struggled for admission in MIT and you got it. Out of 80,000 students who applied, only 9% of you could crack it, and 91% of them are sitting at home or in some other institute. But as Krishna Prakash has said, that this is not the end, this is just a beginning. Can't you keep 3 long days quiet? What is big deal in looking at that mobile? What is a big deal in talking to each other? What is the big deal in not attending on time? Are you getting some Nobel Prize there? Out? We are very strict and we are very stopped too. We give you degree, we give you education, we give you placement, we do hand-holding even if you are alumni, because you are the owner of this particular organization. Please try to understand what Dr. Karad has created here is, if he would speak, you should be physically fit, mentally alert, intellectually sharp, and spiritually elevated. Physically fit you are because of your age and because of your father, mother who gave birth to you. Physically fit you are. Intellectually sharp you are, that's why you are here. Mentally alert, probably yes, probably not. Mentally you are in mobile, mentally you are in some other thoughts, mentally you are talking to someone else around you. Is that important?
Is that important? So mentally you should be focused. That's why Rahul Karad sir created yoga, meditation, pranayama. And that meditation, if you do it, today we don't have time. I have to stop as early as possible. But I came in between your lunch and the valedictory because some kind of a feedback has come from speakers that we will not come again to talk to these students. Try to understand that spiritual elevation has to be begun at the first year of this particular college, and then you will see you are a game changer and you differentiate. You have an edge over others when you go for your interview. Moment MITian goes inside any interview and we get a feedback that your guys are completely different. You have a long career to go. You will get a degree and then we'll give you placements, then you will do PG, then you will identify a spouse in your life, then you will have children, but you will be a owner of this particular organization. Try to understand that spiritual elevation is completely outstanding, which is happening here, and that is what is going to be a different game changer to you. In addition to this, Sldp was started only for you for last 3 years, that you have your money with you as you start career. Just don't be one of them who is having tons of money, but 20% of time and money you spend for your particular organization where you are part of that particular NGO. You don't understand the importance of working into social life today, and that's why many role models are coming, and then you are talking, then they are talking to you. Come to RIDE. Next week we are having RIDE, Research, Innovation, Design, and Entrepreneurship. In that particular RIDE, you will try to see that you will be trained for entrepreneurship. Why entrepreneurship? Rahul sir created entrepreneurship because we want employers to be created. Employers to be created, and you will be one of the top employer who will be actually giving employment to thousands and thousands of people here. Please try to understand that you are the owner of this university. We will go one day, we will become old, and some other people will come, but till last day of your life, you will be part of this particular organization called MITWPU, and college belongs to you. Till end of your last day, come here, aspire that you will stand here, and you will also address your young guys, your juniors who will come after you. Hope that today's 2 p.m. to 5 p.m. valedictory, the message has gone across, and you will see that this particular hall will be having pin drop silence, and absolute best of the best face you will be showing to others. If you do that, you will be going up in your life, and thousands of employment you will give. You will have your own choppers, you will have your own cars. If you come here after that as a successful entrepreneur, we publicly promise you that we will come on front gate to receive you, and we will publicly salute you. With that, I want to stop here. Jai Hind, Jai Bharat. Follow what MIT is doing for you. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Bharat Mata Ki. Thank you, Honorable Vice Chancellor, sir, for highlighting the importance of attending such programs. There are a few announcements. We will be starting with the valedictory session program at 2:10. I request all the students and faculty members to gather here at 2 o'clock. And the valedictory function has an attraction is there where you have cultural group of MIT World Peace University performing on the stage. So please be here at 2 o'clock after lunch. Thank you all the esteemed dignitaries for gracing the occasion. Please be here at 2 o'clock.
We will also have the presence of Harish Sai Raman, the motivational speaker, hypnotherapist, author, life and spiritual coach. We will have the presence of all these dignitaries in a few moments from now. I request all of you to be seated. Thank you. Please rise in your seats and welcome with a big round of applause, my friends, all the dignitaries for this valedictory session. A big round of applause as we welcome the former Member of Parliament and Rajya Sabha, Special Advisor and Chief Spokesperson of Janata Dal United, Shri K.C. Tyagi ji. We welcome Shri Ajay Prakash Sahani ji, the former IAS, former Secretary to Ministry of Electronics, Information Technology, Government of India. Shri Arun Vakhlu ji, the Founder, Director and Chief Mentor of Pragati Leadership. Thank you very much. I request everyone to be seated, please. Shri Harish Sai Raman, motivational speaker, hypnotherapist, author, life and spiritual coach. All are joining hands for ringing the bell of democracy. A big round of applause as we join our hands in this celebrative ringing the bell of democracy moment. I request all the dignitaries to join hands for lighting the traditional lamp. I request all the dignitaries to please join hands for lighting the traditional lamp, which will mark the beginning of the valedictory session of the Social Leadership Development Program 2023. Such a beautiful moment that all the dignitaries are joining hand for lighting the traditional lamp. Shubham karoti kalyanam, arogyam dhana sampada, shatru buddhi vinashaya, deepa jyoti namostute. I bow in front of the light, the giver of wisdom, the remover of ignorance. And may this light spread in our lives and keep showing us the path to the future. Honorable Executive President, Honorable Vice Chancellor are joining hands for lighting the traditional lamp. A big round of applause, my friends. The lamp is being lit at the hands of dignitaries for this valedictory session. Thank you very much.
Thank you very much. Ladies and gentlemen, distinguished guests, faculty, and most importantly, the extraordinary participants of Social Leadership Development Program, I welcome you all for the valedictory session, the culmination of an inspiring journey towards leadership, empathy, and positive change. We stand here today not at the end of our program, but at the beginning of our path as social leaders. Before we proceed, let's take a moment to acknowledge the dedication and passion that has brought us to this moment. We extend our heartfelt gratitude to our visionary Executive President, Shri Rahul Karad sir, whose unwavering commitment and leadership has made this program possible. We also thank our esteemed faculty members, mentors, whose guidance has been invaluable throughout this journey of SLDP 2023. My friends, before we begin with this auspicious occasion of valedictory session, we are going to, as per the tradition of this platform, we are going to begin this session with national song Vande Mataram, followed by World Peace Prayer. Hence, I request all of you, everyone on the dais, off the dais, to please rise in your seats. May I request everyone to please rise in your seats. Let us restrict the moment for national song Vande Mataram, which would be followed by World Peace Prayer. I request my technical team to kindly relay. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhra-jyosna pulakitayaminim, Pulla-kusumita drumadala-shobhinim, Suhasinim, Sumadhura-bhashinim, Sukhadam varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you very much. I request all of you to please rise in your seats as we are going to continue with the World Peace Prayer. I request everyone to please fold their hands, close their eyes, as we will participate in this World Peace Prayer. May I have, yes, let us maintain some silence. I request my technical team to kindly relay. प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवातुति गणेषु सकलार्थमति प्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारि गोदी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you. My friends, as we gather here today, let us reflect upon the profound journey that we have undertaken together. Over these 3 intensive days, you have explored the depths of active listening, empathy, and multidisciplinary approach to addressing the societal challenges. You have engaged with the thought-provoking discussions, learned from the inspiring leaders, and forged meaningful connections with your fellow participants. This experience is not an end in itself, but it is a stepping stone to the future where you will enact the real challenge. My friends, it is now my honor and privilege when I request the Honorable Vice Chancellor of MIT World Peace University, Professor Dr. R.M. Chitnis, to kindly address the gathering. Please put your hands together and welcome with a round of applause the Honorable Vice Chancellor of MIT World Peace University. Honorable Dr. Rahul Vishwanath Karad, sir, all the members on the dais, dear students. We have gathered here for the valedictory session of the Social Leadership Development Program, or SLDP, as you are aware, which is an exclusive initiative and a brainchild of Rahul Karad, sir. And on behalf of Founder, President, and UNESCO Chairholder for Human Rights, Democracy, and Peace, Professor Dr. Vishwanath Karad, sir, Honorable Executive President of MIT's MIT Group of Institutions, Sri Rahul Vishwanath Karad, sir, all the trustee members, faculty, staff, and MIT World Peace University students, may I extend warm welcome to all the guests, chief guest and guest of honor on the dais. Let's, dear students, extend a cordial welcome to the guest of honor, Sri Ajay Prakash Sohaniji, former IS officer of Government of India, Sri Arun Wakluji, founder, director, and chief mentor of Pragati Leadership, Honorable Harish Sai Ramanji, motivational speaker and author and life and spiritual coach, and Honorable K.C. Tyagiji, chief guest for today, former member of Parliament Rajya Sabha, and special advisor and chief spokesperson, Janata Dal United. Today's guests are distinguished personalities in their respective domains, and we will soon get to see the detailed introduction of all the guests, and we will have opportunity to listen to them. Friends, last 3 days of SLDP were full of enlightening talks from experts who made a distinctive mark as a social leader and social reformers for changing lives of many in the society. They were all 8 sessions, touched upon multiple topics such as social leadership, peace building, innovative agriculture practices, or environmental and sustainable development, or innovation and entrepreneurship, or alternative means of communication, or innovative urban solutions, and social leadership for awakening phoenix in you by IPS Krishna Prakashji. So you can see all these sessions covered almost every aspect of human life, which you will come across during your careers, personal lives, and day-to-day issues faced by one and all. To conclude this welcome address, let me say, friends, while we are in the valedictory of this SLDP program, let's take a vow, a pledge to make this our prime objective, to remember each and every speaker, what they have said and what you have heard so far, and the speakers that we all will hear now, to bring about a distinct change in the society, and you will be the change to make the change. Let's take this vow, and before I conclude,
the person who created SLP, Rahul Vishwanath Karad sir. Let's give us a round of applause for making this university distinguished. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom. I would now like to request the Executive President, Shri Rahul Karad sir, to kindly felicitate and welcome the dignitaries on the dais for this session. First and foremost, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome, I would say, the person who's here today for his exemplary work in the area of social leadership. I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the chief guest of this session, Shri K.C. Tyagiji, the former Member of Parliament, Rajya Sabha, and Special Advisor and Chief Spokesperson of Janata Dal United. Please put your hands together and welcome with a round of applause, Shri K.C. Tyagiji. Next, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the special guest of honor, Shri Ajay Prakash Sohni ji, the ex-IAS former Secretary of Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, Shri Ajay Prakash Sahani. Next, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the special guest of this session, Shri Arun Bakhluji, the Founder, Director and Chief Mentor of Pragati Leadership, Executive Director of Foundation for Peace and Compassionate Leadership. Thank you very much, sir. I now request sir to kindly felicitate and welcome the special guest of honor, Shri Harish Sai Ramanji, motivational speaker, hypnotherapist, author of Life and Spiritual Coach. Please put your hands together and welcome all these dignitaries for this valedictory session of SLDP 2023. Thank you very much. My friends, as I was sharing with you, that it is really important that apart from education, we also discuss our commitment and we also understand what is our role in developing our country as a nation which can lead this entire world. We spoke about the vision of Shri Rahul V. Karad. We spoke about his commitment to strengthen the democratic fabric of our nation. It is now more than a decade ago that we have started the initiative of Bharatiya Chatra Sansad. My friends, yes, it is yet another event. I would say it has grown more than an event and it has now become a movement. Bharatiya Chatra Sansad is something that you all are going to witness in the first quarter of next year, where you will see the power of this platform, where students get to interact with the top political leaders of our country and understand their role in strengthening the democratic fabric of our nation. I would like to request my technical team, if they can please take us through down the memory lane, I would say, and show us some of the glimpses of Bharatiya Chatra Sansad, which will make all of us, the students and the dignitaries on the dais, to understand the importance of the platform called Bharatiya Chatra Sansad. Over to you, team. If we can please have the film of Bharatiya Chatra Sansad, till the time my technical team is coming back to us with the film. Let me just share this thought with you, my dear friends, that you all are going to be fortunate because you all are the students of first year.
being in first year, you will get this opportunity to become the part of Bharatiya Chatra Sansad, which has a tradition, I would say a legacy, more than a decade's time now. And for last 10 years, it has been sensitizing and motivating student leaders from every corner of our country. You would be surprised to know, I would like to bring to the attention of the dignitaries also, that the chosen student leaders from every state of our country come here on this very campus in front of this very stage, and they sit together and they share the thoughts with the dignitaries on the dais that how exactly we can put our country onto the path of progress. It has been the tradition of Bharatiya Chatra Sansad where we live and we go beyond the boundaries of caste, creed, religion, and we really come together to weave together the thoughts of national building. My friends, it is yet another thought of Sri Rahul V. Karad that it is important that we understand our culture, we understand our roots. I still remember, and if I may quote the words of Sri Rahul Karad, that who were the Britishers to give us independence? We are not cats or dogs who were in the imprisonment of Britishers and they gave us independence. We were born independent. Every soul is born independent. If this is the thought, why we are still carrying the word India, which is given to us by somebody else? Our country has a beautiful name, has a beautiful legacy, Bharata. If we have this name, why? What was the day, what was the time that we moved away from this beautiful word and we adopted word India? My friends, I'm sure you would have heard this discussion just a few days back on the eve of G20 that Honorable Prime Minister, sir, has, probably this discussion happened in Delhi. But let me tell you, my friends, and all the dignitaries, that this discussion happened on this campus almost 2.5 years ago. This thought was put forward by Sri Rahul Karad that we should break the colonial mindset and go beyond what is given to us by Britishers and understand our true self. Today, we would like to take this opportunity, my friends. We are going to show you a QR code now on these big screens which are there across this auditorium. I request each one of you to take out your mobile phones. I request even the dignitaries on the dais, you can please take out your mobile phones, scan this QR code and vote. Would you like our country to be called as Bharat, or would you like our country to be called as India? This is your time, this is your moment, and the resolution passed here will be communicated through official channels. I request all of you to please take out your mobile phones. I can see many mobile phones high in the sky. Please scan this QR code. Let us begin this valedictory session on the right foot and let us know your opinion. It will take just a few seconds time. Thank you very much. We will be closing the lines in next 10 seconds. I request all of you to quickly vote. Please join me in the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I request my technical team to please show us the outcome of this voting, so that we'll come to know what is the opinion of all the student friends sitting here in the front. We are present here in few thousand numbers. It's such a beautiful moment that we all are contributing, we all are coming together and putting our opinion forward. Before we show us the outcome of this vote, if I may request my technical team to kindly relay the film of Bharatiya Chatra Sansad. Bharatiya Chatra Sansad, the Indian Students' Parliament,
India's largest classroom to inspire, to evolve leaders in politics. Educated and spirited youth can make such big differences when they come into politics. कहते हैं कि the evils of democracy can be cured by more democracy. और जब मैं भारतीय छात्र संसद की बात करती हूँ तो मेरे लिए भारतीय छात्र संसद एक ऐसा ऐतिहासिक मंच है जो युवाओं को एकत्रित करता है. Bharatiya Chatra Sansad, abbreviated as BCS, aims to awaken the youth of India to come forward and join the path to strengthen our democracy. That's how I look at this, this very concept of Bharatiya Chatra Sansad. What way the country can change. I can tell you very few people. This is not a very small number. This number can play a very big role, my dear students. You have a great future, and Bharatiya Chatra Sansad, the MIT School of Government, India's first school to develop the future politicians, it will go a long way. Every year since its inception and has grown from strength to strength, BCS is an initiative of MIT School of Government, Pune. Its impact is visible in the increasing national footprint at the Kerala, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Bihar, Maharashtra, Haryana and Jammu and Kashmir have BCS chapters today. 2011 में जब मैंने शहर में बैनर्स देखे कि ऐसी कोई छात्रों की संसद होने वाली है जहां डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं और छात्रों के साथ इंटरेक्ट करेंगे. ये कैसी संसद जहां स्टूडेंट्स और पॉलिटिशियंस एक साथ है, यह है भारतीय छात्र संसद. भारतीय छात्र संसद का मेरे जीवन में और काफ़ी सारे युवाओं के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है. 2011 से भारतीय छात्र संसद के पहले संस्करण से मैं इस मंच के साथ में जुड़ा हूँ. लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव इस मंच के कारण हुआ है. भारत में कॉलोनियल माइंडसेट को भी तोड़ना है तो यूथ को पॉलिटिक्स में आना जरूरी है. अगर आप एम्बिशियस हो और देश के पॉलिटिक्स में आना चाहते हो और देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हो तो ये युवाओं के माध्यम से ही हो सकता है. मैं हूँ भारतीय छात्र संसद. Thank you very much. I'm sure मैं हूँ भारतीय छात्र संसद. we all would have understood the thought and the seed thought, I would say, behind the concept of Bharatiya Chatra Sansad. Okay, so I think my team is ready. I would like to request my team to show us the results of the voting that we just did. Oh, big round of applause, my friends. 93% in the audience has voted to Bharat. A big round of applause, and this is a big, I would say, moment where the students have expressed their thoughts. And let's give a big round of applause to the person who has brought this thought more than 3 years ago, that our country should be known as Bharat and not India. Let us put our hands together and welcome with a big round of applause, my friends, Shri Rahul V. Karad, the Managing Trustee of MITES MIT and Executive President of MITES MIT and MIT World Peace University, the Chief Initiator of MIT School of Government, Founder of National NLC, BCS, NTC and Sarpanch Sansad. Once again, please put your hands together and welcome him with a big round of applause, my friends. Thank you, Professor Bapat. Janani Janmabhumisha Swargadapi Gariyasi. On behalf of the bodies of trustees and our beloved founder, Dr. Vishwanath Karad, our Vice Chancellor, Dr. Chitnis, all other custodians of various schools under the aegis of MIT World Peace University, let me welcome the chief guest of today's function, Shri K.C. Tyagi Sahab, the former Member of Parliament Rajya Sabha, a special advisor, and the chief spokesperson for Janata Dal United. Thank you so much, sir, for your participation today. K.C. Tyagi ji, he is definitely a very well-known politician, but he is a great social worker. He has done a great work in his constituency and his particular state. So I think he will express his mind later. I also wish to welcome the guest of honor, Shri Ajay Prakash Savani ji, the former Secretary for Ministry of Electronics and Information Technology.
a very senior bureaucrat. Thank you so much for your participation, and he has established one very important education center in Hyderabad, the IIIT Hyderabad. So thank you for your contribution for the country. Shri Sahayji, thank you for being with us here. I also wish to welcome, Arun Waklu Sahab, who is the former director and the chief mentor for Pragati Leadership Executive Center, Executive Education Center, very senior corporate guru, I must say, that he is here with us. He has written a number of books. Thank you, Professor Waklu, for being here. Thank you so much. I also wish to welcome Shri Harish Sai Ramanaji. Thank you for your participation. This institution has always promoted the cause that how to unify the science and spirituality, and the World Peace University, this very name, the very unique name, what is very well thought of by our founder, the visionary Dr. Vishwanath Karad. I think this is very important for us, that people like you coming here at this campus who understand technology also and who understand spirituality also. So thank you for your participation. Our very own, the very important person sitting here, Sanjay Upadhyay ji, आपका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, who is the advisor to our beloved founder, Sanjay Upadhyay, very well known in Marathi literature, philosophy. He has done so much. Thank you for your participation. Of course, here Professor Kamtekar, our registrar, I can see Professor Pokle, all of them and all the dean directors and everybody. I think particularly I must make a mention about Professor Kakandikar and other his colleagues, who have supported this very important social leadership development program. They worked very hard, and many other volunteers also worked very hard. Particularly the second year student, I was told they have contributed immensely for the success of this social leadership development program convention. I have no words to express my happiness, my dear students. I want to compliment each one of you for your, the kind of engagement I can see from day one till today evening. Wonderful. I think you all have done a great job. So first of all, I request you for your attentiveness and overall engaging your mind in this very mission of social leadership development program. Let us clap for all of us. Thank you so much. And this idea is successful only because of all of you, my dear students. This thought came some 2 years before, that the very ethos and the vision of our institution, our founder, what he has laid down, how do we really go closer to world peace, and that's how the good governance, democracy, leadership transformation, and so many issues, and particularly, as you all know, that for any such idea or any such creation what we see in the society today, we as the Indian society, or for that matter any society, the social foundation really creates any nation. And with that, I think our country's ethos and culture and the thousands of years of our traditions and culture, I think the social foundation only can transform our country if we strengthen our social foundation. And as I said in my inaugural speech also, that it is not all the time we look at the government and the various other agencies, the multinational and international companies, that they create the jobs, they create some kind of mechanism for all of us to survive. It is with our size and the number of population, which is one of the biggest population in the world, as you know, that all over the world there are 700 crore people, out of which 20% people live in this particular country. And to serve this nation, I think the social transformation is very important. So we expect all the respected members sitting on the dais, I want to tell you, the very purpose of social leadership development program is to provoke each and every mind. The first year students, just 40 days before you all have joined this very campus, some 8,500 students in the first year of all the branches you have joined here. And we expect that all of you to think in this direction, that how do I evolve as a problem solver for the country. And when you really all think in that direction, I think automatically we will get the solutions. Automatically we can really evolve as a very wonderful nation. The entrepreneurship can be created, the startup culture can be created, whatever other technological advancements and so many other issues in and around, we know what is happening, but parallelly the social challenges in our society, how do we develop our eyesight, the co-creation, what the word was used some time before by Professor Bandas, that so we all have to come together and co-create, identify the problems in the society in and around. There are so many problems, my dear student.
leaders, you all have to think in that direction, that how me as an individual, as a BBA or MBA or fine art, liberal art, law, any degree program I may be pursuing, but what way I can create a value for our society. The downtrodden, the backward people, so many issues are in and around. There are quite a difference what we see in our society, the rich and the poor, how I can really divide, the rural and urban divide. So keeping this very aspect, we as academia, we discussed and we decided that let us create one program through which the social belongingness of each one of you can be ignited. And with that spirit, we requested many such tall people in the society to come and address. Last 3 days, I must tell you the very important people sitting on the dais, that very wonderfully last 3 long days, each and every student from morning 9 to evening 6 o'clock, 5 o'clock, they all are sitting in this particular pandal as a big classroom. And brother, I have requested my academia and the Dean Academics and other members that the credit has to be given for this particular participation. It is not just an event or a ceremony or a big gathering here, my dear friends. Most important social aspects and the social issues we have discussed last 3 days. And we expect that through the rural immersion or a co-creation or various other ideas through which you are going to go through in next 2 years, 3 year, 4 year degree programs, you all need to think that how me as an individual can be the problem solvers. We have a traffic problem, we have environmental issues, we have farmer, agriculture, in every area. There is so many good things are happening, but at the same time, we as such a vast country, we all have to develop our eyesight that what are those challenges and issues in the society, and we evolve as a problem solver. So with that, I am very happy that this second edition of SLDP is very, very successful. Your attentiveness, your involvement is commendable, my dear friends. Please take, I think, the second year students, after 1 week or so, we have another program called Research, Innovation, Design and Entrepreneurship Program. As you go in the second year, you all will be experiencing that particular program also, wherein we are promoting the research and innovation culture and the startup culture. And all such young startup innovators and other great minds, they are going to be here. And that program will be for 5 long days, where we have given a credit also, and we have made a compulsory part of the academic curriculum and everything. The academia, vice chancellor and the governing boards, they all have worked very hard to make that program also equally successful for the second year. But all of you particularly, this 40 days your journey here, and after understanding the very SLDP, this idea and this thought process, I think by now, I hope and pray that you all must have understood the very ethos and the essence of the MIT World Peace University, where you want to go and what way you want to make a difference. You know, because of the B.Tech syllabus or any such education syllabus, everywhere it is same. But this particular institution is always trying to promote some such values so that you create, you evolve as a change makers in our great nation, Bharat. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar. Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom. My friends, it's now time when I request the first special guest of honor of this session to address the gathering, the founder, director and chief mentor of Pragati Leadership, executive director of Foundation for Peace and Compassionate Leadership, Shri Arun Vakhluji. But before I request him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Shri Arun Vakhluji. He is a pioneer in the area of integrating spirituality with leadership and wholesome development. He is also the proud author of the award-winning book, Managing from the Heart. Shri Arun Vakhlu is the founder, director and chief mentor of the spiritually inspired leadership development and consulting firm, Pragati Leadership, based in Pune, India. He has been an active innovator in the areas of HRD and individual and organizational transformation, with over 3 decades of experience in these fields. He is a member of the Global Executive Board of the Charter for Compassion, which oversees the work of 430+ compassionate cities and a network of compassionate schools all over the world. He has designed and facilitated many innovative leadership development interventions for leading Indian and international organizations. We warmly welcome Shri Arun Vakhlu.
Please put your hands together and welcome with a round of applause, Shri Arun Vakluji. Thank you. Thank you very much. And let me start by bowing down to the divine in every one of you and also to the august dignitaries on the stage. Please turn to the person next to you and salute the divine in them. Please turn around and say, Namaste. Recognize the divine in each one of them. It's an absolute delight to be here with you, ladies and gentlemen. बहुत ही अच्छा लग रहा है. I'm very, very happy to be here and would like to today take this opportunity to share with you 5 secrets of leadership. But before that, let me tell you a bit about leadership. 40 years ago, there was nothing here. There was just a field. And today, with the leadership of Dr. Vishwanath Karad, Rahul Karadji, we have a place which has 1,000 faculty members, 65,000 students, 29 institutions, and a world peace university. This is leadership. To start from a little thought in the mind, to gather energy around that, and then manifest something beautiful that serves the world, right? So just remember one thing, and I urge you to make notes if you have a pad. Leadership is the creation of new stories, creation of new futures. Starting with our thoughts, words, and actions, can we create a new future? In the Ramayana, it says, Jo ichha kari hu man mahi, hari pratap kuch durlabh nahi. When you're anchored in a space of peace and silence inside, and from there you hold a vision, nothing is impossible. So, on that note, let's start with the 5 great secrets of great leadership. If you have, imagine your hand is a tarazu. Can you do that? Put your hand out like this. Imagine it's a scale, tarazu. On the left-hand side is all that you have received from life. And on the right-hand side is all that you have given to life. Can you just see how it stands? Just do it now. What I have received, the sun, the earth, my parents, teachers, is what I'm receiving, and what I'm giving is this side. How many of you find the left hand is much lower than the right hand? How many find that? बहुत कुछ मिला है हमें. Agreed? Right? So this is an opportunity to give back. The first secret of great leadership is seva. You drive down to NDA in Pune, and everywhere you see seva, parmo dharma, service before self, and always, how can I give beyond myself? When I was a little boy, my grandfather would say, always keep your hands like this, never like this. And what he meant is, can you keep giving? Can you be a go-giver rather than a go-getter? Just imagine what would have happened if our mothers had not served with compassion. We wouldn't be here. We owe our life to service and compassion. But then you say, okay, fair enough, I'll do seva, but on what? That brings us to the second point, which is having a sense of purpose. I was, friends, in the Tata Administrative Service in Jamshedpur, but something in my heart said, hey, there's something more than just a job. So you have a job, a career, and a calling. A job is okay, I'm just, 3 people working on a wall, kya kar raha hai? Pathar ke upar pathar laga raha hu, beech mein cement bhar raha hu. That's a job. Career, I'm building a wall. And calling is, we're building a cathedral. We're doing something great, right? So can I ask myself, what exactly am I? What is my inner calling? Just turn to somebody near you and tell them, ask them, what is my superpower? Just tell them, what are you good at? Turn around to somebody next to you and tell them, what is my superpower? What am I good at? What is my swadharma? What I really love doing? Please turn to them and tell them. Please do that right now. Do it. Yeah? So if you have found your superpower, you feel tremendously joyful. And that is the alignment of your purpose.
Somebody has said joy is the hallmark of excellence in every field. The best musicians, the best teachers are all very, very joyful people. So make that your purpose. The other thing I want to say is, as leaders, can we zoom out? As Rahulji was saying, can we look beyond just our job, just our career? Can we think of what's happening in the world? Now, I want to ask you a question. Is business for life or is life for business? Which is more important, life or business? What is more important? I want you to say that. Life, how many of you saying life is more important? That's it, correct. And don't forget, we're embedded in the biosphere. So there is the whole biosphere, then there is life, and then there is business. But many times we forget this. So look around, zoom out, and as far as purpose is concerned, follow your bliss. Ask yourself, what makes my eyes shine? What makes my eyes shine? Don't worry about money. You run after your bliss, you run after seva, and serve other people, and believe you me, money will follow you, resources will follow you, everything will come after you. Yeah, don't worry about that. And the other thing is, when you're doing all this, don't forget action, because if you have a vision without action, it's just a dream. And if you have action with no vision, it's just time pass. But if I have a vision with action, it can change the world. But many times we get overwhelmed, too much action, too much thinking. You know, a fellow was going, he was running somewhere, so somebody said, where are you going? He said, I'm going on a crash course. Okay, crash course on what? Crash course in relaxation. He was running for a crash course in relaxation. Take time to pause. Let your action come out of silence of the heart. Let it come out of a peacefulness. Yeah, and the other thing is, there are three kinds of people. One is, they start off with a vision and there are difficulties and they stop. The second kind is, they try a little bit and then they stop. And the third type says, no matter what is happening, I am going to continue until I get there. Can I be like the third one? You know, I'm very fond of climbing mountains. I love to climb mountains. And what mountaineering has taught me is, one step now is all you need. If there's a very dark mountain, I don't know what to do, the torch throws light only for 1 foot. Take that 1 foot, take that step and you'll see the next step. And proceed like that and move forward. So that was, the first one was service, S. Second was purpose, the third was action. 2 more to go. The third one is creativity and new thinking. Because remember, leadership is about new thinking. You change your thinking, change your thoughts, and you begin to change reality. So can I think in new ways? Like Rahul was mentioning, we need creative ideas. But let me tell you a little story here. A professor wanted to tell people about the bad effects of alcohol. So he got a glass of pure alcohol and he dropped an earthworm in it. And the earthworm disintegrated in seconds. And he said, ladies and gentlemen, what do you learn from this experiment? And somebody from the back said, if you have alcohol, you'll never get any worms. Creativity is what we all need. New thoughts, new ideas. And therefore, do something USA every day. Uncomfortable, scary, and awkward. And finally, the last one of the 5 is enthusiasm. I think what I love about enthusiasm is, it is the energy that makes really great things happen. And enthusiasm comes from the word entheos. Theos is God inside, God is within me, God is outside me. Can I be enthusiastic about that? There is a bumblebee. You know, if you, I don't know, anyone here an aeronautical engineer or, no, you don't have aeronautics. Okay. According to the principles of aeronautics, the bumblebee cannot fly. The ratio of the wingspan and the body weight
is impossible for it to fly. But it didn't study any aeronautics. So it just flies. And they say in Urdu, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. It is enthusiasm and energy that finally makes it happen. And there's a beautiful TED talk, you must see, it's called The Anatomy of Results. Great achievement has always come from inner state. 60% of our achievements come from inner state, not from so much from action or thinking or whatever, it comes from enthusiasm. So, service, purpose, action, creativity, and enthusiasm. But then what's this? So finally, friends, the last bit, which holds all these together, is the space of the infinite. You know, I have a little dog called Zorba, and one day we were playing with a rubber ring, and I just twisted the ring, and the zero became infinity. I said, what? This is amazing. Zero has become infinity by just twisting a ring? Well, that's pretty much how life is. Inside, there is nothing, there's shunya. Absolutely nothing inside. But from that shunya, from that beautiful dome or whatever, comes the whole universe. And I was just joking with some friends here. I was saying, which is the biggest dome in the world? They said, oh, it's Loni, you know, in MIT. I said, yeah, there's a bigger dome that is Dil Mein Om. Agar maine Dil Mein Om rakha hai, that dome holds the whole universe. So I just urge you to sit quietly from time to time, get in touch with that power that makes Vishwanath Karad ji achieve so much, that makes Rahul and the other dignitaries like Tyagi ji and others achieve so much. It is the power of the inner voice. It's the power of our inner strength. So that's the most important thing. So I'm just going to invite you to shut your eyes now and just be silent for 1 or 2 minutes. Just be silent. Can we be silent for a minute? And just shut your eyes and just feel, watch your breathing, and say after me the sound ah. Can we all chant ah together? Ah, ah. Once more, deeper. Okay, stop. Just stop. Be still. And just go inside. And remember the silence, peace, awareness, compassion, and emptiness of the heart is the real foundation of great leadership. Also space, silence, peace, awareness, compassion, emptiness, which holds the other 5 up: service, purpose, action, creativity, and enthusiasm. So this is what I pray, is that you please remember this source and you get in touch with it by pausing once in a while, so that you can zoom out into the whole world and you can zoom into the infinite dome that holds the whole universe. I just want to invite you to say after me, I am unconditionally okay. Please say that with me. I am unconditionally okay. I am unconditionally okay. Please say that. I am sacred. I am pure, unbounded consciousness. And I am wonderful. I would like to end with the last verse of the Bhagavad Gita, which says, Yatra Yogeshwaraha Krishno, Yatra Partho Dhanurdhara, Tatra Shriha Vijayo Bhutiha, Dhruvanitir Matir Mama. Remember the Krishna in your heart. Be like Arjuna, focused on your goal,
and you'll have victory, success, joy, and well-being. That's what I wish for all of you. Namaste, Jai Bharat, Jai Hind, all the best. Thank you very much, Shri Arun Wakhluji. Thank you very much for your words of wisdom and binding everyone in the audience together. Thank you very much. Next, we have the special guest of honor, Shri Ajay Prakash Sauniji. But before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film. His work on national policy on electronics was a starting stone for electronics reforms in this sector. Shri Ajay Prakash Sauni is a retired 1984 batch Indian Administrative Service IAS officer of Andhra Pradesh cadre. He is a mechanical engineer by education. He has served as the Secretary to the Government of India at the Ministry of Electronics and Information Technology. Shri Sauni has served in various key positions for both the Government of India and the governments of his cadre. He was also given the additional charge of the post of Secretary, Department of Telecommunications till October 2018. He has been vocal about the right usage of social media channels in India. His initial work in 2010 to 2012 as the CEO of the National E-Governance Program had served as the starting point for formulation of the Aadhaar card system and digital payments in government portals and schemes. We warmly welcome Shri Ajay Prakash Sauni. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, my friends, the former Secretary from Ministry of Electronics and Information, Government of India, Shri Ajay Prakash Sauni ji. Yeah. A very good afternoon to all the students and to the dignitaries on the dais. I am deeply impressed with what MIT World Peace University has been able to achieve in the short period of its existence. Dreaming big and making it come alive. I think that is a characteristic which very few people have, and this is what I find here. It's wonderful to be here amongst all of you. Combining technology education, law education, humanities with leadership in social development is one of those wonderful thoughts which can bring remarkable results. My journey in this area began with a small experiment in 1991 when we embarked upon a total literacy campaign for all the residents, all the people of Nizamabad district, a district which at that point of time was suffering from a lot of Naxalism and a large number of other problems. A voluntary program involving everyone in the district, involving student volunteers, ended up changing my thinking, ended up changing my life. Instead of depending on authority, if one is able to take everyone along as a volunteer, it is the power of voluntarism that can get much, much, much more done than authority. Those lessons I have carried dear to me through my journey. I have been very fortunate to be a part of the development of Andhra Pradesh as a state, Hyderabad as a city, and I have seen how Pune and Hyderabad have developed into massive IT hubs. First, I would like to mention a few things that India has already achieved.
and then a few thoughts on where do we go from here. Since I have concentrated on the area of technology, the very first area was industry. We were always, for the past 25 years, we were known for IT companies, IT services. The finest and the biggest companies in the world in IT are from India. They work with the top companies of the world. But we always used to hear, what about hardware? What about electronics? Why is India so weak in electronics? Over the past 7 to 8 years, we have made a huge comeback in electronics. Today, some of the finest technologies in the world are mastered by companies in India. Apple iPhone, which represents some of the best technology available to mankind, gets manufactured in India and shipped abroad for use by the world. All this has happened over the past 5 to 6 years. So, software is no longer alone. Services are no longer alone. India has made a comeback in hardware, in manufacturing, and now is on its way to bringing semiconductors and some of the deep technologies into India. Number 2, e-governance, simplifying governance, making services available to everyone in the country in such a manner that no one is left behind. When the early programs of e-governance started happening, people used to criticize it, saying that there's a huge digital divide. How will a person in the rural area get those services? Programs like Aadhaar, UPI, DigiLocker, CoWIN, Arogya Setu, and many others have made it clear to us how to build technology that can reach everyone in the country. Every single person in the country, almost everyone is enrolled in Aadhaar, has access to its services. A large number of people use UPI. It has helped India create the best of in the world solutions in digital payments and financial sector. Similar results have been seen in CoWIN. जब एक समय आया कि पूरी पॉपुलेशन स्केल पे वैक्सीनेशन करना है, India was the only country that was able to create a platform within days, within weeks, which could help everyone get vaccination without clamor, without difficulty. And the moment you got vaccination, you had a digital certificate to show that you have been vaccinated at a country scale, at the scale of billions of vaccinations that had to be administered in crisis situation. This is the power we have today in terms of being able to not only conceptualize but to execute nationwide platforms in using technology. The new ones which are now on the way, please look out for these. Please be a part of these. One of these is Ayushman Bharat Digital Mission. This is a mission which is bringing together
all the hospitals, all the doctors, all the paramedics, all the nurses, all the diagnostic centers, all the blood banks, everything related to healthcare, whether it is preventive or promoting good health or curative. And this is coming to you through Ayushman Bharat Digital Mission. If it succeeds the way it has been designed, it will end up giving us one of the finest healthcare systems in the world. No one will be able to compete with the kind of healthcare system that India can afford for itself. Low cost, working effectively, working efficiently, and taking its services to everyone in the country. A similar effort is going on in education. Please look up Diksha platform, diksha.gov.in. Please have a look at it yourself. This is similar platform to UPI and Aadhaar in the field of education. Again, it will end up creating many waves. It caters to everyone in the country. The new ones that I would like you to look at are Bhashini, Sumadhur Bhashini, Sambhashini. Bhashini is a language-related platform which will make it possible. It will use AI, it uses AI. It will help every Indian, even an Indian who knows only Malayalam or who knows only Marathi or who knows only Bengali, to be able to talk to each other in real time. This platform is now under construction. It will be a remarkable platform. Once again, it is a public effort, but companies are involved. Companies of all kinds are also involved, and research teams are involved. Apart from this, the open network for digital commerce goes a way ahead, way further once again. It changes the model. Instead of just a national platform, ONDC creates a network. It is almost taking its inspiration from the internet itself. What lies ahead of us? From here, where do we go? We have seen how India, one country, generates more unicorns. We generate more unicorns than all of Europe put together. All the countries in Europe on one side. Arun Vakluji asked us to, do the taraju. All countries in Europe on one side and India on the other. We make more unicorns and sunicorns than all of them put together. And this is what will continue to happen for two reasons. One, Rahulji said that we are problem solvers, and problem solving is our core strength. But to create major successes, we need problems to solve. Some areas in the world have more ability to solve problems than maybe we have. Silicon Valley and others. Some areas in the world have more problems than we have. Sub-Saharan Africa or many other such places. We have both. We will not run out of problems to solve. We have so many problems to solve, and we have the ability to solve those problems. This India, Bharat, is where the rubber meets the road. This is where we have both problems to solve and we have the ability to solve problems. And the best things out of technology come when you solve real problems and solve them at scale and solve them for not just for India, but for the humanity.
I hope that MIT World Peace University and such institutions will join in creating the next generation of not just social leaders but also technology leaders who focus on solving problems for the world. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much, Shri Ajay Prakash Savni ji. Thank you very much for coming all the way here and guiding our students in this important ceremony. Thank you very much. Next, my friends, we have a renowned motivational speaker, hypnotherapist and author, life and spiritual coach, Shri Harish Sai Ramanji. But before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film. His ability to deliver life-changing, scientifically sound, relevant and metaphysical messages in a powerful, humorous and insightful manner, integrated with high energy, has earned him a reputation of bringing about a difference with a difference. Shri Harish Sai Raman is a sought-after inspirational speaker, leading hypnotherapist and spiritual coach, known for his transformational workshops that use experiential activities and humor to change mindsets. A transformational life and performance coach, Shri Harish Sai Raman is one of the most recognized sought-after inspirational speakers in the country. For his exceptional work in this space, Shri Harish Sai Raman has been honored as the Training Leader of the Year by ET Now and World HRD Congress. In his book, Triggers and Insights, he challenges long prevalent notions, commonly accepted belief systems and ignored behaviors that we mostly consider facts or unchangeable. We warmly welcome Shri Harish Sai Raman. Please put your hands together. Welcome with a big round of applause, my friends, Shri Harish Sai Ramanji. So good afternoon to all of you and namaste. So I usually do my sessions by walking around and being with the audience, and my minimum session usually is 60 to 90 minutes, but I have exactly about 12 to 15 minutes right now for my entire session. So I'm going to talk about something which is extremely important, and especially when we are talking about social leadership, and I'm going to talk about the micro, because jo macro hota hai is purely created by the macro. So I want all of you to be absolutely focused, because the topic itself is law of focus. And if you all are focused for the next 12 minutes, I promise you one thing, you will learn something that when implemented can completely change your life. So all students, everybody over here, are you ready to give me your focus? Yes, no? Can I hear a loud yes? Much better. Now this energy is extremely important, because I'm sure everyone agrees the energy of a place depends on the energy of people in the space. So if people's energy is absolutely great, the energy of the place, bhale hi wo ghar ho, institute ho, office ho, the energy of the place naturally goes higher, and that is why our energy has to be absolutely high. So I'm going to show you a particular statement which is an ultimate truth. And the law of focus, if you see the law of focus says whatever you focus on, naturally you will see more of it and it will expand. The point is, aap kis cheez pe focus kar rahe ho? Like today, if you look at your entire life, whether it is your institute, whether it is your education, whether it's your country, whether it is your home, your family, your teachers, your society, everything has a positive and a negative side. That is the beauty of the duality of this world. There will always be a bright side, there will always be a dark side. And that is going to be the reality always. But the question is, aapka focus kis cheez pe zyada hai? Like for example, you can have positive points about this country, you can also have negative area of improvement about this country. But the question is, aap kis cheez pe aaj life mein focus kar rahe ho? So I'm going to give you a beautiful spiritual insight. So if you look at the next one, it says, we don't see the world the way it is. We see the world the way we are. So you never see the world totally the way it is. We always see the world through our inner lenses. For example, agar aapko lagta hai
The world is a beautiful place, that's only because you're a beautiful human being. If you feel that the world is a tough place, that means there are toughness inside of you which needs to change. If you feel, yaar, life mein sab ekdam पागल लोग भरे पड़े हैं, that is a clear feedback about ourselves कि आज मैं खुद वो इंसान बन चुका हूं. So which means if you want to change the macro, you've got to change the micro, and that is the first step. So always remember in life, the way you see other people, the way you see your institute, the way you see the society and the country is first a feedback about you and then about everything else. So when we now talk about the science, I want to talk about something which is very, very important. So, how many of you, and I want you people to raise your hand, okay? How many of you know there is a part of our body called as the reticular activating system? How many of you heard about it? Raise your hands. How many of you have not heard about it? Raise your hands. And how many of you will never raise their hand no matter what I ask today? है ना, कुछ लोग हमेशा यही कैटेगरी में रहेंगे कि भैया तेरे को जो बोलना है बोल, मैं तो एक्शन नहीं लूंगा. We don't have to be in that category, okay? Now many people say, I have not heard about the RAS. Let me tell you one thing. Every human being sitting over here who has studied biology in your 7th, 8th or 9th or 10th standard, you have heard about the reticular activating system. If you see the brain, the spinal cord jahan pe khatam hota hai, there are a bundle of neurons, and these bundle of neurons are called as the reticular activating system. Now biologically, scientifically, the RAS has a huge role to play, including the quality of your sleep, the quality of the energy when you wake up in the morning. Ye sab karta hai, but it is also responsible for your focus. It is responsible for what you see in your life, and that's the job of the reticular activating system. For example, according to science, if you look around in this entire room also, there are 2 million bits of information available to you. Like every tiny dot is a bit of information. So abhi main aap sabko agar dekh raha hu, it is 2 million bits of information. But you know what is interesting? Your brain can only capture 200 to 300 out of 2 million bits at any given point in time. That is why you never see the world the way it is. You see the world through your inner filters. For example, aap sabko ek cheez karne ke liye bolunga abhi. All of you ready to follow? Yes, no? Yes or no? Beautiful. I want all of you to look everywhere in this room and look at everything which is white in color. Look around. हर जगह देखिए. Look around everywhere. Left, right, center. White in color. 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 All of you, close your eyes. अच्छा, जो लोग आंख नहीं बंद कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा. Close your eyes. Okay? Close your eyes and now try to remember everything that is white in color in this room. Keep your eyes closed. And now, with your eyes closed, try to recall everything that is black in color in this room. And you will find the black is difficult. All of you open your eyes, look everywhere in this room, and now look at black in color, black in color, black in color, black in color, and you will now see lots and lots of blacks everywhere. When you saw everything that was white in color, actually your eyes saw white also, brown also, black also, red also, everything together, but your brain only captured the white at that point in time because that was your focus. So if you say life is difficult, you will only see difficulties and you will not see the solutions. If you say wo insan nahi sudrega, you will never see the positive side of that person. If you say yahan kuch nahi ho sakta hai, the solution will become a blind spot for you. And that is why one of the most important thing that you have to do, whether you are a student, a teacher, a businessman, a politician, a corporate leader, a spiritual person, is you have to learn to program your RAS. And I'm going to give you 3 steps to program the RAS. And if you implement this, I promise you one thing, within 30 days, you are going to see your life completely changing. See, our life, the RAS is like a camera. If I give you a nice camera and I say, please click a picture of mine, and imagine I'm standing in a nice place, there is a nice scenery over here, and there is a garbage over here. What would you ask me to do?
You will ask me to say, thoda sa, ye side hat ja Harish, thoda sa yahan pe. Now when I go this side, you will say, ha ha ha. And now you capture the entire image. Now why did you do that? There was garbage. However, you made a conscious effort to look at the positive side only. How many of you agree this is what we need to do in life also? Every relationship of yours, whether it is with your institute, your country, your life, your relationship, will have a scenery and a garbage. Like what happens? People who are married here, what happens during love marriage? Shadi ke pehle, both of them are only focusing on scenery. Shadi ke baad, there are people who not only look at garbage, I know of some people who zoom into garbage. Now imagine, once you zoom into garbage, aapko sirf garbage hi dikhta hai. I remember when I quit my job and started training, everybody in my life said, Harish, training is a tough job, khade reh ke baat karna padta hai, kitne log sunenge ya nahi sunenge, malum nahi. I was fed with a lot of garbage. But one of my teacher told me, Harish, write down all the positive side. I know there is a negative side, but write the positive side about what is there in training, and I started writing them. I had 25 points. What you have to do is, every day, read those positive points, morning and before sleeping. 2 times in 24 hours, your mind is naturally in a subconscious state. That is why, हजारों सालों से हमें बोला गया है, बेटा, सोने के पहले उठने के बाद भगवान का नाम लो. That's because सोने के पहले और उठने के बाद, you are in a hypnotic state, you are in a natural subconscious state. What you see, what you hear, what you feel, directly goes into your subconscious mind and becomes a part of your life. So every day in the morning, if you can get up, and the first thing you look at the positive side about your life, about your relationship, about your institute, about your country, about everything in life, and read it. So when you're reading it, you're focusing on it. And the law of focus says, attention and energy goes together. So energy flows where attention goes, and wherever energy flows, that thing will definitely come into your life. So every day in the morning, if you all can look at the positive side of everything, I am not saying garbage ko ignore karo. I am saying jada focus scenery pe karo, so that you are motivated enough to clean the garbage. Because aaj jo country mein, duniya mein scenery hai, it's because great people, including people who've taken initiatives, have cleaned the garbage, and that's why you are able to see the entire scenery. So if you can do this every day in the morning and night, your life will phenomenally change. So the first thing is, aaj ghar pe jaane ke baad, ek chart paper pe positive likho, usko roz padho, revise karo, keep adding new points. Second thing is, spend maximum time with positive people. All the time you cannot have positive people. That is why the duality will always be there. You will always have people who support you. You will always have people who oppose you. But the point that I'm trying to say is, आप जितना वक्त दुखी आत्माओं के साथ बिताओगे, आपका दुखी होने का chance उतना ही high है. And that is why you have to ensure that you not only spend time with ignited people, but become that ignited person, so that a dukhi atma, when comes to your life, naturally gets ignited in life. And the third, wherever possible at home and work, pays positive visuals. Like we all look at our cell phones minimum 200 times a day. What's there as your screensaver? Like if I look at it, this is what? Nothing but a goal that I want to achieve this year. Empowering millions of people, empowering people out there, transforming lives of people. This is what is there. Every time I look at it, it completely transforms my mind. So I want you all to do it. Next, what I want all of you to keep in mind is, at any given point in time, you need to understand there will be things that you have and things that you don't have in life. Kitna bhi life mein achieve kar lo, there will always be things that you don't have, but there will always be things that you have. What you need to do is, things that you have, be extremely grateful for that, and things that you don't have and you want, make that a goal in your life. The simple spiritual formula should be, never ask before you thank. Even if you are asking, there is nothing wrong, but never ask before you thank. The gratitude, every day in the morning, express gratitude for everything that you have in your life. And now, whatever you don't have in your life and that you want in your life, you have to make it a goal and move ahead in life. What I want to conclude is by telling you all, a spiritual mature life is all about moving from wanting
to the joy of giving. So if you look at a child's life, एक जो छोटा बच्चा होता है वो joy of giving पे focus नहीं करता है, उसको सिर्फ wanting चाहिए. So बच्चा बाजार में घूम रहा है, पापा मुझे ये दिलाओ, पापा बोलता है नहीं नहीं पापा दिलाओ मुझे नहीं. Now the बच्चा will not bother about पापा को कैसा लगता है. अगर इधर लेट के पापा का इज्जत उतारना पड़े, मैं उतारेगा. That is exactly what the kid will do. नीचे लौट के इज्जत निकाल के मुझे चाहिए मतलब चाहिए. So the kid is focusing on wanting. When the kid matures, they start understanding wanting and the joy of giving, both. Partially, like when you get a job. Majority of people, when they get into a job, they are only focusing on मुझे क्या मिलेगा, salary चाहिए, position चाहिए, ये चाहिए, perks चाहिए. But the simple question is, आप दोगे क्या? आपको क्या मिल रहा है सही है, आप दोगे क्या? When you get married, and if you're really matured, you not only think about what I'll get, you will also think about what I can give. Now, if people mature well, typically mature grandparents, they only focus on giving. मुझे कुछ चाहिए लेकिन मेरे ग्रैंडचाइल्ड को चाहिए दिया और वो देने में जो खुशी मिलती है, that is called joy of giving. The good news is the joy of giving is not dependent on age. The bad news is age does not bring in the quality of joy of giving. And that is why even at your age, if you think about the joy of giving and you ask yourself कि मेरे teachers अगर मुझे ये पढ़ा रहे हैं, how can I give the best to my teachers to motivate them? The teacher's job is not only to motivate you, your job is to motivate the teachers by becoming an excellent human being in life, giving a call to your teacher and saying, teacher, this is what you taught me and I've become phenomenal in life. And that is the joy of giving that you will have to focus on. The last thing, 30 seconds, what I want all of you to keep in mind is, when you open your eyes in the morning, the biggest unparalleled success is you are alive. Google बोलता है हर रात को 2 से 3 लाख लोग निकल जाते हैं, which means if you open your eyes in the morning, the entire universe is with you. इससे बड़ा सबूत चाहिए नहीं. So every morning, thank the universe for the biggest gift, and that is called life, and make a commitment that the entire life can be phenomenal, but start with a phenomenal day. Whatever reasons, I only had 15 minutes with all of you. Life में आगे कभी मिले, because guarantee किसी बात का नहीं है, मिलेंगे, we will do another session. I will leave my contact details, my Instagram. Stay connected. But at this point in time, I love you all. Have a phenomenal life, friends. Thank you very much. Take care of yourself. Thank you very much. Shri Hari Sai Ramanji, thank you very much. And I think the response that you have from students itself is a testament to that they have received your message very well. Thank you very much. So let's commit ourselves that for the things that we have, we will show gratitude, and the things that we don't have, will make them our goals. Thank you very much. Now, my friends, it's time when I invite and request the chief guest of this session, the former Member of Parliament, Rajya Sabha, and Special Advisor and Chief Spokesperson of Janata Dal United, Shri K.C. Tyagi ji, to address the gathering. But before that, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Shri K.C. Tyagi ji. A man with a strong sense of leadership and democracy, Shri K.C. Tyagi is a Special Advisor and Chief Spokesperson of the Janata Dal United. He was also the chairman of the Parliamentary Standing Committee on Industry. He served as the chairman of the Committee on Papers Laid on the Table, Lok Sabha. He was the General Secretary of All India Yuva Janata Party from 1977 to 1980. He was a member of the Consultative Committee on Home Affairs. In 2013, he was elected to the Rajya Sabha. He has previously served as a member of the Rajya Sabha and Lok Sabha. We warmly welcome Shri K.C. Tyagi. Please put your hands together, my friends, and welcome with a round of applause Shri K.C. Tyagi ji. ड्यास पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों,
और आज के कार्यक्रम में हिस्सेदार बने सभी आने वाली मेरी पीढ़ी के, जो इस देश को भी चलाएंगे और इस समाज को भी चलाएंगे। प्यारे साथियों, ये मेरा दूसरा मौका है जब मैं आपके बीच में आया हूँ। इससे पहले भी एक बार मैं आपके बीच में आ चुका हूँ। मुझको पार्लियामेंट के मेंबर के नाते भी और भी कई तरीके से देश की लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिलता है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी काशी विश्वविद्यालय है, जिसको BHU कहते हैं, जो महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो सर सैयद अहमद साहब के प्रयासों से बनी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, लखनऊ है, जयपुर की है, उदयपुर की भी है। लेकिन मैं बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ कहना चाहता हूँ कि वो पुरानी है, ये नए भारत की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है। आप ताली बजा करके भी इसको स्वीकार करें। और दूसरा ये है कि नेताओं को ज़्यादा ताली अच्छी भी लगती है। स्पिरिचुअल वालों को लगे ना लगे, टेक्नोक्रेट्स को लगे ना लगे, IT वालों को लगे ना लगे, अगर हमारे भाषण में ताली कम बजती है तो हमें भाषण देने में मज़ा भी नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच। सोशल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें राजनीति नहीं है, बाकी सब चीज़ है। और कल का जो हिंदुस्तान है, मैं अपने समय की आपसे बताना चाहता हूँ, दुनिया कितनी बदल गई है। 1967 में मैं यूनिवर्सिटी में गया था। तब तक मैंने फ़ोन को नहीं देखा था कि फ़ोन कैसा होता। मैं गांव से आया था, गांव में किसी पे फ़ोन कनेक्शन नहीं था। जिस शहर में मैं पढ़ने के लिए आया, गाज़ियाबाद, 10-12 कारोबारी लोगों के पास फ़ोन कनेक्शन था। और मेरे कॉलेज में प्रिंसिपल साहब के यहाँ सिर्फ फ़ोन कनेक्शन था। दुनिया कितनी बदल गई। और मैं नौजवानों आपसे कहता हूँ कि आप साइंस के, टेक्नोलॉजी के, मेडिकल के, सर्जरी के, स्पेस साइंस के जो सबसे बेहतरीन दौर है, आप उसमें पैदा हुए। हम अपने ज़माने का देखते हैं, आप लोगों का ज़माना देखते हैं, जमीन आसमान का नहीं, उससे भी ज़्यादा अगर कोई मैजिकल वर्ड है तो ये है। अब मैं पिछली बार भारतीय छात्र संसद के अवसर पर भी यहाँ मौजूद था। और ये ज़मीन जो है पूना की, पुणे, ये कई मामलों में ऐतिहासिक भी है। हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उन्होंने अपनी लेखनी में स्वीकार किया है कि मेरे राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक थे, जो पुणे के रहने वाले थे। इस पर भी तालियां बजनी चाहिए। दूसरा, जो हमारी यहाँ बेटियां बैठी हुई हैं, बहन के लायक तो शायद यहाँ पे कोई है नहीं, बेटी लायक ही ज़्यादातर हैं। शिक्षा में महिलाओं की साझेदारी का सबसे पहला प्रयास शुरू हुआ पूना में सावित्रीबाई फुले ने, जब एक विद्यालय यहाँ पर खोला था। वरना बराबर की संख्या में आप लोग नहीं होते। और हमारा तो आपकी वजह से एक बार झगड़ा भी हो गया पार्लियामेंट में। बाबा रामदेव का नाम सुना होगा। उन्होंने एक चूर्ण तैयार किया, पुत्र जीवक बीज। हम पार्लियामेंट में थे, हमने वो मंगाया और हमने मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वालों से पूछा कि क्या ये संभव है कि मेल चाइल्ड ही पैदा हो। डॉक्टरों के ग्रुप्स ने कहा ऐसी दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी कि मेल चाइल्ड ही होगा। हमने पार्लियामेंट में सवाल उठा दिया और ये देखा कि महिला एमपीओ में सबसे ज़्यादा तकरार कौन कर सकती है, तो पता लगा कि जया बच्चन कर सकती है। एक सेठ हमने उनके हाथ में दे दिया, एक भाजपा की हमारी बहन थी, उनके हाथ में दिया, और सब के सब लोग खड़े हो गए कि स्वामी रामदेव
दो गलत काम कर रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन शुरू किया है और उसका इंचार्ज इनको बनाया है। दूसरा, ऐसा कह करके जो आधी आबादी है जिसको कल हिस्सा मिला है, उसके भी प्रयासों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। पूरी पार्लियामेंट एक तरफ और शायद एक भी आदमी स्वामी रामदेव के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। जेपी नड्डा साहब हमारे मंत्री थे और हमने उनको लताड़ दिलवाई इस बात के लिए, और आप लोगों की जानकारी के लिए दुनिया में कोई चीज़ नहीं बनी कि मेल चाइल्ड होगा, लेकिन ऐसा सोचना भी पाप है, ऐसा सोचना भी गुनाह है। जो लोग ऐसा गुनाह करें उनकी सज़ा होनी चाहिए। ये भी पार्लियामेंट से हमने पास कराया और उस प्रस्ताव का बेसिकल मूवर में था। इसलिए जो हमारी बेटियां हैं वो जरूर तालियां बजाएं। और यूं भी इतिहास के अंदर द्रौपदी और सावित्री को लेकर के बड़ी बहस चली। हम सावित्री का भी सम्मान करते हैं और द्रौपदी का भी, लेकिन दोनों में एक फर्क है। एक पथगामिनी है और एक पथ तोड़नी है। जब वो इंसल्टेड होती है सभा के अंदर, तो वो एक ओथ लेती है कि मुझे पुरुष नाम का व्यक्ति धरती पे जिंदा नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण इसको भाप लेते हैं और वो वचन लेते हैं कि 5 पांडे और छठा में हमको छोड़ जो चाहे तू सू कर। इसलिए आने वाले दौर में वो जमाने चले गए जब नारी अबला थी, जब पुरुष की कृपा पर थी, जब भाइयों की कृपा पर थी। आज दौर बदला है और मुझे प्रसन्नता है कि देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने 33% का आरक्षण आप लोगों के लिए रिजर्व किया है। तालियां बजा करके हमारी बेटी इसका स्वागत करें। एक विषय मेरा और है, उस पर मैं जरूर बोलना चाहूँगा और मैं कराड़ साहब से भी निवेदन भी करूँगा निजी तौर पर और सुझाव भी दूंगा। कल सरदार भगत सिंह जयंती है। ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ कितनों को पता है? बताइए। अगर सरदार भगत सिंह ने शहादत ना दी होती तो आज़ादी का इतिहास इतना करीब हमारे नहीं आता। 23.5 साल की उम्र में उसको फांसी होती है। 23.5 साल की उम्र में 23.5 साल के तो यहाँ 90% है। भगत सिंह की लिखी हुई 4 किताबें हैं। वो संसद में बहस करता है, पार्लियामेंट में बम फेंकता है और जो उसकी कार्रवाई है कोर्ट के अंदर, उसको सुनने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू जाते हैं, मोतीलाल नेहरू जाते हैं, रफ़ीक अहमद किदवई जाते हैं। उसकी आज़ादी खाली अंग्रेजों से नहीं है। भगत सिंह अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं, जब तक इंसान का इंसान के द्वारा, समाज का समाज के द्वारा, राष्ट्र का राष्ट्र के द्वारा शोषण समाप्त नहीं होगा, तब तक भगत सिंह जैसे लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। तो आज़ादी तो मिल गई। क्या इस आज़ादी की फुहार मराठवाड़ा में पहुंची? मैं कल से इस शहर में हूं। मराठवाड़ा संभाग के जो कमिश्नर है मिस्टर संतोष कंडकरे, वो रिटायर हुए और वो रिपोर्ट लिख करके गए हैं कि 1 लाख किसान इन इलाकों के, उन्होंने 10 लाख किसानों पर रिपोर्ट तैयार की है और बताया कि 1 लाख किसान इस इलाके के आत्महत्या करना चाहते हैं। ये भगत सिंह की आज़ादी नहीं थी। जो पैदा करने वाले टमाटर के हैं, जब 200 रुपए टमाटर का भाव था तब हम लोग रो रहे थे और हमने ऐसे इंतजाम कर दिए कि अब 2 रुपए किलो पे भी बेचने को किसान तैयार नहीं और सड़क पे फेंकते हैं। यही प्याज का तो नासिक, अहमदनगर और पुणे हिंदुस्तान का 90% प्याज पैदा करता है। किसान की क्या हालत है? क्योंकि मैं एक किसान के घर में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो दौलत पैदा करने वाले लोग हैं, चाहे किसान हैं या मजदूर हैं,
अगर उनको उनकी मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिलेगा तो भगत सिंह जैसी क्रांतियां बार बार होती रहेंगी, जिसमें उन्होंने कहा था इंसान के द्वारा, समाज के द्वारा जब तक शोषण समाप्त नहीं होगा, भगत सिंह जैसे लोगों की जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं, वो पूरी नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom. My friends, in this valedictory session, as we bid farewell to SLDP 2023, we embark upon a heartwarming tradition that symbolizes the continuity of our mission. Today we gather here for a solemn and joyous occasion of handing over the social leadership baton to the volunteering youth leaders of SLDP 2024. I request the student volunteers and the team of SLDP 2023 to come from this side and SLDP 2024 to come from that side so that they can hand over the responsibility, the symbol, social leadership baton to the team who's going to conduct this social leadership development program next year, that is in year 2024. The social leadership baton is more than just an object. It's a symbol of the values, knowledge, and experiences passed from one generation of leaders to the other generation of leaders. Let's give them a big round of applause, my friends, as they are one amongst you. Such a beautiful tradition of handing over of the responsibility. It signifies the enduring commitment of our program to nurture and empower future change makers. As you can see, this activity is entirely from the students, for the students, by the students. With a great pride and faith in the future, we are witnessing this moment. I now request all the students to stand behind the dignitaries. I request all the students to please stand behind the dignitaries for a memorable photograph with all the dignitaries and Executive President. Please stand behind the dignitaries. And my student friends, let's give them once again a big round of applause and wish them all the very best for SLDP 2024. My friends, SLDP 2023 has been an amazing journey. As you can see, setting up of this entire venue, and I'm sure you would have witnessed, I would say, humongous rains in the last couple of days, getting everything ready, setting up all the things and making possible, I would say, everything that you see in front of our eyes has not been a simple task. It is time, as our dignitary today, Shri Harish Sai Ramanji has said, that we should express our gratitude that for what we have. And this is the moment, my friends, where we would like to express our gratitude. I would like to request our Executive President, Shri Rahul V. Karat, to kindly felicitate the, I would say, the pillars of SLDP 2023. First and foremost, I would like to request Sir to felicitate Dr. Ganesh Kakandikar, Sir. I would like to request Sir to felicitate him. I request Sir to kindly felicitate Shri Gopal Vamni ji. And of course, I would like to request Sir to felicitate Dr. Girisan. I request him to kindly come up stage. My friends, we should not fall short of applaud. These three people have put all the efforts for you guys
for making SLDP 2023 a reality. A big, big round of applause for them. They deserve this. Thank you. Thank you so much. What a great moment was that. I'm just here for a wonderful occasion. Today is the 68th birthday of Pujya Daji, which is the fourth spiritual guide of heartfulness, as well as the current global guide of heartfulness meditation practices. Rahul Karad sir has a very great chemistry and bonding with Pujya Daji. As I show the photographs of Rahulji with Daji sir, next please. Next slide please. And MITWPU has a great association with this Heartfulness Institute. May I request the slide? Next slide, please. And in our peace subject, Scientific Studies of Mind, Matter, Spirit and Consciousness, which we conduct for the 4th year of B.Tech UG as well as 1st year of PG, the Heartfulness meditations, there is a meditation practical, there are 20 marks associated with those practicals. Probably we are the only university in which we conduct such type of meditation practicals and associate academic marks to that. So may I request another slide in which Rahul Karad sir is receiving the blessings from revered Daji sir. And after the successful completion of NLC 2023, the message from the Daji to Rahul sir was, Rahul bhai, so proud of you. And he has a great expectation from Rahul Karad sir. Thank you so much. I think we will wish him all a very happy birthday. So I just request that I will say 2 lines and please follow that. I will say so that this voice goes all the way to Kana Shantivanam headquarters at Hyderabad. Last year, 1,000 students from MIT World Peace University with a special train went from Pune to Hyderabad for a 3-day meditation program organized by UNESCO at Kana Shantivanam. And Kana Shantivanam has the biggest meditation hall in the world. 1 lakh people can meditate simultaneously at one point of time. So I will say 2 lines and please follow that. Pujya Daji, happy birthday to you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, sir. My friends, it is important that when we are concluding any important occasion, we must take a message with us. We must know that what we gathered here for. Today, we have the presence of our own Shri Sanjay Upadhyay ji, who has been a renowned motivational speaker. I would like to request him to address all of us and give us that message that we, as the participants of SLDP 2023, we should take with us in this venue, from this venue, for, I would say, for next entire year before we gather again for SLDP 2024. But before that, I would like to request all the dignitaries if they can give us a memorable photograph by holding the brochure of SLDP 2023. I request all the photographers to capture this picture-perfect moment of the valedictory session of SLDP 2023. Thank you very much. May I now request Shri Sanjay Upadhyay ji to kindly address the gathering.
नमस्ते। MITWPU स्टूडेंट्स नमस्ते। आपके सभी मेहमान अब प्रस्थान रख रहे हैं। जोरदार तालियां और खड़े होकर उनको अभिवादन करें कि हमारे लिए वो यहाँ आए थे। गिव देम अ स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज। किसी ने सीटी बजाई, वहां से सीटी मत बजाओ, बैठो नीचे। ये जो सभा मंडप है वो सीटी का मंडप नहीं है। सीटी तो हम भी बजा सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो कब बजानी है। देखिए, सोशल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए आप इकट्ठा आए हो। सोशल लीडरशिप का जो प्रोसेस है उसमें पहले आप खुद के लीडर बनो। पहले व्यक्ति आती है, खुद के लीडर बनोगे तभी अगली बात बनेगी। लीडर विदाउट टाइटल। पहले लीडरशिप क्वालिटी को कैसे इकट्ठा करना है, फिर उसको किस में इम्प्लीमेंट करना है, ये दो अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो सभी सब्जेक्ट सीखते हो, सेकंड ईयर से आप स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हो, वैसे लीडर बनना है। आपके पीछे जो बैनर है उसमें लिखा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। प्रभु रामचंद्र जी ये सबसे बड़े सोशल लीडर रहे। आप घर में जाते हो, पहले विश्व, व्यक्ति, फिर कुटुंब जो आपका परिवार है वो, फिर समाज, फिर राष्ट्र और फिर विश्व। ये 5 स्टेप्स है सोशल लीडर बनने के। ये लीडरशिप प्रोग्राम है तो आपको ये भी समझना चाहिए कि लीडर कैसे बनता है। तो पहले खुद का लीडर बनो। वसुधैव कुटुंबकम जो है, तो पहले अपने कुटुंब को विश्व बनाओ। पूरे विश्व को कुटुंब बनाने के पहले अपने फैमिली को विश्व बनाओ। अपनी माँ बाप, अपने बहन भाई, इनसे कैसी दोस्ती करोगे, उनसे कैसी बात करोगे। ज़्यादा पढ़े लिखे हो, अपने माँ और पिताजी से ज़्यादा पढ़ते हो, तो आपके शॉक एब्सॉर्बर्स ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। मेरे पिताजी की कार थी, वो फियाट थी, वो बहुत आवाज़ करती थी, रास्ते पे जाती थी तब। अब मेरी गाड़ी कम आवाज़ करती है, मेरी वेंटो कार कम आवाज़ करती है। ज़िंदगी में तकलीफ़ें वही हैं जो मेरे पिताजी के लिए थी, मेरे लिए भी वही तकलीफ़ें हैं, लेकिन मेरी कार कम आवाज़ करती है क्योंकि माई कार इज़ मोर एजुकेटेड दैन माई फादर्स कार। अगर ज़्यादा पढ़ने से शॉक एब्सॉर्बर्स अच्छे बनने हैं लीडरशिप के लिए, ये अक्ल अगर मशीन को है तो वो मनुष्य को क्यों नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन। और वो आने के लिए आज घर जाओगे तो पहले अपने माँ बाप के, पिताजी के पास बैठ के, माता जी के पास बैठ के बात करो कि 3 दिन तक आपने क्या सुना, क्योंकि सुनना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन एनाटॉमी में कान इम्पॉर्टेंट है, आँखें इम्पॉर्टेंट नहीं है। लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जोर से जवाब दो मेरे सवाल का दोस्ती से। मैं MIT का ही स्टाफ हूँ और अपनी दोस्ती आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरे सवाल का जवाब देना। हाउ विल यू प्रोनाउंस SPOT? SPOT का उच्चार कैसे करोगे? जोर से और जोर से। और ग्रीन सिग्नल आएगा तब क्या करोगे? हाँ, स्टॉप बोल रहे हो। अरे दोस्तों, ग्रीन सिग्नल आएगा तो आप आगे जाओगे। आपने स्टॉप क्यों कहा? क्योंकि आपकी आंखों ने मेरा हाथ देख के जवाब दे दिया, आपने कुछ सुना ही नहीं। Our ears are becoming dormant day by day. लीडरशिप के लिए सुनना जरूरी है। अच्छा, प्रभु रामचंद्र जी ने अपने घर वालों का सुना, प्रभु रामचंद्र जी ने विश्वामित्र की बात सुनी। ये जो बात सुनना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट क्लोज योर ईयर्स। आप सांस लेना रोक सकते हो, आप स्पर्श करना रोक सकते हो, आप आंखें बंद कर सकते हो, आप कान नहीं बंद कर सकते। और इसलिए प्रभु रामचंद्र जी क्यों अच्छे लीडर है, ये पढ़ो, फिर अपने आप सोशल लीडरशिप क्या है आपको मालूम पड़ेगा। और इसलिए आज MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की तरफ से जब ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो ज़्यादा सिखाते हैं आपको, क्योंकि आप बहुश्रुत, बहुत जिसने सुना है वो भी विद्वान होता है। जो ज़्यादा पढ़ता है उससे ज़्यादा सुनने वाला विद्वान होता है, उसे बहुश्रुत कहा है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को मेरी बात सुनो, तत् सुनो, ऐसे इसलिए कह रहे हैं। चलो मैं आपको प्रभु रामचंद्र जी का एक उदाहरण देता हूँ। 5 मिनट बाकी है मेरे पास। प्रभु रामचंद्र जी जब अयोध्या में वापस आए
तो आने के बाद लीडरशिप की क्वालिटी देखो क्या है। पहला नमस्कार किसे कहा? अपने अयोध्या माता को किया, जमीन को, मातृभूमि को नमस्कार किया, और क्या कहा? जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये मेरी जन्मभूमि है, स्वर्ग से भी प्यारी है। और दूसरा नमस्कार दोस्तों प्रभु रामचंद्र जी ने माता कैकेयी को किया। अभी माता कैकेयी को भी सरप्राइज लगा कि अरे मेरी वजह से इतनी सारी तकलीफें सह ली और अभी आने के बाद कौशल्या को पहला नमस्कार नहीं है, मुझे पहला नमस्कार क्यों है? तो कैकेयी माता ने पूछा राम जी से कि मुझे पहला नमस्कार क्यों? तब श्री राम जी ने जवाब दिया है, तात स्नेहो भरत महिमा पौरुषम वायु सुनो सख्यम चापि प्लवग नृपति कापि सौमित्रो भक्ति सीता सत्वम निज भुजबलम वैरीणाम वैरी भावः एतत् सर्व तव चरणयोः मातुरेश प्रसादा। क्या कह रहा है ये लीडर? सोशल लीडर कह रहा है मुझे क्या मिला इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे इस आचरण से दुनिया को क्या मिला, वो 8 चीजें मिली। तात स्नेहो, पिताजी का प्यार मालूम पड़ा, भरत महिमा, भरत का महिमा मालूम हुआ, पौरुषम वायु सुनो, मारुति मालूम हुआ सबको, हनुमान जी मालूम हुए, सख्यम चापि प्लवग नृपति, विभीषण राक्षस है लेकिन राक्षस के साथ भी दोस्ती हो सकती है, ये पूरी दुनिया को मालूम पड़ा। कापि सौमित्रो भक्ति, लक्ष्मण अनुज की भक्ति मालूम पड़ी। सीता सत्वम, सीता का सत्व मालूम हुआ। निज भुजबलम, मुझे मेरी ताकत मालूम हुई। और शत्रु, आदर्श शत्रु कौन था? रावण, वो मालूम हुआ। देखिए मुझे क्या मिला इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी दुनिया को तुम्हारे इस आचरण से क्या मिला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जिसके मन में आता है वो सोशल लीडर है। इसलिए रामायण पढ़ना है, इसलिए महाभारत पढ़ना है। आपके ज़िंदगी में कॉन्ट्रास्ट आते हैं, विरोधाभास आते हैं, महाभारत में भी विरोधाभास ही है ना सब। धृतराष्ट्र सर्वोच्च पद पे है, वो अंधा है। संजय कनिष्ठ पद पे है, उसे दिव्य दृष्टि है। 3 मिनट पहले बेल बजती है। भगवान कृष्ण के नसीब में भी विरोधाभास है। तुम और मैं क्या है? भगवान कृष्ण के भी नसीब में विरोधाभास है। भीम खाने वाला आदमी है, उसको कुक बनना पड़ा, पहला बल्लभाचार्य बनना पड़ा। अर्जुन पूर्ण पुरुष है, उसे नपुंसक बनना पड़ा। अपने ही जिंदगी में आने वाले ये जो अपने मन के खिलाफ घटनाएं हैं, उनको कैसे आप फेस करते हो, उस पर तुम्हारी लीडरशिप मंजूर है। अगर आपको लीडर बनना है तो मेरे मन के सामने जो मेरे खिलाफ बात हो रही है उसको भी स्मित हास्य से सहने की ताकत आनी चाहिए, उसे के लीडरशिप कहा जाता है। और भगवान कृष्ण की बात कहता हूँ, रुक जाता हूँ, 2 मिनट बाकी है मेरे। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण के सामने भगवान कृष्ण का नसीब जो है, भगवान को भी नसीब रहता है। भगवान का नसीब ये कह रहा है कि तुमने बचपन में अपने मामा का खात्मा किया, आपने कंस को मारा, जब तुम भांजे थे तब तुमने तुम्हारे मामा को मारा। अब मेरी बात सुनो, तुम मामा बन जाओगे, मैं तुम्हारे भांजे को मारती हूँ। एवरी डेबिट हैज़ गॉट अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। उल्टा सुल्टा चलता रहता है, विरोधाभास चलता है। तो कृष्ण के आंखों के सामने अभिमन्यु मारा गया। वो क्यों मारा गया? क्योंकि ये जब भांजा था भगवान कृष्ण, तब उसने अपनी मामा को मारा था। देखिए हर एक की ज़िंदगी में ये होने वाला है। व्हाट इज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम? लीडरशिप बनना है मतलब क्या बनना है, तो ये मालूम होना चाहिए। बस आज अभी 1 ही मिनट बचा है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी मौका मिले तो MIT के ज्ञानेश्वर हॉल, अपने राहुल सर जी का ऑफिस है, उसके पहले मेरा ऑफिस है, ज़रूर आके मिलिएगा। ये सोशल लीडरशिप क्या है, व्यक्ति लीडर कैसे बननी है, उसके बारे में बात करूँगा। खैर, भारत नाम के लिए आपने जोरदार वोटिंग किया है, जोरदार घोषणा देके मैं यहाँ रुकता हूँ। आप मुझे जवाब दे दो 3 बार, बोलो भारत माता की, और जोर से भारत माता की, तीसरी बार भारत माता की। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय भारत। Thank you very much, sir. Thank you very much for leaving us with that beautiful message. My friends, now as you embark upon the next phase of your journey, remember that the leadership is a lifelong pursuit, and it's about continuous learning, adaptations, and resilience.
The challenges you will face might be daunting, but with the skills and values that you have acquired here, you all are equipped to make a meaningful impact. As you can see, the stage is now getting ready to give you a tribute in the form of a musical performance. Oh yeah, that is one which you like. I think give them a round of applause. So they are setting up a band, as you can see, followed by a Kathak performance, followed by, I think that's what they mentioned, Bollywood dance performance. So before we get there, I would like to request my technical team if they can take us through down the memory lane in the form of glimpses of Sldp 2023. I request my technical team to kindly relay the film, taking us back for last 3 days. Glimpses Sldp. एशियन कंट्रीज का वाटर सोर्स ये मानसरोवर है। 33 नदियां निकलती है मानसरोवर टिबेट लैंड। तो ये जो एक नया ट्रेंड आया है कि हमारे देश की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, निश्चय ही ये ट्रेंड भी भारत को आगे ले जाएगा और पूरा विकसित हम इंडिया से लीड करेंगे। स्कूल में सेवा की भावना का पाठ पढ़ाया जाए, सेवा की भावना का जो जज्बा भरा जाए, तभी वो जब स्कूल से बाहर जाएगा तो वो सेवा करेगा। जब तक सक्सेस नहीं मिलता है तब आप उठो और चलते रहो, कोशिश करते रहो। सक्सेस अपने आप में अपने पैरों के नीचे आ जाएगा। मैं कल कहाँ था, आज कहाँ पढ़ा, ये ज्यादा से ज्यादा हिसाब रखिए और हर दिन आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि हाँ, हमने इतनी मेहनत की कि जितना कोई साधारण इंसान इस धरती पर नहीं कर सकता है। I think there is a lot of space for youth like you to participate in peace building and peace promotion activities. Once the societies collapse, the population will shrink, and in the latter half of the century there will be a rebuilding process. By 2100 it will be a sustainable human civilization, but with just 2 to 3 billion people. MIT से जो भी लड़का यहाँ से तैयार होके गया वो 100% खुद का पेट भरेगा और करोड़ों लोगों का पेट भर सकता है, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। यहाँ से सीख करके, लर्न कर सकते हैं, चीज़ों को समझ करके आप बेहतर कारनामा कर सकते हैं। You also have a rural immersion program, I heard, which is wonderful. गावठी खाणं असलं आणि विषमुक्त असलं तर आपली पुढची पिढी खरोखर चांगली जन्माला आल्याशिवाय राहणार नाही। हमारी पंचायत प्लास्टिक मुक्त पंचायत है।
integration of science and spirituality alone can bring peace to the mankind. During those experiments, we found that there was one more unique feature to this that we could intake. एक इंस्टाग्राम रील बना लो यार, एक इंस्टाग्राम रील बना लो सॉलिडारिटी के लिए कि मेरे देश में जो हो रहा है ये गलत क्यों हो रहा है। Natural dyes are mainly made from tannins, and tannins are naturally produced in the plants to repel the insects because the seeds needs to survive. Whatever you do it for 20 years and it will be a success. तो हम MIT में ये रिसर्च करने के लिए आया था और वहाँ से हमने बहुत सारा सपोर्ट मिला। भारत माता की। What I would like you to do is to take a conscious decision to do your bit for the community. There is a big difference between sympathy and empathy. Failure आने दो, आगे चलो, आपका सक्सेस जो है वो आपके पास आएगा ही आएगा। Bharat Mata is the millions of people who lives in this country through centuries and who is living in this country right now. साल के 500 रुपए गांव के हर किसान ने फीस भरने की, जो 1 रुपया कीमत रहती है उसकी, और साल में जितना चाहिए उतना फर्टिलाइजर लेके जाने का। ये देश की पहली ग्राम पंचायत है जो जिसने किसानों के लिए काम किया है। When we invite such eminent people who have dedicated their life for our rural India, so you all have to really understand, my dear friends. They taught them the Indian way of using bamboo for artifacts, for different kinds of things. India is a consumption-oriented economy. Philosophy which tells you that if a dog comes into your life, it will change your life. Anurenu Tupana Tuka Akasha Yoda. I am the smallest of the small particle of the universe. But what type of particle? I can encompass the entire universe. Brahmand ki baat. I don't know of any university in the world which starts with 3 days of having here the most interesting social leaders of India. Don't see cooperation course as a course. See it as an opportunity, and see it as an opportunity to do something better for the nation. Hello. Hello. Hi, Good afternoon, everyone. Are you ready, guys? Yes. Good afternoon, everyone. I, Tanmay Shitore, और मैं आदित्य विश्वराज, are here today to represent MIT's Cultural Club. MITWPU's Cultural Club is one of the most prestigious clubs of MITWPU. Having a legacy of more than 45 years, the club has delivered numerous amazing performances, may it be theatre or inter-college state-level competitions. The club gives an artist
the opportunity to perform in various theatre shows like Firodia Karandak, Purushottam and many more. We are perform in competitions like Mood Indigo, Bids Goa, etc., where we won several prizes and have given our level best to make our college proud. So here is a little glimpse of our talented members who are going to perform for you today. MIT Cultural's music band is here to blow your mind with the performance. Without much of it, let's dive in and see what they have got for you. Thank you. So are you all ready? Give them a big round of applause. Check, check, check. 1, 2, 3, check. Mic testing. 1, 2. Check, 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 check. Hello, hello. Until they are getting ready, can you give them a big round of applause, guys? Sorry for the inconvenience, but we just got to know कि 5 मिनट लगेगा और तब तक Check. Mic testing. 1, 2, 3. Check. Sa, pa, sa, pa, sa, sa, sa.
acoustic set, and we have prepared some songs for you all. And I hope you all like it. And here we go. And 3, 2, 1, let's go. Thank you so much. Moving forward with our rock set, and hopefully it is going to energize you. And here we go with our rock set. And if you all know the lyrics to the song, we would definitely say, please hamare saath gao. Okay? Let's go. Keep up to the energy, guys. Your energy is what we are living to. Thank you. Check, 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 check. Mic testing, check. 1, 2, 3, check, check, check. घायल परिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान
इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गरबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजरते हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, शमशीरों से हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, फतेह हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, फतेह हर मैदान फतेह। चलन प्रवाह पावितस्थले गले वलं वलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालि डमट् 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 डमानमद्गणमयं चकार दण्डताण्डवं करोतु न शिव 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 शिव। जटाटवी जलज्जलं प्रवाह पावितस्थले गले वलं वलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालि डमट् 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 निनादवर्णमर्वयं चकार दण्डताण्डवं करोतु न शिव 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 शिव। Thank you so much. Thank you so much, guys. This was our time. I hope I did justice to your energy. Thank you so much, guys. Introducing to the band once, just for our, we had Atharva on the drums. We had Shreyash on lead guitar. We had Rajas on beatboxing. We had Sahil on flutes. And we were your lead vocalist. I am Shrimoy and she is Sai. I hope you enjoyed. And thank you so much. This was our time. Thank you so much. Hope you all enjoyed a lot. Give them a show, guys. नमस्कार, मी तन्मयी शितोळे, प्रोफेसर गणेश पोकळे सर, रेजिस्ट्रंट डॉक्टर गणेश करंदीकर, डॉक्टर महेश थोरवे यांना रंगमंचावर येण्याची विनंती करते. Give them a big round of applause. Hello. आता मी पराग खानविलकर यांना रंगमंचावर येण्याची विनंती करते.
applause, guys. Parag sir getting presented by Thurve sir and Ganesh Kakandikar sir. आता मी गणेश पोकळे सर, गणेश करंदीकर सर व डॉक्टर महेश थोरवे यांना धवल कहाळे यांचा सत्कार करण्यासाठी रंगमंचावर बोलवते. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. इस अद्भुत संगीत प्रदर्शन के बाद अब बारी है नृत्य की. नृत्य नृत्य है प्रेम की अभिलाषा, नृत्य है शौर्य की भाषा, ऊर्जा से भरा योग है नृत्य, विनाशी तांडव का स्रोत है नृत्य. नृत्य दिल का सुकून भी है, नृत्य हृदय का जुनून भी है. और ऐसी एक अलग छवि रखने वाला नृत्य है कथक. भारतीय संस्कृति की एक उत्कृष्ट पहचान, उत्तर भारत में जन्मी यह कला आज विश्व भर में एक अलग मान रखती है. नृत्य संगीत की एक ऐसी कलाकृत मिश्रण जिससे कथित कथा प्रकट होती है, तभी तो इसका नाम है कथक. तो चलिए आमंत्रित करते हैं कुछ ऐसे ही होनहार कलाकारों को जो विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में संपूर्ण भाव से समर्पित है. आपके सामने पेश है कथक पाठशाला के कलाकारों का यह प्रदर्शन. Give them a big round of applause, guys. गाइस, एनर्जी बनी रहनी चाहिए. I would request everyone to please sit down. अपने अपने जगह पे ही बैठिए. Until they are getting ready, cheer for them, guys.
We are really sorry guys, there is some technical issue. Just wait for 2 or 3 minutes, it will be solved. Let's go.
enjoy it, guys. Give them a big round of applause, guys, again. Now let's move on to another powered pack performance by MIT Cultural's dance team. Let's begin with a huge round of applause. जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा सूरमा के माने है जम्मया एक सूरमा 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 घड़ी है देखो सब
हमसे बड़ी, मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, तू बैठ के ले नजारा इस ट्रैबल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जम के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। रंग मेरे माई का, रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। कैसे मैं चुकावा तेरा एहसान, माए तेरी चुनरिया लहराए। जब तक मुझ में है जरा सी जान, माए तेरी चुनरिया लहराए। इसका तेरा नाम है साचा, हो वंदे मातरम, वंदे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू गाइस, वेल डन। जैसे कि हम इस समारोह के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं हर एक फैकल्टी मेंबर, मैनेजमेंट टीम जिन्होंने भी हमें यह अवसर दिया कि हम आकर अपने कला का प्रदर्शन कर सके, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने साथी ओम पवार को सब कुछ संयोजित करने के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने दर्शकों के उत्साह भरे प्रोत्साहन की भी सराहना करता हूं। एक 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो 2 पंक्तियां ऐसी है कि बंदों के हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, बंदों के हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, परिंदों को छोड़ दो पूरा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू। थैंक यू। Three.